I've been kicked when I'm so down, too much until it's numb. And there's nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my throne. Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my throne. Now the sword is in my hands. I hold it on for dear life. If you try to take it away from me, I hope you're out for a fight. 'Cause I've been kicked when I'm so down, too much until it's numb. And there's nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my throne. Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my throne. Holding on my life till the very last breath. Got me feeling fucked up, see the floors in red. But now I know that I'm safe in a place called home. Lost but not Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my throne. Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my throne. Holding on my life till the very last breath. Got me feeling fucked up, see the floors in red. But now I know that I'm safe in a place called home. Why you're always trying so hard to make me surrender? Why you always in my face? Do you really think it's over? 'Cause I've been kicked when I'm so down, too much until it's numb. And there's nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my throne. Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my throne.
हेलो गाइस एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द स्ट्रीम। सभी को क्या हालचाल। हेलो जाइकोर, कैसा भाई? वेलकम टू द स्ट्रीम। प्रथम, हेलो ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। जेलॉक्स, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, कैसा भाई? हेलो ट्विज, वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई। हाँ जेलॉक्स, तुम्हारा चैट मैंने इस पे देखा था, डिस्कॉर्ड पे। तुमको वेल्थ मिला। देखो यार गाइस, मैं तो अपना ब्लेसिंग तो दिया था तुमको यार, बट अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो एक काफी रेयर एंड शोगन है यार, तो उन लोग ने ड्रॉप रेट है ना काफी रेयर किया भाई। काफी लोग 50-50 हार चुके हैं यार, काफी लोग का मतलब क्या बोल सकता है यार, समझ रहे हो? रैंको भाई, मुझे पता नहीं था कि आप आज सुबह स्ट्रीम करोगे। कोई ना ब्रो, इट्स ओके, नेवर माइंड। अभी आ गए ना स्ट्रीम पे, बस ना, क्या हो गया, चलता है भाई। जब भी टाइम मिलता है भाई आ जाए करो स्ट्रीम पे सपोर्ट देने के लिए, डेट्स इट। उससे ज्यादा अभी कुछ नहीं चाहिए, है ना? और या भाई, जो लोग भी अभी 50-50 हार चुके, रियली बैड कि भाई उन लोग ने ड्रॉप रेट काफी ये कर दिया यार। ब्रो मुझे एक्रोन मिल गए, कांग्रेट्स प्रथम भाई, रियली अप्रिशिएट ब्रो, कांग्रेट्स ब्रो। अच्छे से अभी इसको बिल्ड करो। और गाइस, तुम लोगों ने अगर अभी तक नोटिस नहीं किया रहेगा तो भाई मैंने यार F2P टीम बताया था एक, जो लोग एक्रोन को एकदम मतलब प्रीमियम टीम्स उसके नहीं बना सकते, एकदम प्रीमियम टीम्स मतलब लिमिटेड बैनर्स के कैरेक्टर के साथ एंड सारी चीजें, राइट? F2P टीम्स पेला एंड सैम्पो बेस्ट ऑप्शन है। ऑलराइट, पेला एंड सैम्पो रियली इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर F2P प्लेयर्स। ठीक है, VC आएगा, आता हूँ मैं भाई। टाइम है, अभी भी मिल सकता है। 88 कुछ पुल मिल रहे हैं पैच हाफ में। हाँ, जो लोग 50-50 हार चुके हैं, अगर स्टिल दे वांट एक्रोन, दे कैन गेट ब्रो, डेफिनेटली, बिकॉज काफी सारे अपडेट्स है, इवेंट्स एंड डेलीज वीकलीज जेट्स अपने को मिलेंगे, तो आराम से पुल हो जाएगा यार। मतलब जिसको भी एक्रोन चाहिए, भले स्टार्टिंग में नहीं मिल रहा है, बाद में तो मिल ही जाएगा ना, तो अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिल जाएगा। हाँ, बोल ट्विस्ट, क्या हालचाल? तू बता क्या चल रहा है? भाई मैं तो दोपहर का स्ट्रीम, सुबह का स्ट्रीम बंद करने का सिरा सो गया यार। एक वीडियो एडिट करके डाला 1 बजे। यार मैंने देखा पे बहुत लोग लूज कर रहे हैं भाई एक्रोन हाँ, में, 50-50 बहुत बहुत गया। लोग लूज किए यार। मैंने एक्चुअली देखा यार, ब्लेसिंग तो दिया था, बट यार मैं ये चीज जानता जरूर था कि लोग लूज करेंगे 50-50, बिकॉज वो काफी रेयर कैरेक्टर है यार, रेडेंस ऑर्गन है, सो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से सबको देगा। अबे नहीं हुआ है, वो ड्रॉप रेट उसका कम करा है। हाँ, मैंने वही कहीं मैं पे बोल रहा, देखा ड्रॉप रेट है ना यूट्यूबर, उसका कम किया है कुछ कि वो यूट्यूबर्स भी है ना गेमिंग, वो बता रहे थे कि जो वो कर रहे थे मोस्टली लोगों को 100 पे मिल रहा है, जबकि ये 70-80 पे मिल जाना चाहिए था। भाई मैंने ये चीज बताया, बोला भी था बहुत पहले। एक और रीजन है मैं अभी के लिए एक्रोन को पुल नहीं करूंगा, अगर मैं चाह के भी पुल करूँ तो। इसका रीजन यही था कि ड्रॉप रेट है ना एक्रोन का, ये लोग लो करने वाले बहुत ज्यादा। अरे और वो तो था ही, वैसे भी तो हमें इन्वेंट्री इनका लेना था। हेलो सुबह, वेलकम टू द स्ट्रीम। व्हाट्सअप ब्रो, काफी टाइम के बाद भाई, क्या हालचाल? लेकिन मैं मेरे को भी जस्ट पुल शक था करके यार आ रहा कि हूँ मैं एक्रोन। कांग्रेट्स एक्रोन के लिए।
फर्स्ट 50-50 अर्ली विन किया, फिर इवन के लिए हार गया और हेमी को मिल गया। अब 50 पुल कर दिए है तो इवन जाओ या नहीं। यार सुभान भाई, मैं तुमको ऑनेस्टली सजेस्ट करूं मत जाओ इवन के लिए, इससे अच्छा कोई बेटर कैरेक्टर ले लो। ओके पे यार ये एक्रोन के चक्कर में सब फंस गए बेचारों के, उल्टा और गिर रहे हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई अपना पूल सेव करो, नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए सेव करो, या तुमको एक्रोन के लाइट कोन के लिए जाना है उसके लिए जा सकते हो, या तो लूचा कैरेक्टर पुल करना है तो लूचा कैरेक्टर पे पुल कर लो, या एवेंट्यूरियन के लिए पुल करना है तो उसके लिए पुल कर लो। इवन आई वोंट सजेस्ट यार भाई, लोग बोलते रहेंगे भाई पुल कर लो इवन अच्छा खासा है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ब्रो। ऑलवेज आइडोलेंस से ग्रेटर देन न्यू कैरेक्टर है यार, ठीक है, मैं तो इसी को प्रेफर करता हूँ। अब बाकी लोगों का पता नहीं भाई, तो देख लो तुमको अभी जो सही लगे। लाइट कौन है मेरे पास उसका, तो फिर सेव कर लो यार। इवन डजन मतलब वर्थ है, बट मैं ऐसे सजेस्ट नहीं करूंगा। E1 E2 ठीक है, बट इससे अच्छा तो तुमको एक बेटर कैरेक्टर मिल जाएगा यार 5 स्टार का। व्हाई यू शुड पुल E1 ब्रो। मैं सोच रहा था लाइट को निकाल लूंगा, बट नहीं, एवेंट्यूरियन लूंगा। 6 पुल किया लाइट कोन पर और नहीं करूंगा। चीटिंग 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 करते हो आप। मेरा एक्रोन रिव्यू तो सुभान भाई, मैं तो सजेस्ट करूंगा सेव करो अपना पुल्स, बिकॉज वी आर F2P प्लेयर्स राइट, वी आर F2P प्लेयर्स। सो भाई E1 E2 के लिए, E2 के चक्कर में ना तुम अपना पुल वेस्ट करोगे। ओके अभी ये स्टोरी क्वेस्ट चालू होगा, बट उससे पहले मैं तुमको जरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो F2P प्लेयर्स ऑलवेज गो फॉर न्यू कैरेक्टर्स। जब तुमको नया कैरेक्टर मिल जा रहा है, लाइट कौन भी तुमने पुल कर लिया, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेट्स फॉर डैट। अब बाकी का पुल सेव कर लो, एवेंट्यूरियन के लिए सेव कर लो। इवन 2.2 में काफी अच्छे खासे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उसका चाहे तो तुम उसका लाइट कौन भी ले सकते हो, उसके लिए सेव कर लो राइट। सपोर्टर के बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर आ रहे हैं इसमें। वही मैं बता रहा हूँ, सपोर्टर्स कैरेक्टर्स काफी अच्छे खासे आने वाले हैं 2.2 में। मतलब ये जो पुल्स तुम अभी इस पे वेस्ट करोगे ना, तुमको बेटर आउटपुट आगे जाके मिलेगा, बेटर देन दिस राइट। मैं तो ये बोलूंगा भाई, बाकी देख लो तुम्हारे ऊपर। मैंने 2 रैंक मैच खेल के बंद कर दिया। हिट मैंने पहले ही बोल दिया, मेरा कोई फिक्स नहीं है आफ्टरनून के स्ट्रीम का। मैं सुबह के 8 बजे स्ट्रीम किया था भाई, ठीक है ना, इंसान हूँ मैं भी, मुझे भी सोना पड़ता है। ओके चलो भाई। भाई लिटरली मैं पता है 10 बजे सो गया था, 10 बजे नहीं सॉरी 11 या 11:30 को मैं सो गया वापस। उसके बाद मैं सीधा उठा 5 बजे। ओके अब समझ लो भाई, रात को मैं भी नहीं सोया प्रॉपर्ली, और ऊपर से सुबह का स्ट्रीम। भाई तुम मेरी जगह रहोगे तो समझेगा ना यार, जाने तो अब क्या ही बोलने का। रैंको भाई मेरी टीम भी रेड करो, स्पार्कल, एक्रोन, जीपाड और पीला। सुभान Do you still dream, Hunter, 1 minute। of those slain by your hand? ओके यार क्या कटसिन था यार। ये ड्यूक इन्फर्नो स्टोरी क्वेस्ट ड्यूड। It appears the outcome has नई already स्टोरी में कह रहा been है। determined. हाँ मेन स्टोरी खेल रहा हूँ अभी, ड्यूक इन्फर्नो का पूरा। We're still alive. मैं अभी तो पर यार तुमको ऐसी ऐसी चीजें पता You still have चलेगी room to ना make a choice. नहीं मत बता। Leave the music box नहीं behind. बता रहा ना, वही तो बोल रहा हूँ, तुम खेल।
वो तो भाई पता है 2.1 का स्टोरी का बहुत ही ऑसम होने वाला है, नो डाउट। जो तेरे The मन में bloody देख ऐसे trail of the तो कंफ्यूज कर रहा, तेरे destruction जो मन में keeps जानकारी थी ना वो हेलो सारी सुपर जनक, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। बस गाइस Toys लाइक कर by देना the स्ट्रीम को, किसने लाइक मिस Even कर if दिया you तो भाई sacrifice your life for स्ट्रीम that को लाइक alone, कर दो। एंड न्यू you won't पीपल get special treatment. सब्सक्राइब इफ यू आर एंजॉयिंग। You tread the narrow path of the hunt. You could never understand. मेरे को टोटल 6 फुल में एक्रोन और उसका लाइटकॉन मिला। कांग्रेट्स सुपर जनक। We spread इन्फर्नो, या ब्रो इन्फर्नो। destroy until all the एक्रोन kindlings स्पार्कल पहला burned वेल out सस्टेन ओपी, leave मेरे पास only कोई ash अच्छा रेलिक नहीं on है। the ground. टिल अल्ट एमओसी। Burning forms the entire life of a fire demon. भाई पहला यार वेल्ड स्पार्कल Beginning to the बेस्ट end. ऑप्शन है यार, और क्या चाहिए। We are born to die just to put into practice a profile of another universal truth. All things are सुपर जनक कहाँ से लेट हो ऐसा लक। destruction. हाँ यार सुपर जनक, यहाँ पे तो लोग Your 50-50 companions हार रहे हैं और also तुमको think so. 6 फुल में They fight for your chances. लाइट कॉन of एक्रोन मिल गया। सही है यार। They are my children, and just as I was, they are flames that have yet to burn my heart. They're still young, and I don't blame them. But my flames are faint, and time is running out. Can you see the planet of festivities in the distance? I plan to bring purgatory with me there, and before that, I must surpass you. एमडारा, Why? I got Acheron at 25 pulls and her Because on the Litecoin at path they have 78 pulls. forged, you have traveled Congrats, farther than Amdara I bro. have. Welcome to the stream, Emanator. Emanator. भाई ये नाम 2.0 से सुनते आ रहा हूँ। नहीं 2.0 नहीं, Cannot 1.6। your true identity. Draw बट that sword. 6 पुल में एक्रोन प्लस लाइटकॉन कुछ ज्यादा नहीं हो गया। Remain here. हेलो प्रिंस, वेलकम टू द स्ट्रीम। Fight a decisive battle to the death, for I choose this. न्यू पीपल्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, Is intense, but brief. and join the Discord server if you are a Discord user. An endlessly prolonged existence. Even if the answer turns out to be your own भाई description, एक्रोन ने स्वॉर्ड ऐसा पोज में डाल के रखा है ना What is उसके ऊपर। important is not the answer. दी एंड, ऐसा लगता है सीधा दी एंड। Exists just as you exist. यार रेडेंस ऑर्गन है यार। To be destroyed. I don't know how I got Acheron so early. In fact, my friend lose 50-50. Even sweet dreams It's just a luck, Amdara bro. Most of people lose 50-50. And even few people got Acheron plus Litecoin and very few pulls. So it's just all luck, bro. all right, I accept. अरे माइक ऑफ कर भाई। the most brilliant and intense fire in existence. May this flame illuminate the farthest reaches of your मोस्टली ज्यादातर लोग 50-50 हारे। या ब्रो। A bottomless stream. हेलो पुरु, वेलकम टू द स्ट्रीम। That's right. ऐसा भाई You've क्या made हालचाल। one small mistake. This blade remains in its scabbard not out of pity or scorn. It's a personal secret विशाल का that I पुल don't देगा want to disclose, but भाई, किसी ने कुछ डाला ही नहीं है ना डिस्कॉर्ड पे, तो कैसे देखूंगा मैं। 90 बुल्स में सब कुछ। I'll reveal the truth. अच्छी बात है, कांग्रेट्स। The hunt. अबे ये अपडेट तो देखो पता है ना, पीओवी चलेगा अब इसमें। ओके May death be the end of पीओवी your वाला अपडेट पता है तेरे को, जो इन्होंने नहीं बता भाई। दिया था स्टार्टिंग में। guiding you नहीं, back पता to नहीं the यार। waking world.
वाइफू लवर किधर है? कुछ नहीं है, नहीं आया अभी तक भाई। कुछ नहीं है। तू ना मतलब सो क्या सो होगा सो कि Keep तू moving, Artis. सुन तो ले, वो कोई स्टोरी स्पॉइलर नहीं है। Your तू time hasn't come yet. अरे एडवेंचरियन चुप और हो ये जा को भाई, 2 मिनट रुक ना यार, कट से नहीं My यार, रुक जा। time. ठीक है, ठीक। I've seen many clever disguises that can conceal appearances, but they can never cover up who a person really is. And you're no different. You had no desire to kill the Trailblazer. You only did what you did to drive me and the Memo Keeper away, but why? Did Destiny's slave make you do it? You know, Elio. I एलियो thought this is just the kind of thing that'd get written into your script. My script has always been brief. Other than that, anything beyond that is unnecessary. He knows my nature. There is but a single destiny from which no one can escape. And भाई until ये then, सैम कौन है? I hold the privilege of choice. However, you appear to be ignorant of this. So it's time for me to inquire. Who exactly are you? Not your enemy, perhaps. That's not what I asked. I don't deserve your curiosity. Loners wandering the cosmos always have their secrets. Take me. I'm wanted by the IPC, so it's little wonder that I know something about the Stellaron hunters. That's all. Maybe I can help. What reason would you have for doing that? I tend to forget things. Which is why, rather than memories, I'm accustomed to using my emotions to capture what I normally wouldn't otherwise. So, I know who is inside that cold armor. Acheron जानता है सैम को? Ready to take off that armor and sit down for a talk? I'm a new player and I already It's lost not early. yet time. ठीक सर, यहाँ पे पॉज तो हो अभी गया। आराम से तू भी I'm स्टोरी कर। हाँ हाँ I am a new player and I already lost early pool invader Leon to Bailu. Then I decided to not waste pool in this character. Then Sparkle dropped and this character is very tempting, but I pulled Acheron and her Lightcon skipped Sparkle. Amdara, काफी अच्छा choice है. Acheron is cool bro and she is very strong. So even you can get a free characters, most of characters, Tempo, Pela on Acheron team, so you can build her very perfectly. Alright, so it's a good choice for you and your account for sure. My main बस एक question चीज is, कर। can I pull Jinglu or Lucha and Aventurin? Mdara, I suggest you, it's depend on your team, because if you have another DPS character, you can skip Jinglu. But if you need any sustained character, better sustained character, right? If you need, listen my words carefully, Mdara. If you need better sustained character, a good one, Lucha and Aventurin will be the good option for your account and your team, because they are really good compared to F2P sustains and preservations character. Alright, they are really good and they both are perfectly fit on any DPS character. Okay, so you can go for Lucha or either Aventurin, depends on what you want on your team, right? So you just need to check that yourself, right? Hello Paresh, welcome to the stream.
एक्रोन कैरेक्टर के लिए सारा स्टेलर 30,000 क्या 30,000 3,000 एंड टिकट भी खत्म कर दिया, फिर भी मिलना ग्रेडी में सब चला गया। एक सेकंड, या परेश तुमको मिला नहीं है या 50-50 हार गए ऐसा कुछ? अगर हार गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ब्रो। नहीं, अब ये मत बोलना कि इसके पास 100 से ऊपर के पुल थे और ये हार गया, भाई मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं, इसने बोला कि स्टेलर जज इसके पास 3,000 है एंड टिकट्स भी खत्म, मतलब इसने शायद एक्रोन पे पुल किए सारे के सारे टिकट्स एंड 3,000, तो फिर भी नहीं मिला। तो अभी भी तुम्हारे पास एक ऑप्शन है परेश, स्टोरी क्वेस्ट, इवेंट क्वेस्ट, सारी चीजें कंप्लीट करो। 2.1 के एंड तक तुमको जो जब तक मतलब एक्रोन बैनर का डेट है उसका राइट, तब तक काफी सारे जेट्स तुमको मिल जाएंगे। एक बार फिर से ट्राई कर लो, मिल जाएगा तुमको, है ना? नहीं मिला, सब जीरो हो गया। ओके ओके, डोंट वरी ब्रो, अपसेट होने की जरूरत नहीं भाई, काफी लोग 50-50 हार चुके। सो एक्रोन काफी रेयर कैरेक्टर्स है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि काफी लोग हारेंगे यार, ठीक है? इजीली कैरेक्टर नहीं मिलेगा ये, तो F2P प्लेयर्स के लिए ये जरा चैलेंजिंग है कि लकीली अगर लक बहुत अच्छा रहा तो तुमको मिल जाएगा, या नहीं मिला तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट मिल जाएगा ब्रो, डोंट वरी। नया मिनी गेम्स मस्ट है। हाँ, मैं अभी सब देखा नहीं यार, अभी जस्ट देख रहा हूँ अभी जाइकर, लेट्स सी। अभी मैं ये बोल रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ जो 16 है ना, वो 1600 जो जेट्स थे I don't need वो कब help, मिलेंगे? but I वो can get you शायद a suggestion एनिवर्सरी पे रहेगा। that would make things अरे better एनिवर्सरी for क्या, you या पी and दे रहे me. एनिवर्सरी के टिकट पीस, वो पीस If फुल your फ्री के। goal is the Watchmaker's legacy, पता नहीं, वो आएगा आगे जाके, अभी तो 2.1 आया भाई, एक दिन भी नहीं हुआ, सब्र करो, not only are they देंगे भाई, covering up the बोला है तो existence देंगे। of death, but they're burying the हम सिर्फ पुल के past लिए बैठे, मैं पुल and दो। the truth about what happens inside the dreamscape. भाई बहुत Already लोगों on ने इस it. बार वो लूज करा भाई, पैसे लगाए बहुत भाई होते हैं। मैंने बोला तो है भाई कि Is no इतनी enemy आसानी of से एक्रोन yours. मिलने नहीं वाला सभी को, I know लक that. रहा तो हाँ अच्छी बात है, I वो just ऐसा never expected to 50-50 hear काफी you लोग say ये it. करेंगे, ये लोग ड्रॉप रेट What's ये next then? करेंगे थोड़ा, The ये Trailblazer's एक्रोन है been यार। मेरे को taken भी by Black Swan. मेरे को शक था भाई, Will you go look for him? इंस्टेंट किल भाई, कोई ये भाई No मजाक की need for थोड़ी है ना that. ये गेम। No harm in mentioning that Elio's only बट given me गुड one न्यूज ये है instruction. गाइस, Get एक 4 स्टार all का of the F2P लाइटकॉन Express आएगा to एक्रोन के लिए, track अगर down कोई the Grand लाइटकॉन पुल नहीं Legacy. किया ना, नो I वरीज, tried settling this in an एकदम easier चिल करो, and more direct आने way, वाला है but as you एक can 4 स्टार see, का नेलिटी का here लाइटकॉन, I am काफी अच्छा है confronting भाई, you. क्रिट डैमेज मैंने इंक्रीज होता है उसमें, और शायद Can't ever उसको go तुम फ्रीली against S5 भी this कर सकते हो script. शायद, उसका नो आइडिया, The so-called impossible बट is merely something that पता is नहीं, yet अगर to happen. इवेंट लाइटकॉन रहा तो मेरे ख्याल से हो सकता That's it. है S5 भी हो जाए। Before we split, can I ask you one more thing? Is there anything else in पूरे your 5 घंटे की script स्टोरी है about me? I'd like to know what kind of footnote I get to leave in that future foreseen by destiny. बस एक चीज कभी ध्यान से पढ़ना स्टोरी बस। Not a thing came up. I knew it. एमडारा यू टैग योरसेल्फ, Hang on. मैं समझा नहीं, बट अच्छा डिलीट भी हो गया। I don't. Don't. What? Your first question was, do you still have dreams about everyone who died because of you? I don't. Never have. I was born without the ability to dream. I live Are you pulling this Acheron? cold, No, Amdara, I harsh no, reality I don't. for a little light and to burn, to keep on burning until I turn to ash. Because So,
I already have a very good DPS characters, and I really need a good sustain one. Is that So so? I'm going for Aventurin. Then you're already living in the waking world. And yes, Amdara, if you need a beginner guides, you are a new player, right? You told on the chat. So if you need any beginner guide or anything related, I never expected Miss you can find Robin to... on my channel. I'm sorry. Reality cruises on in serenity. Aventurin Undercurrents bubble up from the करोगे ना dreamscape, pull up? just like that Yes, memo Suban. keeper said. Stay strong, Definitely. everyone. We can still do Bro what we मुझे can 10x for pool them. का second Starting pool में with मिल finding गया the Acheron. murderer. Congrats Let's Pratham. recap everything then. The Trailblazer just जिसको नहीं मिला guys, Indeed, we trust that no the worries, nameless has you will nothing get to it do with this. at the And end. we also beg each of और you जिसको to मिला help उसको assist the congrats. family in अच्छे से verifying build the करो, identity relics of वगैरह the डालो, deceased. team setup करो That's और how it enemies was की put, band बजाओ. in reference to Miss Firefly. Looking back, he seemed a little evasive at the Royal time. Hub Gaming, what's up And he bro? also Welcome to failed the mention stream. anything about the earlier murder too. The Congrats for family's getting planning on Acheron covering Royal up Hub all news with about light Miss cone. Robin's Once death. again. If news gets तुझे तो out, मिलना गारंटेड था ही वो Penacone's सब going to इतने turn टाइम से into a जेड्स जो सेव bloodbath. करते आ रहे हैं. But the So murder that not followed surprised closely but after still was obviously beyond congrats. their anticipation. The family had Thanks to try for the and help. turn Yeah, things bro. to their advantage by bringing in reinforcements Just drop from the like outside. and sub if you are The enjoying the Charity content, Festival is nearly and here. even They you must will be get snowed many under. more content on my channel. It Just may check also out be that Miss HSR Firefly's playlist. You murder can had check so out the many HSR witnesses playlist. that it couldn't be covered up. Various types So of they went contents with the available. flow and Gameplays, let more okay, people on the tips, scene guides, to control the everything. situation. After all, the nature of the two murders is fundamentally different. And The family's Amdara, first you can protective measure even should be join the against Discord malicious server if actors you are a among the Discord guests, user. such as that IPC Just type Discord in envoy. the chat. Nightbot give you the link. You just need to click on that link. You will be join the Discord server. All the while accusing that Are we missing the forest for the trees here? I always felt that But अभी Aventurine's यूरोप reasons में for ही accusing Miss continuous Acheron करना were होगा. highly subtle. कोई ना bro. Can we believe him? At प्रथम this point, I'm afraid the only ones हम we एज ए can फ्रेंड्स trust नहीं are बन पाए गेम में तो ourselves. क्या हो गया. मैं तो Look, डेली लाइव let's स्ट्रीम करने try आता to हूँ. तुम gather भी the डेली intel आते हो. first and then list इवन all the तुम शायद possible डिस्कॉर्ड सर्वर outcomes में भी we हो can. शायद, पता Then we नहीं. go through them, eliminating अगर नहीं हो तो contradictions ज्वाइन कर one लेना. अगर by नहीं one. हो तो The अच्छी fewer बात है. facts मतलब remaining, the closer we ठीक are है. to the truth. कुछ भी हेल्प रहेगा, गाइड I've रहेगा, still टिप्स got चाहिए, this सारी sense चीजें of foreboding मेरे से जितना हो पाएगा like मैं we're stuck in ट्राई a करूंगा. whirlpool, इवन बंदे भी spinning अवेलेबल है around that legacy even तुमको after गाइड करने के everything लिए. that's happened. तो नो This वरीज. time we're playing the role of a real detective. But एंड उसकी before टीम we बिल्ड start, करनी पड़ेगी. what are we going to say to the family and Aventurine? As I see things, the family harbors no ill will towards the Astral Express. If they Suban, didn't trust the crew, they wouldn't have casually commissioned outsiders to investigate रंको a ये case स्टोरी that's लंबी है, in all likelihood a इसलिए तो scandal. 7 बजे स्ट्रीम चालू किया जेलॉक्स. Plus, this is the family's turf. एस Teaming up with प्लस them should make things टीयर में डाल easier दिया. for us in the future. सुबह भाई कॉमन As for मतलब that Aventurine, सिंपल सी बात है well, यार. I'd like to hear your thoughts. Acheron is a Raiden Shogun, or obviously He's he complex. is going to be one of the strongest DPS Deliberately character slow-played his hand in your during team negotiations while running or in circles Honkai around us Star all Rail. the while. All right, He appealed convincingly to both so reason and she's emotion. definitely going to be It S wasn't plus tires. forced, but the intent No was doubt. obvious. Still, it's good to have Fire hour का contacts among all this कुछ है स्टोरी. uncertainty. 5 hours. Adventurine मेरी पहला showed E6 his हो गई skills, Acheron पुल and as करते far as करते. our interests are aligned, मैंने बोला ही था भाई, it can Acheron को become पुल a जो भी करेगा reliable ally. आराम से Acheron का टीम भी बन जाएगा We because also need to keep a certain पहला distance from easily the available है. family. Never let them get too तो आराम close. से तुम्हारा Acheron का Teaming टीम up बन with the जाएगा IPC F2P helps टीम को. balance that out. तो no If either worries. side makes a move, मुझे बस we have 6 the option to कॉपी pull और out. चाहिए E6 So पहला के you लिए. suggest accepting Aventurine's proposal to team up? Good luck for that, bro. Yes.
It's risky, but we can only wait until both sides have played their cards before making any further बट judgments. रॉयल अप गेमिंग मैं तुमको एक चीज I get why. रुको यार But there's a ये whole lot जरा of bad guys and खत्म girls होने दो around here. And I'm worried about getting stabbed in the back. He's been bullied a few times now, and I can't stand it anymore. ओके तो मैं ये बोल रहा हूँ पेला इज इम्पोर्टेंट बट आइडोलेंस नॉट दैट इम्पोर्टेंट बिकॉज पेला से सिर्फ तुमको कैरेक्टर्स पे सॉरी एनिमीज पे डिबफ अप्लाई करना है दैट्स इट पेला का काम उतना ही रहने वाला है तो मुझे नहीं लगता आइडोलेंस की इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आइडोलेंस के लिए तुम अपना अभी पुल्स ये करो हाँ अनटिल अनलेस तुमको अपनी पीटी बनाना है तो बात अलग है ठीक है पेला जस्ट अ डिबफर कैरेक्टर सपोर्ट डिबफर तो तुमको जस्ट उसको इफेक्ट इटरेट डालना है एचपी डिफेंस स्पीड ये सारी चीज़ें तुमको अपने पेला को देनी पड़ेगी ओके जस्ट बिकॉज सेकेंड सर्वाइव एंड फास्टर टर्न दैट्स इट ये दो चीज़ तुमको पेला को देनी है बाकी का काम एक्रोन देख लेगी डीपीएस डैमेज का काम तो पेला को तुमको सिर्फ सपोर्ट में बिल्ड करना दैट्स इट E4 इम्पोर्टेंट है पेला का भाई ठीक है इम्पोर्टेंट है होगा आइडोलेंस में ऐसा भी नहीं बोल रहा कि ऐसा नहीं है बट बिना आइडोलेंस का भी हो जाएगा यार कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है उसके लिए ओके नहीं है नो वरीज तुमको पहला से सिर्फ डिबफ ही अप्लाई करना है एनिमीज पे दैट्स इट उसका काम उतना ही है उसको तुमको कोई डीपीएस कैरेक्टर बनाने की जरूरत भी नहीं है और बनाने का भी नहीं है तो काहे के लिए इतना टेंशन लेते हो यार मोस्ट इम्पोर्टेंट सिर्फ वो नेलिटी डिबफर का काम करेगी अब तुम्हारे एक्रोन के टीम में दैट्स इट बाकी मेन डीपीएस का काम तुम्हारा एक्रोन ही करने वाले तो यार आराम से बिल्ड करो कोई दिक्कत नहीं है आइडोलेंस पे इतना फोकस मत दो यार You're like a broken record. रॉयल अब क्या पेला को डीपीएस बनाएगा हाँ वो भी है सही है ना जाए करो यार फालतू का पुल्स ऐसे वेस्ट करने के मतलब नहीं है ना 4 स्टार का आइडोलेंस उठा के लगा तुमको अगर मिल जाता है ऐसे लकीली पुल करते करते तो बात अलग है लकी वो अच्छी बात है बट एक स्पेसिफिकली एक कैरेक्टर को आइडोलेंस पुल करने के लिए तुम यार पुल ऐसे वेस्ट करोगे डजंट मेक सेंस ब्रो Forget about it. Just let me keep an eye on him. If that doesn't work, we can just turn the tables and use him instead. Then, could you please reply to Aventurine? Everyone, take this time to put together your thoughts. भाई ये 1 लाख के क्रेडिट्स कहाँ से दिए जा रहे हैं मुझे Looks like Aventurine is happy with this outcome. क्या हुआ Let's tell everyone से about बात कर रहा है क्या नहीं मैसेज चैट हो रहा था वहाँ पे मैं और पुल वेस्ट करूँ हाँ भाई एक्रोन के लिए ब्लैक स्वॉन एंड पेला मस्ट है दोनों E0 ही क्यों ना हो हाँ ब्लैक स्वॉन भी चलेगा बिकॉज ब्लैक स्वॉन डीओटी कैरेक्टर है राइट और डीओटी क्या डिबफ है प्लस ब्लैक स्वॉन का एक और चीज़ है कि डिफेंस रिडक्शन भी है तो उससे इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूरे टीम को ही फायदा है ओके एक्रोन को तो फायदा ही है अच्छा खासा डैमेज निकलेगा बट तुम ब्लैक स्वॉन को रिप्लेस करके वेल्ट को भी डालोगे तो वो भी सही रहेगा वेल्ट एनिमीज को स्लो करेगा एंड स्लो करने के बाद उनका टर्न ज़्यादा नहीं आएगा तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली उससे भी तुम्हारे टीम को ही फायदा होगा तो पेला एंड वेल्ट आल्सो गुड ऑप्शन पेला एंड सैम्पो आल्सो गुड ऑप्शन इवन पेला ग्नाइफिन इज आल्सो गुड ऑप्शन तो जिनके पास जो लोग इतना कंफ्यूज है ना मतलब जो लोग अच्छे से टीम बना नहीं पाएंगे ये मतलब इनके पास ये सारी ऑप्शन है
कुछ ना कुछ बना सकते हैं अपने टीम में। चलो I hope it's not too soon to because whenever I see the Grand Theater, भाई no, एग्रो, हाँ ये तो पढ़ after लिया मैंने। all, they've brought everyone this sleepy dreamscape, which everyone loves. I just feel like I'm starting to understand them less and less. Everyone's still having a great time out there on the गाइस streets. स्टोरी को तो खेल रहा हूँ। आई होप Nobody कोई knows सैड what's happened. मोमेंट ना आ जाए स्टोरी पे। All so unreal. ऑलरेडी As 2.0 if में देख लिया मैंने। Firefly, Miss Robin, and us. We're all outsiders from another world. Aw, what a mess. I really want a nice cool drink of soda to help me calm down. But then I'd be just like everyone else out on the streets. टॉक टू हेमिको एंड वेल्ट। हेमिको से लास्ट में बात करेंगे भाई। Aventurine said something that concerns me. He accused that Galaxy Ranger of killing Robin without any evidence whatsoever, but said nothing about her connection to that memory zone meme or why he was stalking you. It was That तो नहीं है, a but groundless accusation. किसी का तो आइडेंटिटी पता चलने वाला है। अच्छा, मैं 4 घंटे खेला, अभी तक तो नहीं आया। Maybe Aventurine's goal was तो फिर भाई never to सस्पेंस gain बचेगा our अभी trust. 2.2 के लिए Maybe गाइस। he wanted to foster a feeling of enmity बिकॉज ये स्टोरी मुझे नहीं लगता अभी तक 2.1 में तो कंप्लीट हुआ है। Two birds, one stone. However, I asked Don Hung back on the Express to confirm that story about the Annihilation Gang and the lost messages. It wasn't something that Aventurine made up out of thin air. You've met her many times now. What's your impression of Miss Acheron? और वर्ल्ड 9 खेला कि नहीं गाइस? तुम लोग ने तो खेल लिया रहेगा। जुबान, जाइकोर, प्रथम, रॉयल हब और कौन? मदारा, आर यू स्टिल इन द चैट? That fits the stereotype of a Galaxy Ranger. वर्ल्ड 9 कैसा लगा? एंजॉय किए कि नहीं वर्ल्ड 9 तक? Eccentric, unpredictable, 2.4 and तक fond of या being alone. भाई ब्लैक स्वान की जगह वेल्ट यूज करो डॉक्टर रेसो की टीम में। भाई ब्लैक स्वान की जगह वेल्ट यूज करो डॉक्टर रेसो की टीम में। या ब्रो डेफिनेटली वेल्ट एंड डॉक्टर रेसो का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है भाई। एनर्जाइज टीम से एनर्जाइज दोनों के दोनों। एक तो पहले तो इमेजिनरी कैरेक्टर है, recapture Penacony for IPC. कर सकते हो To वो do सब। this, the existence of death will be covered up by the family. So how does he plan on taking them down? It's got to be something important enough that everyone will notice. But it also can't be anything too out in the open. An attack on the hotel guests? यस मैंने कंप्लीट कर लिया। Penacony's guests include Nice, quite a few congrats. bigwigs known throughout the whole cosmos. People who not even the IPC would dare take lightly. Aventurine is a shrewd merchant. Acheron के लिए तो and वो there's no तुमको way कंप्लीट he करना doesn't पड़ेगा know ना। that. रेलिक्स, प्लानर, ऑर्नामेंट्स वही लगेंगे उसके He's लिए। definitely going for the family, and it's just a matter of. ऐसा नहीं कि सिर्फ वही लगेगा, बट considerable अगर attention करना to चाहते हो it. वो भी एक ऑप्शन है वैसे। But this Galaxy Ranger. बाकी ने तो जो पुराने प्लानर ऑर्नामेंट्स है उसमें से काफी सारे बेस्ट चॉइस है एक्रोन के लिए। I was also considering this possibility, especially because he respects you so much and has sought you out before a few times. Perhaps he's also unsure of your intentions and is probing you. I'm just speculating. In any case, we have to be careful when handling Aventurine. He's skilled at reading people and discerning the right moment to strike. He's clearly a born gambler if he's willing to go all in to win. Looks like Aventurine doesn't need anything else.
Let's turn our attention to the family's assignment for now. Family Ranko, assignment. What do you think? Among our current clues, the 2 murders that he witnessed are the most directly connected. I suggest starting here. One thing I'm curious about is, if a person dies in a dream, what happens to them in real life? Seeing as we're at the family's behest, why not pop back out to reality and verify Miss Firefly's situation back at the hotel? Perhaps we could also make a few inquiries about her while out there. How about we split off into 2 groups? There are still some things worth focusing on inside the dreamscape. I'll investigate those and we can link up again later. Worth focusing on? Oh. No problem. I'll leave it to you then. Huh? Aw, I thought I'd finally get to see Himeko and Mr. Yang go out on a mission together. Oh well. Take care then, Mr. Yang. I will. Keep in touch. Okay. वेल्ट ने Honored डिटेक्ट कर guest, लिया भाई. Could you come out for a second? किसी को तो डिटेक्ट किया यहाँ पे वेल्ट ने. Oh, surprise or what? I'd be embarrassed too, getting Bhai, stared at like that. वेल्ट का Forgive me. senses My name is Welt Yang. I'm एकदम one of the crew next members level on का the यार. Astral Express. I Seven sense believe बोल you've met सकते my इसको. colleagues. Well, Acheron को डिटेक्ट कर लिया भाई इसने. Is ऐसे ही. there something about my name? पसंद है क्या? don't you want to know my name? I already do, Miss Acheron. You're a prominent figure in Penacony. Prominent figure. What are they saying about me? Some claim that you're the real culprit behind these murders, that the Annihilation Gang's tragic fate at the banquet was a result of your blade. Hello Godzilla, what's up bro? And Welcome to you're the stream now bro. attempting to unleash another bloodbath on Penacony. The Annihilation Gang. The Annihilation Gang. Ifrit of Everflame Mansion. Tragic fate. That Duke turned his dying body to flames and sacrificed his life as a martyr. He was a determined and heroic pathstrider. Not even a villain should be disparaged like this. And what's more, there were plenty of suspects invited. Do they really think that a blade is more dangerous than that black hole you're wielding? मुझे हेल्प चाहिए. Intuition. क्या हो Not even गया? the family managed to point out the truth behind this cane. क्या हेल्प चाहिए भाई? So you must surely know, Miss Acheron, that peering into a black hole is not a wise move. As a potential threat, your knowledge of us has reached uncomfortable depths. Reveal your true identity and intentions. Otherwise, brace yourself for gravitational ओ भाई disintegration. वेल तो सीधा मुंह पे That shouldn't सुना be दे रहा है necessary. इसको. But if it makes the nameless feel less defensive, I'll be happy. एंग्री to यंग help. मैन है वेल्ट यार. Believe it or not, Galaxy Ranger, Acheron. Those are the names I go by to this very day. अवेंटरन My नहीं trip मर to रहा है मेरे Penacony से. is solely to वाह. fulfill an अब मैं भाई final मैं कैसे हेल्प करूं भाई? मैं अभी तक वहां तक पहुंचा भी I'm नहीं है. here for the Watchmaker's legacy. And that's it. I think I've been honest enough. Still unwilling to reveal your true identity? मुझे It's not that I एक्विलियम don't 6 want नहीं to. करना चाहिए था. It's just that I can't. लॉल. I've come so far, and I can't sum up all of that in just a few words. Everyone has their own unspeakable past. Secrets that they don't want to be revealed. And I won't be asking any more questions, such as why the Astral Express is roaming around the cosmos with a Stellaron on board. Is he okay? That memo keeper didn't do anything, right? He's fine. Let's stick with the topic. Gaining my trust all depends on how much you're willing to reveal.
I've run around many different Penacony dreamscapes just to try and find that legacy. And during this period, I came into contact with quite a few guests. In the process, I gradually came to realize मेरा इन्वर्टर उसको Secret मार Penacony रहा है तो उसका may be only closely 1 related to HP the हो Trailblaze. जा रहा है That's why I've come to ask for your help. I don't have enough proof yet, but I'd like to speculate something. The source of all tragedy lies within the इन्वर्टर का family. बूस्ट चाहिए बूस्ट If you could trust me, we could find the proof to support Acheron this मिल गया ना claim नीलम together. तेरे को Acheron से मार Mr. Yang, I think you've come to the same conclusion, haven't you? Let's leave it at that. For now, I'll choose to believe that you bear no hostility. Share your findings with me and me alone. I don't want vague conjecture to interfere with other people's judgments before we find इनको solid 82 पीटी proof. हुआ अच्छा तो तूने किसका डिस्कॉर्ड पे फोटो भेजा था By the way, would you like something to drink? Before we go, how about 2 cups of Wake the Heck Up? No, वाह 4 cups. Because the conversation coming up will last forever. Acheron के साथ चाय की चुस्की लगाने जा रहे जाओ भाई At the same time, hotel in the real world. I've been watching her closely for a while now, and the first invitation was in the banquet hall of the hotel. She just sat in one corner, keeping silent, chugging down a couple cups of Wake the Heck Up. I told her it's a pungent, bitter beverage, not the taste of sweet dreams. Only for people allergic to Soul Glad. And Cool. she said, हेलो Really? हाँ बोल ना But I don't भाई taste सीन ऐसा चल रहा है जो any कह रहे हैं difference at ना all एवेंट्रीन से between जीत them. नहीं पा रहे मेरी काफका मर चुकी है मैं ब्लैक स्वान हीलर और जो मेन कैरेक्टर है उससे कर रहा हूँ और भाई मैं the जिंदा हूँ guest तब से rooms are charmingly minimalist. An aesthetic you कुछ share, Miss Acheron. तो अभी भाई उससे बोल यही क्या It's a cinch. उससे This music यही box. कैरेक्टर लेने के लिए The बोले मेन कैरेक्टर ले invitation जाओ कोई received शील्ड by the कैरेक्टर है वो ले जाओ Annihilation बस Gang. बाकी There स्टिल काम हो कैरेक्टर गया लेके जा memories that नीलम linger on it टीम में yet. सस्टेन You see, memories दो of सस्टेन you लेके are जाओ not yours alone. They शील्ड और travel हीलर in other बस people, हम्म other बाकी काम things. हो जाएगा I know much, and I ये can पागल predict लगता है even मैंने फोटो के more. नीचे लिखा भी With तो some था help, अरे the dead मैं can अभी be made to इतना speak. नहीं देखा बे यार The फोटो देखा Annihilation कौन कौन Gang, भेजा that band of कांग्रेट्स desperados who या have disappeared रिएक्शन after डाल दिया meeting मैंने you. What exactly happened to them? Well, let me reveal all. ओह ब्लैक स्वान लुक्स सो कूल यार Gradation 12. कौन सा देख रहा है वॉइस इन द मेमोरी Dreamscape 12. Father, I dedicate this to you. कौन है ये Well done. अरे ये तो इनहाइलेशन है हाँ Wherever they go shall be met by annihilation. There it is. It's hazy, but it's Ifrit's voice. The other one is probably his progeny. This is the residual memory from when the invitation was first delivered. They were abruptly interrupted. Then, what happened next is... मेरा टीम इन्वर्टर स्पार्कल बाइलो जीपाट था Refuge in a land भाई फिर भी कैसे मर गया रिट्राई करके देख merely wishing for undisturbed rest, away from the storms. Children of the flame, this marks your rite of passage. She won't be necessary. I alone am enough. When have those on the path of destruction feared death? The Everflame Mansion has set out on a journey. Those poor people, they have no idea what lies in wait ahead of them. Memory recovery is going well, but slowly.
She'll be here soon, and time is short. There's nobody else here, so there's no need to be delicate. In fact, I think I'd better go all out. What happened? E. The memory after that is blank. How is that possible? This music box fell into Acheron's hands, and she brought it to Penacony. That's a fact, and that's how it should have gone. But along the way... Literally 25 minutes से मैच like चालू था. it's Phase been 2 में erased. मार ही दिया उसने. भाई अब देखता हूँ यार जब बॉस फाइट होगा मेरा. मैं अभी कैसे बताऊँ यार. जो चीज मैंने अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया. कैसे बताऊँ उसके बारे में. It's... No. Is this not a memory? Oh, a memo keeper. Oh. Do you serve the Garden of Recollection? Or the Cremators? My name is Constance. A pleasure to meet you. We were supposed to meet in Penacony and spend an unforgettable time together. But अब जीत जाओगे. seems unrealistic. अच्छा भाई. Dolly is not welcome on the banquet आज star, वीकनेस है उस पे. and I don't need a coming of age ceremony. भाई जरूरी थोड़ी है टाइप वीकनेस रहता है तो जीत जाएंगे. I know what you're looking for. Want her secret? I can give it to you, and then you can enjoy the banquet for me. भाई ब्लैक स्वान के साथ माइंड गेम्स खेल रही है ये. Unforgettable memories. Oh. A phone. Wanna listen in? ब्लैक स्वान के साथ माइंड गेम्स खेल रही है भाई. इन दिस मोमेंट ऑन द अदर साइड. अब ये अदर साइड. A few days ago, the IPC made an announcement. Under the watchful guidance of the Marketing Development Department, and in accordance with the Interstellar Peace Charter, the independent Sigonian sovereignty has hereby been established, and shall take a legislative seat at the Interstellar Congress. The formation of the Sigonian sovereignty is of great historical significance to the Sigonia system. This move puts an end to the planet's long and bloody history, turning the sensational Kataka-Abjan extinction event into a ये skip मत करना. मैं कुछ भी skip नहीं करने वाला. तो ऊपर देख रहा है ना ऑटो पे चल रहा है. Located in an unclaimed zone at the intersection of the Denise, Prothean, and Dorneau star clusters. The planet's surface environment is known for being extremely harsh, constantly faced with the threat of impact from small-scale celestial objects. This is why very few intelligent species have made this planet their home, dividing themselves into several tribes to eke out nomad lifestyles as they struggle to survive the arid desert wilderness. They have developed their own folk beliefs that are independent of the Eon belief system. हार गया यार. Sigonia. हार गए. Ravenous eye of the storm. मतलब फिर सेकंड राउंड तक पहुंच पर हार. रुक जा स्टोरी चल रहा है यार. रुक जा. Land of rock, but not water. सही में एडवेंचर को लेना पड़ेगा भाई. बॉस फाइट बहुत दिमाग खराब कर रही है यार. शेयर करूं देखेगा तू भी. शेयर करूं डिस्कॉर्ड पे. फाइट का अरे स्टोरी चल रहा है भाई. अरे हम उतने से भी आगे बढ़ गए. तुम करो भाई. ठीक है तो फिर अभी शांत हो जा. फिर मेरे को स्टोरी ये करने दे भाई. क्या यार पूरा माइंड गेम्स चल रहा है यार. Yet yoked us beneath a sword of bitterness. Oh, Gaiathra Triclops,
thou can hear me, please open up thy 3 eyes and gaze upon this child. ये When कौन you है? took his father, my child was still sleeping in my belly. And where my husband went, I too soon must go. नीलब साउंड वगैरह बराबर है ना स्ट्रीम का? I don't ask for a peaceful death. Just for you to tell me, does the baby swaddled sweetly asleep? Does he dream of his mother's heartbeat and the sound of falling rain? Please tell me whether this life is all just a fleeting dream. Otherwise, why would this child be born to face impending death? Okay. Mommy! 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 The rain! It's raining! Raining? Raining. चलो मैं आता हूँ चार्ज करके. ओके नीलब, बाय बाय. It's raining! It's true! Those outworlders weren't lying to us. They really did summon the rain. Mommy, we can leave here. We can go back home. Back home. Gayatri Triclops. You came. Do you hear that? Thank you. Thank you. Darling, listen. This is the sound of rain. On the day you were born, the sky also sent down a gift like this from Gayatri. Such a lucky child. Such a blessed child. Just like your name. A gift from them to Avjen. My boy. May the goddess Gayatri close her eyes 3 times. Keep your blood eternally pulsing. Let your journey be forever peaceful. And your schemes forever concealed. Welcome to this sad world, Kakavasha. Akawasa. ये कौन सा है? Time to wake up, gambler. ये अवेंटिरन का बचपन दिखाया था शायद. Oh heavens. I must have drunk too much soul glad. उतनी स्टोरी में पहुंच गए इतनी जल्दी? Didn't expect you to be back so soon. शायद. How is it? Find anything? ज़्यादा ही जल्दी नहीं पहुंच गया तू? Just as you guessed. हाँ अभी डॉक्टर के Nobody साथ बात चल outside रहा है, knows वही about होगा. Robin's death. There aren't even baseless conspiracy theories. They're still streaming the rehearsal for her ceremony, using a stand-in, I guess. They must be dreaming. Of course. Who could imagine that death would actually descend upon the idyllic dream created by the family? Let alone that the victim would be the female lead of the Charmony Festival. To be honest with you, I didn't believe it. I even tested it a few times myself, until I discovered that I couldn't actually die. Whenever there's any danger, I'm forced awake by the dream pool, and it's all as if everything were just a nightmare.
That's why I'm convinced that there are a few big secrets lurking behind the scenes. Then you must have heard about the Memory Zone meme. When I graciously deigned to establish connections with the Oak family on your behalf, they were quite in a pitiful state of disarray. Besides Robin, there was another body. I don't know the exact details, just that it was a stowaway. 2 murder cases? I told you something seemed off about the Nameless. He must have come across the other one. This murderer is a psycho. But I have to admit, the case should be easy to crack. We can leverage the family's malfeasance and let the IPC use this as a reason to intervene. It's just that their trickery runs deeper than I thought. Robin's stand-in was all ready to go. These 2 murders are definitely getting hushed up. What should we do? Let me think. It's too rare an opportunity to miss out on, so I gotta be careful. Incredible gambler. Have you already exhausted your limited repertoire of tricks so soon? There are plenty of chips, but it'd be best to choose carefully. The most straightforward has to be Robin. Remember? That masked fool once told me to find a mute as a friend. Robin is what she calls mute. She has lost her voice, and while most people can't pick up on it, you and I cannot mistake that sound. Not produced by any voice box, but rather by the resonance of the harmony. If that girl hadn't gone hoarse from singing practice, there'd only be one possibility. Something was up with the family. Or Robin herself. To get to the bottom of this, I tried every way I could to meet her. But she died. Right before my very eyes. A complete and utter loss. Incidentally, it seems to have resulted in your rather undignified arrival on the interrogation stand. There were eyewitnesses at the scene, and the family, in their graciousness, has tentatively accepted your alibi. However, for the foreseeable future, you shall, regrettably, find yourself under the vigilant watch of the hounds. Well, things aren't looking too optimistic, Doctor. Starting to break out in a cold sweat. Do you reckon there's still any chance of a comeback, given how things are? A probability? Yes, it exists, but it verges on the infinitesimal. To phrase it in a manner more befitting the vernacular of Penacony, you're dreaming. But if you simply can't control yourself and want to try your hand, then there just so happens to be a suitable candidate. That man wants to see you again. Ranko? Who? Sunday. बोलना. मेरा complete हो गया. Is this Nice. a public hearing or a private trial? Boss fight कर दी मैंने. If it were the former, it would hardly befit my stature to stoop to the role of a mere messenger. Fine. किससे कंप्लीट किया? Oh, that's अबे great. main character लिया. It's all great. You see, the dead can't talk, Main but the character? living can. Ratio, I'm convinced now that there must be something wrong हाँ inside main the character लिया, family. Black Swan लिया, Kafka लिया, Just main you character लिया. wait and see. और ये That man's sister has died. कहते हैं? He can't ब्लैक sit on स्वान his काफका hands. डीओटी टीम लगे क्या तू? हाँ लॉल. सोचो ना ये कैसे हुआ. Oh, without any further ado, let's set off. Lead the way. हाँ? The show is about यही to सोचा कि begin. कैसे हो गया. डीओटी टीम वैसे सब जगह काम ही आ जाता भाई. अब क्या ही पूछूं उसमें? DOT हमेशा बॉस फाइट में आता है. बस यार पता है सही कह रहा है. और तू अभी इसके साथ फाइट करेगा ना तो पता चल जाएगा तेरे को. भाई सही में लेना पड़ेगा यार. एडवेंचर इनको बहुत ज़रूरी है यार, हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा. डीओटी टीम तो वैसे काम आ जाता. We're here. सब जगह ही काम आ जाता.
The Dewlight Pavilion is the Oak family's fortress and a place where heads of the families meet to discuss great plans for Penacony. लेकिन जो सैम के साथ फाइट थी ना भाई वो तो Fortress. बहुत गंदी थी यार. I like this metaphor. I dealt with the warlords of the Amanicus star system not long ago, and their synchronized orbital manor wasn't this heavily कौन फंस रहा है अभी guarded. कोई फंस रहा है उसमें जो कर This mansion nominally belongs to Sunday. अभी रुक जाए स्टोरी चल रहा है. Without his express invitation, the likes of ordinary Chatting, guests would chatting, never चले grace जा रहा है these बस. grounds in their मेरे को दिखा lifetimes. लाइव तो किस पे मैं भी Look वहाँ around तक पहुँचा while you still have this तो इसलिए तो बोल रहा हूँ moment of स्क्रीन freedom. शेयर करोगे नहीं. Hey, Doc, whose side are you on anyway? Who's to say I won't sell you क्योंकि out? स्ट्रीम पे तो डिले है. कुछ बोलेगा We'll तब तक see. मैं वहाँ से When we meet the authoritarian master, 10-20 सेकंड के बाद मुझे यहाँ पे I'll दिखेगा. pry an answer out of him. Follow me and I'll bring you to his parlor. अभी बहुत Hold your tongue आराम से. and let कुछ me भी नहीं deal पहुंचा. with the members of the family. जब वहाँ पे बहुत सारे चेस्ट होंगे चेस्ट भी निकाल लियो बगल से. अरे वो बाद में निकालूंगा रे. अभी आधा अधूरा काम करूंगा बाद में ढूंढना पड़ेगा भाई. इधर से तो निकाल अब किधर ढूंढना. नहीं ढूंढ मत जो पास में चेस्ट मिल रहे हैं उनको निकाल बस. बाकी ढूंढना है यार बाद में कर लूंगा सब कुछ. चलती है. अब तो एडवेंचर इनका यूज करेगा भाई. देखियो कितना गंदा है भाई ये कैरेक्टर भाई. तो फैन हो गया भाई इसको. अच्छा ही है कैरेक्टर भाई. अभी तो देख ही रहा हूँ मैं. अच्छा है में यूज करके दे. फाइट में यूज करेगा तो मुझे टीम चेंज करना पड़ेगा शायद. लोल ये क्या टीम है? हाँ फाइट में यूज होगा. थोड़ा फाइट करनी पड़ेगी. देख ले फिर कोई टीम चेंज कर ले. बाइलो की जरूरत ही नहीं है. अरे नहीं ऐसा करना सुन. काफ का ले ब्लैक सॉन ले और एक हीलर ले जा. या हीलर नहीं लेना है हीलर मत भी ले. हीलर को कोई काम नहीं हो पाए. वो आराम वैसे भी तेको जिंदा ही रखेगा ना. हीलर की जरूरत नहीं है. अच्छा जिंगलोर वो ले रॉन में. ठीक है सही है. ये टीम लूंगा ना भाई. Hey you two, that's a place of business. No. यो वीडियो देखा. कौन सा वीडियो I विशाल? was requested. Oh, Excuse me. the one. Right. That's because. It seems like the idiot. चलो भाई बॉस फाइट. दा बन रहा है. Sound ringers. सारा टेक्निक. A dead end? The door is shut tight. Looks like we're on our own. I mean, there isn't a door. How did you get in before? For security reasons, the family built the administrative site deep in the dreamscape, with the mechanisms hidden in these nightingale statues. The direction of the statues can be controlled. On the previous occasion, an attendant named Kona... Maybe we should do the same. Yeah. हाँ. Obtained a clue regarding the statue. Solving a problem by brute force doesn't prove your intelligence. The side room. Don't let me repeat myself. मुझे लगा कुछ तो होगा. चलो
कहाँ जाना है मुझे? ऊपर पुल किया मैंने। अच्छा विशाल, वो देखा तो नहीं है भाई, मुझे ऐसा कुछ लिंक तो नहीं मिला भाई, पता नहीं, पर मैंने सुनने सुनने में आया कि मिला है तुझे 90 वोल्ट में सब कुछ मिल गया। अबे वो क्यों नहीं रहा? भाई ये कैसे एनिमीज है? यहाँ पे कुछ तो है। Six nightingales facing in different directions. An obvious hint. But are these nightingales? They are. What's wrong? How can nightingales be so huge? They look more like torment eagles to me. There are no eagles in the 5 families, only nightingales. Why am I wasting time with you on this? पजल सॉल्व करना, पजल। अरे उल्टा डाल दिया इसको। ये किस साइड देख रहा था? शायद पीछे के साइड ना। हाँ हो गया। Just as I thought. Here's the correct answer. A truly miraculous Really? I was being sorry. एक बार फोटो देख के पजल सॉल्व लो। लेट्स गो गाइस। हाँ वापस अब सीधे हो गए? तो खुल गया गेट, अभी खुल गया। ये भी घूमता है क्या? Oh, impressive. Oh. Do you need me to remind you? We're in a dreamscape. No matter how grand the mansion looks, it'll not affect Penacony. Stop wasting your time nitpicking the family here. Yeah, you're right. You'll... Lock. ये तो क्लॉक की पजल है, बाद में देख लेंगे इसको। है क्या यहाँ पे? जस्ट बाद में लेंगे सब, एक साथ में कलेक्ट करेंगे बाद में। टेक्निक पॉइंट ले लिया यहाँ से। ये साइड पे क्या? ये रखो भाई, चुप के बैठा हुआ एक। Hold on.
What's wrong? Are we heading the wrong way? No, but this door is locked. My friend? Did you really make an appointment with him? It's a trial. You got to prove your worth to Sunday before you can speak with him. If I'm not wrong, we need to find a way to open this door in the hall, or this place will be our prison. Oh, an escape room. My favorite. Get serious. I've no time for games. Let's head back. The hint is probably in that prominent sandpit. Wow. That's an enormous sandpit. I'd love to build a tall building for myself. Oh, look. There's a notice. There wasn't a gap before. That man must have done it intentionally. Well, with your brilliant mind, you shouldn't have any trouble recalling what was here last time. Of course. Let's look around. When I see it, I will know it. Fine. Fine. Why do I feel that we're pursuing a degree in burglary now? पजल सॉल्व करना है, बाद में करेंगे। अरे ये मोटू मारूंगा, ये मोटू को नहीं मारने का मुझे। चोर Found it. This is it. भाई कितना कितना एरिया है भाई ये। हेलो, इतने सारे अभी चेस्ट ढूंढते ढूंढते ना लग जाएंगे मेरे। अवेंटिन उनका डिफेंस कितना है? कैनॉट व्यू डिटेल इन्फो। वाह, दिखा दोगे तो क्या जाएगा। ओके, ये ले लिया ना मैंने पॉइंट। चलते हैं यहाँ पे। ये रॉबिन, रॉबिन का पोस्टर लगा है। ओके एग्जाम, मुझे यहाँ पे जाना है ना। यहाँ पे जाने का रास्ता कहीं से तो होगा भाई। ऊपर के वॉल पे जाना पड़ेगा भाई मुझे।
ये भाई ये क्या होता है भाई? ऐसा कौन देता? क्रिट रेट क्रिट डैमेज एक साथ में दे दिया उसने। And the nameplate reads, If I were you, I would shut my mouth. It's... oh, this reminds me of one of those building toys. Oh, look. The gap is closed. And it fits perfectly. So, what's next? फुल स्टोरी हो गया। कांग्रेट्स। आजा अगर आ गया तो। Oh, good heavens. Did I drink? Am I still in a dream? Indeed. Oh, Doctor, you're huge. It's me! Down here. Oh, actually, I think we could make this work for us. Just find a way to slip me into Sunday's collar, and I'll infiltrate the family just like that. Oh, fine. I was just kidding. Let's find a way to open the door. भाई क्या जगह ही है? मिनी मैप बोलना, और यहाँ पे भी ट्रेजर मिलेंगे अपने को। लगता है इस ट्रेजर है यहाँ पे भी अलग से। हो रहा तभी के करके बाद में करेंगे, छोड़ो अभी। Welcome to the Golden Owl. I am an Oak Soldier. I will be here to guide you through. And hello, I am an Oak Soldier. Model, happy Gen. Please look, model. What's up with that? Now the family's toys are trying to frame me? I didn't... Oh, capsule machine. So, I was right. These models have interiors that look exactly like the real buildings. The only difference is that no one lives in them. Funny that Sunday puts a miniature that makes him seem like a giant by comparison, right where he can see it first thing in the morning. Insecure much? भाई यहाँ से तो जा ही नहीं सकता। सोडा मिला मेरे को, लूल।
रास्ता किधर से? अच्छा इसके अंदर से होगा। ओके अब ये कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे फाइट करना पड़ेगा यहाँ पे। The moon shines on truth. Eternal. Every petal, all will be swept away by the wind. ये इसका shield है ना ये ना shield that absorb damage and increase effect resist by 50% while the shield persists or before the effect disappears. Enemy attack will not reduce the shielded character's HP. After this character receives damage, eventually receive 1 point of blind bet. Got it, bro. Got it. इसका मेरे को दिखाएगा नहीं भाई, अवेंट्यूरन का नहीं दिखाएगा। अच्छा दिखा रहा है, यहाँ से दिखा रहा है। वाह, डिफेंस कितना है इसका? 2.8 प्लस 1117 कितना हो गया? 2 3 4000 के आसपास का डिफेंस है इसका। क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, क्रिट रेट 75 का रखा हुआ है भाई। 4000 का डिफेंस प्लस क्रिट रेट, क्रिट डैमेज भी इतना मेंटेन किया है। ऐसा कौन सा बिल डाल दिया इसको, पता नहीं। इफेक्ट रेसिस्ट 81%। वाह भाई वाह, क्या बोलो अभी। सही है भाई। Lend me your strength. Tedious. Blade of moonlight. ये क्या हुआ? ओए, ये क्या बन गया? Lend me your strength. Nowhere to run. We've entered the storm. To guard and defend. भाई तुमको तो वन शॉट मारूंगा, वन शॉट। In lunar flame. रिलेटेबल विल लेमो या वन शॉट, तब बाय बाय। Do not concern yourself with the outcome. Oh, one of the fragments flew upstairs. I'll need to use the pinball machine to flick myself up there. But it's tough. भाई स्टोरी क्वेस्ट का अवेंट्यूरन का बिल देख लिया भाई। 4000 का डिफेंस है, क्रिट रेट 75 है, क्रिट डैमेज है 1 कितना 167 या ऐसा कुछ था। Doc! There's no need to yell, I can hear you. The pinball machine must be hidden somewhere in the hall, like the arch. Wait here, and I'll be back in a minute. Finally, a moment of peace. ओ अभी डॉक्टर रेसो खेलना है, वाह। चलो भाई ये भी ठीक है, डॉक्टर रेसो खेलेंगे भाई अभी। ओए तेरी, अरे भाई साहब चारों तरफ बंदे। हेलो, व्हाट इज दिस ब्रो, यू चीटर्स। Lend me your strength. Your answers? भाई बोलना भी रहता कि बंदे रहेंगे, ऐसे सिर्फ मार देते यार। Grace and elegance. Lend me your strength. You don't look so good. Grace and elegance.
I'm asking questions. Answer me. 0 points. You'll pay for this. What's in your prescription? So this is We've the entered warmth the of life. To guard and defend. Crush them. SAS per knowledge, the measure of truth and falsehood. क्या कर रहा है? क्या करूंगा भाई, थोड़ी चलेगा और क्या होगा। I'm asking questions. ऐसे कैसा लगा यूज करके? अरे 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 भाई रुक जा रे, अरे रुक जा, अरे रुक जा भाई। भाग भाग भाग। अरे वो कर वो यूज कर। हाँ What the freak? This battle is भाई दोनों अलग अलग जगह पे घेर के घर है भाई, क्या है ये, मजाक चल रहा है ये। वैसे ये वाला 70 का यूज करा फाइट में। क्या यूज किया ना, उसका मजा है और क्या है, कैसा लगेगा भाई। ये फॉलो अप अटैक देख रहा था, शील्ड क्रिएट। वो फॉलो अप अटैक पहले ही गेम खत्म हो गया एनिमी का। SAS per kibby, knowledge, the measure of truth. वही तो कह रहा हूँ, यही तो था। You'll pay for this. There's more to look. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Acheron से नहीं गए। क्या Acheron? Some सही value, है I ना, suppose. अबे सही है ना, हम लोग Acheron पे नहीं गए, हम पहले सोच तो रहे थे Acheron के लिए। Every petal All will be swept away by the wind. सही गलत की बात नहीं है, अब अपने पास DPS है तो नहीं गए, सिंपल और क्या। I'm asking questions. कॉलेज के काम। 0 points. Lend me your strength. Answer me. Need a doctor? This battle is unavoidable. Lend me your strength. Test. 0 points. That's it. Pleasant moments of solitude are always fleeting. Ding, 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 ding. Oh, you're back. Just thanks, Doc. ओके, अब मुझे पार्ट डायरेक्शन Oh, Horatio, you should come in here and take a look. The view here is breathtaking. Honestly, you could easily squash me with just a pinch. If that is your wish, I will do so without a moment's hesitation. अरे नहीं, All done. Piece of cake.
joyous tour of Toy City has come to an end. इतने सारे puzzle है भाई. Penacony isn't all bad, right? I'll use this interesting experience as a talking point at the poker table. Exit sand pit. भाई exit. यहाँ पे भी अलग से chest है भाई. भर भर के. अरे नहीं इसमें देखो बहुत पजल मिलेंगे अभी बहुत आराम से कर It's a pity you made it out of the sandpit alive. Sunday is just beyond this door. From my limited... Yeah. Tell me about... I don't have a plan. Looks like sincerity. Am I not sincere enough? And I'll help him find the murderer. He can't do it due to his status and position, but I can. And that's benefit. On what basis do you believe he's incapable? Simple. Because that that was just an Moreover, I need to know. But honestly, we'll see. If the chance of winning is just beyond this door... Ah, the charming... 3 chips are enough. All or nothing. It seems my puzzles are too effortless for you, IPC Ambassador. I appreciate your words. And I see you put a lot of effort into welcoming me, Mr. Sunday. However, this is no way to greet a guest. Well, this isn't an invitation, but a summoning. Before we speak, I need to test your character. I imagine this knowledgeable doctor friend of yours has been of great help. Yes? Knowledgeable doctor friend. Certainly. You ought to know this better than I do. He's already faithfully fulfilled his duties, hasn't he? Yes. The doctor has assured me of your noble character. He considers you, like himself, a virtuous person who can be trusted by the family. I have come to know you very well as a person, Mr. Aventurine. भाई ये संडे आएगा तो मेरे ख्याल से हीलर में हो सकता है. The fact that you succeeded in overcoming many obstacles just to meet me gave me the reason to believe in your wisdom and courage. DPS तो नहीं होगा यार. Support character ही रहेगा ये. Abundance रहेगा देखना. You've used your wisdom at the wrong place हो to सकता है meet the wrong chances. person and put yourself in a situation where you shouldn't be, witnessing a tragedy that shouldn't have happened. You don't look too well. नाइलिटी में डालना उनका गैम्बलिंग का प्लान था भाई. डिस्ट्रक्शन में डाल दिया, हर कोई F2P प्लेयर बना लेता उसको. If I wasn't mistaken, you just made a serious accusation against the family. No, you weren't mistaken. For depravity is creeping in around you. There's no need for us to be evasive. Let's talk about your sister. Your sister's talent is unrivaled in the world of show business. As you know, her voice has been out of tune since she returned to Penacony. What's more disheartening, she can't sing anymore. Who could be responsible for this? Many suspect the culprit is among the outsiders, but I know you hold a different opinion. Now your noble status has become a shackle, preventing you from apprehending the murderer and avenging your sister's death. You're feeling anxious because you're out on a limb. But don't worry, I'm on your side. I'm immensely honored by your concern for me, Mr. Aventurine. Since you're so selfless and generous, I believe you wouldn't ask for anything in return, would you? Well, naturally, you wouldn't incur any loss from this. I just want to reclaim what is mine. My liberty and the personal items under the family's custody, the bag of gift money, and... the box in which the cornerstone is stored. That's right. Cornerstone.
I've heard it's a treasured asset of the Strategic Investment Department. A sacred stone that seals the Preservation Emanator, granting significant power. And every liquidation specialist holds one. For an object so precious, it probably comes at an even Hello, higher Badal, what's price up? than other forms of recompense. भाई कहाँ गायब है इतने दिन से? Well, I'm sure you're aware of the high level of risk I'll be undertaking to bring the truth to light. Mr. Aventurine, when you are out and about, do you always make adjustments to your appearance? Your tie should be on the center line. Your shirt must not protrude from your vest. Your trouser creases should be perfectly straight and always aligned with the tips of your shoes. Of course. But I don't, because it's not appropriate to do so in public. You should make sure everything is presentable and in order before leaving the house. I'm not the kind that takes risks. The cornerstone must be in the custody of the family. तुम्हारा भी एग्जाम चल रहा है. For negotiation? Please, don't let me turn you down twice. भाई मार्च में तो सबका एग्जाम की बैंड बजा के रख दी गई. I suppose you wouldn't mind that. सबका एग्जाम चल रहा है. After all, a merchant can't function without a bargaining chip. You compromised quicker than I thought. Unfortunately, it's a gambler that needs a bargaining chip. I'm eating dinner. How are you? I can give you your gift. Doing story quest 2.1. I'm doing good, bro. Acheron pull कर लिया, बादल. The fact that you can decisively forsake the box you asked for. What exactly is stored in it? Oh, triple-faced soul, please sear his tongue and palms with a hot iron, so that he will not be able to fabricate lies and make false vows. What have you done? Under the light of the harmony, all wickedness is revealed. I implore them to shed their light. ये harmony character रहेगा मुझे तो लग रहा. Harmony या abundance. Next, you have 113 seconds to prove your innocence and gain my trust. नहीं मुझे 50-50 हराना है. वाह, लोग 50-50 विन होना चाहते हो, तुमको 50-50 हारना है. सही है. Question: Do you own a cornerstone? Yes. What a simple answer. You too understand that idle chatter leads only to poverty. Did you hand over the cornerstone to the family when you entered Penacony? Yes. Yes. देखा? Does the किसी का स्टोरी नहीं का फिर भी. to the family belong to you? Yes. Yes. देखा? Is your cornerstone in this room right now? Yes. Yes. देखा? Is your memory free from any kind of tampering or deletion, encompassing but not restricted to the techniques of the Garden of Recollection? Yes. Yes. Are you an advocate from Sigonia? Yes. देखा? You even know about that? स्टोरी तो किसी का देखा भी नहीं, फिर भी The yes. ability to read, tamper with, or manipulate one's own or another's mind. Yes. No. No? Does it matter? अवेंजर या रॉबिन के लिए. अच्छा. ठीक है ना, एक गलत हुआ है. 100 में से एक गलत हुआ है. बाकी सब सही बोला है. The Abjans were killed in a massacre. Am I right? Yes. No. अबे हाँ बोल देता क्या जाता. Yes. Perhaps. Perhaps. देखा? मतलब हाँ भी. Do you hate and wish to destroy this world with your own hands? No. I don't know. देखा? I don't know. Now, the final question. Can you swear that at this very moment,
The Aventurine stone is safe and sound in this box. Yes. ये कौवा कौन है बे? अवेंटरिन कैसा कैरेक्टर लगा? सुपर ओपी ऑसम धासु एकदम. हेलो प्रिंस. ठीक है, इसका मतलब यस ही हुआ. Looks like we can get an answer. Open it, Mr. Aventurine. It's your last chance to defend your honor. तब मजा आएगा. अरे ऑफ कोर्स का मतलब भी यस ही होता है भाई. अरे यार मेरे को पता नहीं है. मैं बोल रहा हूँ. हाँ. पॉसिबल. तब देखना मेरे को कितने प्रॉपर. हाँ. अच्छा भाई. ठीक है भाई. ऐसा तो मतलब मैंने स्टोरी बनाया था तो बात अलग थी. Please. कुछ तो है भाई इन लोग का. कुछ नहीं है. Are these what you're looking for? मजाक उड़ा रहे हैं भाई अंदर. ये क्या है? दो? हाँ दो है. But why two? Since you came as promised. अवेंटरिन या रॉबिन के लिए. वाह बादल. Does this mean that you are willing to We are take on the the side of the family in this same boat. farce? Definitely. अवेंटरिन गया. What makes you think you can गया अवेंटरिन क्या पर सेल्ड के लिए या कैरेक्टर अच्छा. Company. I also understand that you're an avid learner who sees the pursuit of knowledge above all. In that case, you are. भाई मेरे को तो अवेंटरिन का एबिलिटी एंड पावर एंड लुक सब सही लगे भाई. Vital matters for the sake of petty pride. If you agree to assist the family, I'll share our research findings on the Stellaron. ये संडे का कुछ तो गड़बड़ है भाई. कुछ तो गड़बड़ है. ये बंदा झोल मारा है. दया कुछ तो गड़बड़ है दया. Cut to the chase. What do you need from me? I need Mr. Aventurine's comprehensive plan. Haven't you confiscated his cornerstone? You can't expect a featherless bird to take flight. But I've also heard the 10 elites in the Strategic Investment Department have united. संडे का तो कुछ तो अलग ही स्टोरी है भाई. रोल है भाई इसका तो. You'll have to speak more clearly than that. हाँ डॉक्टर ऐसो है समझा क्या? क्या समझता है इसको? Which Mr. Aventurine surrendered. Was it really his? पिलर फेंक के मारेगा सीधा. You question whether he would entrust you with someone else's cornerstone. The 10 stone hearts aren't as ये as you think. Okay, bro. Cornerstones are significantly more precious to them than their very own lives. भाई डॉक्टर रेसो का इतना इम्पोर्टेंस है ना. 1.6 के अपडेट से अभी तक. और जबकि ये कैरेक्टर फ्री में दिया हम लोग को. बताओ. I never imagined someone इतना would share इम्पोर्टेंस है. this way of thinking. Honestly, you should see a shrink. भाई ऐसा कैरेक्टर को फ्री में दिया मतलब बहुत बड़ी बात है यार. Cornerstone is unique, and only IPC senior staff and related members can access it. But I happen to be among them. I appreciate it. Unfortunately, your guess is correct. Correct. The golden stone. Its color and glow are similar to that of Klepoth's body. ये क्या है? This is the very ruse he intends to use to fool you. He won't reveal to you that the 10 stone hearts chisel their own will into the cornerstones, granting them unparalleled radiance. आन्या को बिल्ड कर लिया. And this golden statue is also known as Topaz, not Adventurine.
and it belongs to Topaz. So, do you wish to confront him? टोपेज का नाम लिया गया है यहाँ पे. I'm more interested to know the location of his cornerstone. The safest place somewhere you'd never think of. Because he never intended to hide it. In fact, that cornerstone has been in your hands from the very beginning. भाई कसम से मुझे अगर पता चला है ना इसने रॉबिन को मरवाया है, भाई इसकी ऐसी की तैसी करूंगा. Mixing a cornerstone, more precious than life itself, with a bunch of इस संडे का सारा संडे निकाल लूंगा मैं. disguised as a gift of सच money में बता रहा waiting हूँ. to be confiscated, is indeed in line with Mr. Aventurine's style. Then he makes up some trivial excuse, downplaying the matter, and requests the gift money. This is a gamble, one he's all too familiar with, betting on your single misstep, leading to a total टोपेज loss. आईपीसी की मेंबर्स है. हाँ आईपीसी. Doctor, Yep. I am grateful for your help. The family will surely reward a रॉबिन righteous जिंदा है. person like you. हाँ भाई यार तुम क्यों As for the सस्पेंस को villain. ये कर देते हो यार. I hope he retreats in humiliation. अब तक तूने ये क्यों पढ़ा? It was all thanks to your Yeah. friend with a keen eye that I could add a blot of utter failure to your storied career. Ratio, you wretch. Finally shown your true colors, huh? Oh, and just to remind you, you currently only have 17 system hours left to live. Treasure your remaining time and savor the delectable aftertaste of defeat. You might as well explain yourself a little more clearly. What I performed on you just now was the Harmony's consecration. You were to show allegiance beneath the illumination of their... Is this what the Harmony represents? But is it built upon constraint and भाई मैं coercion? प्रेडिक्ट कर रहा हूँ. अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा हो तो ठीक है. You misunderstand. मैं Mr. प्रेडिक्ट ये कर Aventurine. रहा हूँ अगर ये Punishment संडे is का meant for हाथ the रहा, irreverent. But I have seen your भाई ये सारा resilient संडे spirit, भूल जाएगा, सारा and डे thus भूल I जाएगा ये offer you the कसम से. possibility of a new beginning. इतना गंदा Throughout मारूंगा ना these इसको तो. 17 system hours, you will be unable to escape the dreamscape or contact any of your companions. You only have 2 paths before you, and it all वो भी depends on chat whether मत you पढ़िए can भाई, complete my सब test spoiler within दे the देंगे ये time लोग. limit. Should you succeed, you will be able to coalesce into the सुन रहा है? harmony and be with your family. चैट मत If you पढ़ियो, fail, स्पॉइलर दे देंगे ये लोग. you will suffer नहीं नहीं the नहीं wrath स्पॉइलर of नहीं the दे रहे, eternal पता है उनको. centurion and fall into an abyss of doom. Sounds like I'm gonna end up the same either way. I indeed do need a servant to help me uncover the evil hidden in the family from an external perspective. I will purge the evil from the inside and bring the real culprits to justice within 17 system hours. When the time comes, भाई मेरे को तो compare ये your संडे ही findings विलेन with लगता mine. है. मारो If साले को. both our findings align, or if you can provide me more insights, then they will truly be able to grant you mercy and honesty. इसकी शक्ल देख के लग रहा है भाई. Shameless hypocrites. You took everything from me and still demand the truth. That isn't fair. Your carnival reeks with the stench of cash. Nothing is achievable without it. This is meant to be an act of personal virtue, not requiring the family's support. Your bag is over there. स्पॉइलर तो मुझे मिल रहा है, मैंने अभी तक स्टोरी कंप्लीट नहीं की. ओह लो लाइक्स दी. Worthless jewels for everything you need. That's what gamblers excel at, isn't it? Off you go, Mr. Aventurine. You are free. I will wait here for your good news. भाई रेसो ने क्या ही डिच किया बे This इसको तो. meeting isn't an interrogation or a negotiation. It's an outright execution.
Why would I do that, Mr. Aventurine? I'm just wondering what a passerby who stumbled upon a scene of a murder could have found out. That's all. By the way, before you go, I have a personal question. What is it now? Do you truly wish to bring about the destruction of this world? Nah. Kakavusa. Oh, are you injured? ये Aventurine का You went to look for them? past है क्या? I guess. Too dangerous. उसका पास है. Just a necklace. इसका sister कौन है फिर Aventurine का? Sister बोल रहा है. We can survive without it. वो बाद में तू पता चलेगा आगे क्या है वो सब. I can't live without you. फिर पूरी टीम कंप्लीट हो जाएगी. अब बस 50-50, 50 या 160 स्पीड वाला लूचा बिल करना है. Sister, don't be afraid. The catechins are fools, but I'm smart. Don't tell me Firefly will be his sister. One? What happened exactly? Tell me. I made a bet with them. The two birds या in the उसकी desert मॉम है. Who will die है first? क्या? ये उसकी मॉम है क्या? मॉम नहीं है, सिस्टर बोला इसने. मॉम कहाँ से होगी? They suspected me of cheating, but I didn't. I won fair and square. कौन है इसके सिस्टर? Of course you'd win. You've always been a lucky child. Gaiathra Triclops must be watching over you. या मॉम है? लकी चाइल्ड बोल रहा है. By going up against those भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा. catechins. Very much Have you confusing. forgotten how Mom and Dad? Look, this is just a necklace. Hello Zyker, welcome back bro. You are my only family. काकावासा. भाई क्या नाम है? I thought you'd be काकावासा. happy because Mom left you this necklace. मुझे तो फायरफ्लाई एंड रॉबिन सेम लग रही है. There'll be ऐसा no क्या? next वो मेकअप चेंज कर लेती है क्या? ऐसा कुछ? It is important. अगर तू But पिक्चर को not as ध्यान से important देखेगा as तो एक you, अजीब my थे. dearest देखा brother. पिक्चर को ध्यान से देख. I don't blame you, but you must remember what Mom said. बचपन में. What mom said? नहीं ये सिस्टर है. Pain मॉम and नहीं है. poverty are the trials of Gaiathra Triclops. ये कंफर्म हो गया. She has also granted us a chance. And that's your good luck, Kakavasha. Your good luck is the most precious wealth we all Avjan have. You're a child blessed by Gaiathra Triclops and can lead the clan to happiness. So always remember to protect yourself. And यार देखो ऐसा है बादल भाई, क्वेश्चन पे क्वेश्चन है. फायरफ्लाई और रॉबिन को ही क्यों टारगेट किया? Okay, I will swear to Gaiathra Triclops to protect this wealth. रुको आती कैरेक्टर के बारे में बोल रहा है. But sister, if Gaiathra Triclops was really watching, काकावासा. why did she not भाई ये protect नाम Dad मेरे को when he बहुत was पसंद है. swept कल away से by the मैं ये quicksand? नाम चेंज कर रहूंगा. After all, Dad went to the Catechins land only to prepare for Gaiathra Triclops' offerings. Where was Triclops. Gaiathra Triclops when Mom was shivering in our arms? Mom was still pleading for Gaiathra Triclops' forgiveness under her breath until the moment she closed her eyes. क्या आवाज है? Everyone praises me for being smart, but I don't get it. If every rain pour was Gaiathra Triclops' forgiveness and grace, then how bad were our sins? So much so that we were born in this world of death? We were born in the world of death. Kakawasa Gaming, yeah, Kakawasa Gaming, yeah, bro. We are welcome back to Hemiko. Excuse me. Excuse I can't seem to find any information on this artist in the Iris family archives. The photo you provided also doesn't show any matches. Just as Computer hang हो गया तेरा. मेरे को check करने दे. What kind of traces do people leave when they enter a dream?
you referring to the records when you enter the dream pool? The equipment will monitor physiological indicators such as heart rate, blood oxygen levels, and body temperature in real time. This data will be included in statistics. बादल भाई, बट ये ब्लैक स्वॉन ने कंफर्म कर लिया कि वो दोनों जो मरे ना वो रियल है, एक्चुअली रियलिटी है, ड्रीम नहीं है वो। The hotel does not have access. ब्लैक स्वॉन ने वो चीज स्टार्टिंग में तो कंफर्म किया था मॉर्निंग के स्ट्रीम पे, मैंने देखा था। Gain access if there's a problem. बता दो ना। अरे वही फायरफ्लाई और रॉबिन। At least we know who to look for next. We can ask the Bloodhound family for information. Thank you for your assistance, Miss Allie. By the way, वो अभी उनको थोड़ी पता है वो दोनों एक ही है। We are looking forward to her performance. Fine? What does that mean? टेम्पो मर गया। Is there something wrong with Miss Robin? प्रिंस, नदी में डुबकी लगा लेना किधर? Have been proceeding smoothly, so I guess things are pretty good. I believe she will be able to put on a spectacular show for all of you. भाई हर एक कैरेक्टर को मारने में तुले तुम लोग हैं? मजाक चल रही है? Sure enough, no one knows about Miss Robin. I'm not surprised. But that Miss Firefly is truly mysterious. There's no information on her in the hotel system. हाँ, Firefly truly mysterious, ये बात तो सही है। She should have a disguised identity after entering the planet. ये तो बात सही बोला। She's also in the running for the legacy. How is she going to sneak into the dreamscape unnoticed? Is there any other way to enter a dream? बोल। Besides the hotel room's dream pool? फायरफ्लाई का छोटा सा स्पॉइलर चाहिए? नहीं, कुछ मत दे, कुछ मत दे। नहीं, कुछ मत। सबको मार दो। जो क्या लिखा है? जोजोत्सु कैसन है, HSR नहीं है XD। ये क्या जोजोत्सु कैसन? कोई एनिमे? हाँ, वो लगा ही था, नाम ऐसा ही है। पर जैसे एवेंटरिन को हिप्नोटिस करा है वैसे वो ब्लैक स्वॉन को भी कर सकता है ना हिप्नोटिस। बादल भाई बात सही है, बट ब्लैक स्वॉन को हलवा थोड़ी है भाई, मेमो की पर है वो। उसको हिप्नोसिस करेंगे भाई। मतलब तुम बोल रहे हो चीटी ने हाथी को हिप्नोसिस कर लिया, ऐसा हो गया, समझ रहे हो? Who are you guys? The Bravo team has arrived at their designated position. अरे वाह, मेरे विलेन आ गए, प्यारे विलेन। हर बार गोल्डन गियर में आके बजाते हैं। आ जाओ, तुम्हारा वेट है भाई, आ जाओ। पर संडे भी तो स्मार्ट है। He is smart. Sorry, he is smart. Padal, I agree, but not that smart as Black Swan, right? Black Swan is way smarter, or way cool, or way stronger than Sunday, Monday, Tuesday. The IPC will be conducting special operations within the hotel. अच्छा? Please follow the staff in charge of evacuation to the designated safe zones, or compulsory measures will be enforced. नहीं किया तो मारेगा मेरे को? I'll request a beating for you lot. You've been told not to drink during work hours. Take him back to the hotel room. ये तो पैसे। We'll organize a meeting later to properly go over how this incident report should be written. Miss Topaz? Miss Topaz? I never thought I'd run into you on Penacony. Yeah, same here. Long time no see, Astral Express crew. Eventurine has told me a lot about your happenings. भाई पर ब्लैक स्वॉन ने उसका काम किया है भाई, वो मेमो की पर है, कुछ ने कुछ आगे का सोच के ही किया रहेगा बादल, अगर काम किया भी होगा तो। Do as I ask and try to avoid any conflicts with the family.
Report to me before taking any action. Yes. All right. As you see, the IPC isn't very popular here on Penacony. क्या यार, काश मेरे पास भी टॉपैस होती. The former frontier prison has turned around and cuffed its shackles on the IPC staff now. Only Aventurine, who really Chad, is allowed to attend the banquet. Non-garage like us. We can only क्या बकवास है भाई. क्या भाई. to even enter dreams. No wonder Aventurine's scrambling to partner up with someone. Ranko है, हमें को मर गई. Prince, in the dreamscape. अपना 30,000 का मोबाइल ले, टेरेस पे जाओ, ऊपर से पटक दे. You're all helping to investigate some. समझ रहा क्या बोल रहा हूँ? अभी जाके कर. 10 मिनट के अंदर. मुझे एक फोटो भेज देना डिस्कॉर्ड पे. The IPC always treats its partners well. Thank you, Miss Topaz. We're on our way to the Hounds to verify some intel. Perhaps you've had dealings with them? Yep. They're tailing us right now. Why not go and talk to them? It'll take the spotlight off me. Being constantly stared at is really uncomfortable. ओह, एक सेकंड. अब मुझे क्या ये स्विच करने का ऑप्शन मिला है क्या? हाँ कर लेके नहीं वो बस पीओवी है, वो पीओवी है मतलब. अच्छा तरीके से तू स्विच करता है तो वो उससे कुछ नहीं होगा. नहीं अभी तक मिला तो नहीं वैसे. We're carrying out our captain's orders. What do you want? We made a mistake last time, and we're working hard to rectify it now. We don't have time for anything else. 30 नहीं 40. Surveilling the IPC executive. अरे परचेस करने के बाद उसका ब्रांड वैल्यू कम हो जाता है भाई. Every hotel during her time on Penacony. We've got the right one this time. So that's it. They were the pair who were after Firefly at the time. हाँ ना बादल, बिल्कुल सही बोला. बाजू में अभी ये चीज बाजू में रह के बोलते हैं ना, टपली मार जाए. रैंको एक्रोन मर गई, काफका भी मर गई, मेन कैरेक्टर मर गए, सब मर गए. तो तू क्यों जिंदा है? तू भी गायब हो जा, अंडरग्राउंड हो जा, दिखना नहीं कभी. 20 साल तक दिखना नहीं भाई इधर. गायब हो जा तू भी. तो मारने को था 20 साल. मारना. The security officer instructed everyone to shut their traps before he returned from Dream's Edge. What murder? You'd better stop spouting nonsense. हैं? Nonsense? Firefly मर गई और तेरे को nonsense लगता? एक दूंगा उठा के. You idiots! कुछ नहीं पता इनको. They did at least tell us that the captain is at Dream's Edge. इन idiots को कुछ नहीं पता. Security officer then. It's probably Gallagher, the one he mentioned, right? भाग यहाँ से. भाग, भाग, भाग. How does it feel to be in business with Aventurine? How do you? I bet you're not used to it. Nah. Just his style. All or nothing is his mantra. This is He's always mantra. cozying up to his clients while egging them on to undertake some dangerous assignment with him. But everyone has their merits, so I won't comment further. But Aventurine's luck has always been good. He's always closed all his cases without a hitch and basically never lost a gamble. Which is why, on the issue of retaking Penacony, FBI open up Prince ही मर्डरर है. अरे उठा के लेके जाओ. Firefly, Robin दोनों सेम कैसे बोल रहे हो यार? पता नहीं यार. As for the two cases, apologies, but I don't have much info on them either. All I can do is ask you to 10 मिनट में अपना मेकअप चेंज कर लेते क्या ये लोग? मेकअप का तो ठीक है, अपने बाल कैसे चेंज कर लेते?
ओके यहाँ पे जाना है ना अपने को अभी। ये कौन सी जगह है? चलो जो भी जगह जाएंगे। Such tight security. I bet they're stumped by the case as well. Gallagher. Apologies. The Bloodhound family is running an investigation up ahead. No unauthorized personnel allowed. Unauthorized? Hold on a minute. I think I've seen you before. The gray-haired one. How much trouble have you stirred up exactly on Penacony? Very much. Not possible. It was you the last time, yelling about some clockwork friendship while beating me up with that silver-haired girl. Silver-haired girl, yeah. I'm not letting you get by this time. Please leave, or I'll have to get on my knees and beg you. What kind of heinous crime have you committed now? Hold on, sir. We have documents authorized by the family that would aid your investigation. If it wouldn't trouble you, could we see this Mr. Gallagher? Who exactly is this Gallagher you keep talking about? अबे तेरे बाजू में है। People mentioning this name. He didn't send you all here? It was the security officer who dispatched us. That's all I can divulge. क्या ही चलता है यार पता नहीं। He'll do. He's the one we've been looking for. Sorry, no can do. The boss said that since it's a matter of the family's reputation, no one's allowed through. Everyone, please leave. We're really sorry for troubling you. Let's think of another way. Another way. That's it. Didn't they say something about that? What was it? Clockwork? Can you perform it again? That. Rocky Magic? Please. ये जाने दो पर। Sorry, everyone. Active clockwork. I'm angry, happy. Let me. Whoa! Time to clock out. And. This clockwork trick of yours. It's kinda dangerous. At least he won't be getting in our way again. Let's go find that Gallagher and ask him the intricacies of the case. I was wondering what all the commotion was. Huh. Oh, it's you guys. भाई ये तो वुल्वरिन है HSR का। Here, what can I do for you? Hello, Mr. Gallagher, sir. Gallagher, sir. It sounds like you were expecting हमें को का us. respect देखो यार। Miss Himako, you're too polite. हाँ There's देखा। no need to call me sir. अरे Mr. Gallagher. गैलागर के बोलने से पहले मैंने बोल my दिया। name. हमें को कितना पोलाइट है। Of course I do. You folks are from the legendary Astral Express and honorable guests of the Watchmaker. I had an encounter with this gentleman in the golden hour. I remember that little silver-haired girl was there too. मुझे तो 2.2 का अपडेट का इंतजार है। भाई अब जो आया पहले अब इसमें मजे करो। अब 2.2 जब आएगा आएगा। This is also the reason why we've come to visit you, Mr. Gallagher. The Express can't just overlook the death of that child. So we've decided to help the family get to the bottom of it, in the hopes of getting justice. मुझे पता है तुमको क्यों इंतजार है रॉबिन के लिए। मुझे पता है भाई, सब्र करो, मिलेगा, मिलेगी। जब आएगी सबको मिलेगी। No worries. What's wrong with the family? It's nothing. On Penacony, everyone loves the family. No matter how much one resists the beautiful dream, when the time comes, Amico is amico. No one can take her place. Definitely, bhai. Number one. Just idiots, little kids, and inebriated fools. Mr. Gallagher seems to be getting at something.
Well, you got it wrong. I'm not. You want to discuss the case? Sure. Come with me. This is not a good place to talk. Let's go elsewhere. हर बार वाइफो रीजन नहीं होती है ए वेल डन एक्रोन दोनों का चाय कॉफी हो गया भाई 4-4 कप कॉफी मंगाए थे ये लोग ने बताओ The family itself is a huge, perfect building. भाई इधर वेल तो अलग ही डेट में घूम रहा है यार एक्रोन के साथ Each member of the family sees themselves as a piece of the divine puzzle, revolving around a singular core and a shared ideal. Under their command, they loyally fulfill their roles, offering themselves while also receiving sustenance in return. Interesting analogy. Perhaps that's why Penacony's beautiful dream has persisted for so long. Finally, Weld ki waiting. The human body has its limits, and so does the divine's. That doesn't sound like the kind of comment. भाई दोनों का पर्सनालिटी है ना सच में बोलूं ना एकदम सिमिलर लग रहा है मुझे एकदम सीरियसनेस एकदम सीरियसनेस है देखो दोनों को देखो Why do you say that, Miss Acheron? The beautiful dream is crumbling. But not because of a particular eon, a particular faction, or a दोनों का बात करने का देखोगे ना तरीका एकदम सीरियस है भाई inevitability of human nature. परफेक्ट मैच है गाइस The family refuses to acknowledge this, and it has ultimately टीम के लिए बोल रहा हूँ कुछ और मत समझना catalyst. As people immerse their souls in the dreamscape, where consequences and pain cease to exist, and only ease and pleasure prevail, they draw closer and closer to necrosis. Regardless of the perceived bliss, death looms as they never. ये गाड़ी गाइस बुक होने वाला है वेल्ट के लिए. This necrosis will diffuse and spread. One piece of the puzzle's mutation will eventually cause the entire building to shake. बच्चा भैया बच्चा कुछ ज्यादा ही उठा लोगे गाड़ी लेके अरे कंट्रोल कर भाई. Crumble. In the end, the dreams that people built in the name of freedom became the cage that imprisoned them. I'm sure you've भाई दोनों का पास भी ट्रेजिक है इसलिए. हाँ वही. Willing to share your findings with me? Of course. That's if I remember. Sharing चल रहा है इन लोग का पास्ट. Weld also lost many things and Acheron too. 50-50 हार गया. Don't mind me. It's just a habit. भाई यार ये सुन के ना सुबह से मेरे क्या बोलूं अभी. Forgetful. It's only when this sword is unsheathed that those hazy memories start to become clearer. Take your time. यूकिनो मेरे भाई किधर गायब हो गया भाई मुझे तो लगा गायब ही हो गया तू. सॉरी तेरा शायद एग्जाम चल रहा था ना तू शायद बीच में बोला था मेरे को. वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो. कैसा है भाई? आई थिंक 2 हफ्ता हो गया रहेगा भाई काफी टाइम के बाद आ रहा है. लाइट कौन पे? अरे बादल भाई नीलम को कैरेक्टर ही नहीं मिला. लाइट कौन पे बोल रहे हो तुम? और यूकिनो एक्रोन पुल हो गया या नहीं? आई गेस हो ही गया रहेगा वैसे तो. हारने पे एक्रोन मिली ब्रोनिया चाहिए था. हारने पे एक्रोन मिली ब्रोनिया चाहिए था. व्हाट? जस्ट गॉट E0S1 एक्रोन. कांग्रेट्स यूकिनो. एग्जाम चल रहा है क्या यूकिनो तेरा? काफी टाइम के बाद आया भाई. आई थिंक 2 वीक तो हो गया रहेगा यार. The moment of daybreak. I've heard that's where the Congrats, dawn factory, which processes the foundation of the dreamscape, is located.
पोस्ट तो किया Behind the स्क्रीनशॉट तूने dreamscape song and dance stand many imagination. अरे वो बादल उसने फिर नीचे लिखा था वो Workers उसका create नहीं all है kinds of किसी whimsical और का works day in and day out in their अप्रैल dreams. फुल बना रहा They है मार्च return के to महीने में reality and sleep on a narrow bed in a room. A far cry from luxury. They say it will suffice. Experiencing the bizarre and उसे dreamscape is the ब्रोनेक best चाहिए था पर reward. एक्रोन मिल गया There I encountered a young woman. हाँ तो अच्छी बात है ना एक्रोन मिल गया तो भाई इसमें अभी दुख की क्या बात है लोग 50-50 हार रहे हैं और बंदा जीत गया तो अच्छा है ना one day move to the golden hour. इट्स ओवर And see the magnificent garments चलो she अच्छी बात है woven with her own hands. For certain reasons, her wish was. भाई यूकिनो काफी सारे कंटेंट डाले मैंने But I managed to. HSR वीडियोस में देख लेना कभी टाइम मिले तो मजा आ जाएगा और मैंने अभी एक डैमेज वाला भी डाला वो तो भाई देख ही लेना भाई 1 बिलियन डैमेज वाला Yes. It is a fortress-like financial city. सो वो तो भाई सबसे ज्यादा एपिक था पूरा मजा आ गया था इतना टाइम लगा ना ग्रीन के लिए बट चलो हो गया The greatest wish of the local Pepeshi people is for their future generations. 12 का बोर्ड था गया हाँ सबका बोर्ड एग्जाम या किसी का टेस्ट ऐसा है वही चल रहा है सबका तो I could only stand at the भाई इनका आज ही सारा डिस्कशन हो जाएगा क्या people hurrying like the wind through the jungle of steel, only to deposit the alfalfa credits that they'd earned into the bank's vault. I don't know if they would open the vault's door, but before I left, I witnessed a well-dressed Pepeshi person plummet from the sky, while those around him continued on their way, unfazed. I hear the blue hour is very romantic. अच्छा Do you have any tales to share? Very romantic जाओ पिक्चर देखना फिर Perhaps Mr. Yang has heard. There is a large boat called the Eventide anchored along the Sea of Dreams, where soft music and dancing. I ran into a wizened lady there. She was at the dock, waiting for her long-departed lover to return. College के exam waiting for countless hours within time that stood still. In the humid sea breeze, she spoke of her own youth. Like many who desired wealth and love, they came to Penacony to pursue their dreams. Alas, her lover's consciousness was lost in the dark depths of the Sea of Dreams. Finally, she suggested we continue. और यूकिनो 2.1 का अपडेट कैसा लगा तुमको? I agreed and boarded the boat with her. But she never said anything. Her eyes absent-mindedly gazing at the horizon for what seemed like forever. Finally, we retreated to the beach. रंको मैं लिटरली 3 से 4 घंटे सोना क्या और सोना और खेला अच्छे से स्टोरी तब जाके अवेंटूरियन बॉस फाइट तक पहुंचा भाई मुझे कोई घाई नहीं है कि आज ही मुझे अवेंटूरियन का बॉस फाइट करना है मैं तो आराम से कंप्लीट करूंगा Then you all must have seen. I saw an Intellatron. मजा नहीं आता रे एक ही दिन में भाई पूरा का पूरा स्टोरी कंप्लीट कर लो यार क्या है I participated. This time around there were no successful bids for. बोरिंग लगता है फिर This is what I've seen and heard. Just completed story quest. Nice, congrats. Someone once said to me, Penacony wasn't like this a long time ago. Nor should it be. I've traveled through the reality and dreamscape of the planet of festivities. Watched the tides of night rise and fall when time stopped for people. Where the spirits of the rich and impoverished remain forever fixed on their own scales. This is why I think the collapse of the beautiful dream is inevitable. There might be a way to change everything. Perhaps. मैंने तो 30% स्टोरी कंप्लीट किया हाँ मेरा भी उतना ही जितना आज होगा खेलूंगा बस 11 बजे तक जितना होगा खेलूंगा Miss Acheron, now it's my turn to share a story with you. There was a man from my homeland who,
at a time when the world was grappling with deep, unhealable pain, made a choice. He wove together the dreams of everyone in the world, linking people's dreamscapes, and shouldered this burden himself. From this, he created a giant, a spiritual atom. And since that moment, the giant stood between heaven and earth, becoming the pillar of the world's existence. As a price, those who found it hard to move forward, who could not advance, forever lost their future. मैं अवेंटूरियन के बॉस फाइट पहुंचा हूं in a dream, मेरा devoid कितना of परसेंट बचा disaster and pain, living out their days लूचा की peacefully बात in the man's created कर रहा है utopia. क्या वेल And it is because of the wishes of those people लूचा who की बात wished कर रहा है not क्या to वेल awaken नहीं भाई that यहाँ पे this तो लूचा का तो कोई spiritual मेंशन ही atom नहीं है became unbreakable. And yet, you stand here right now. Which also means that man failed. Because people must always move towards the future. Even if human weaknesses make them pause when they truly cannot move forward, humanity will eventually seek a way to गाइस save मैंने आज itself. आफ्टरनून में एक वीडियो डाला था यार तो भाई किसी ने अगर नहीं देखा है तो देख लेना A ठीक है failure. Like everyone in that world, he etched the possibilities of human nature into his heart. He was the sun chaser of legend, soaring towards the sky and embracing his final victory with his fall. He ascended to heights uncharted, only to come face to face with the sun. लूचा एंड वेल्डर फ्रेंड्स उसी की बात कर रहा है लग रहा है His wings would melt because of it, only for him to fall into the sea. And after that, countless others would surpass him, soaring to even greater heights. A fitting metaphor for the Nameless's trailblazing spirit. एक्रोन के दो उंगली में इसने क्या चेंज जैसा डाला है भाई एकदम डेंजर लग रही है भाई The universe has innumerable similar yet different worlds. In these worlds, there are innumerable people who look alike yet don't. I too have embarked on journeys, encountering old friends with familiar faces on different worlds, witnessing their destinies follow paths similar to mine. So I will tell you, even if not completely similar, the story you just told, it overlaps with my past. And within that abyssal dream, I ended that man's life. Alone. Acheron का रेड फॉर्म ज़्यादा बेटर लगता है. Nor will my home be as fortunate as your world. I am sorry. It's fine. I don't mind, so long as I can alleviate your suspicions. There's something I still wish to know, Miss Acheron. Under that representation of the hunt, exactly what sort of power is it that has motivated your solitary journey thus far? Mr. Yang, before answering that question, I wish to continue the previous topic. I like your analogy very much. Indeed, birds are born to fly. But in a distant past, their ancestors could only gaze at the sky in envy. They saw that faraway ray of light from above the heavens. Oh यार वर्ल्ड का व्यू गाइस क्या दिख रहा है यार. And so, time and time again, generation after generation, the birds spread their wings and took to the sky, attempting to. चलो मैं जाता हूँ बाय रैंको बाय. बाय बादल बाय बाय. Good night. कितना हो गया वैसे? हाँ good night. What if the last bird finally soars into the sky, only to realize that the end of the light is not the sun, but darkness? Look at the eyes of Acheron, bro. Exactly. It's so. Do we even walk क्या towards बोलूं the यार? light?
और यहाँ पे ब्लैक स्वन अभी तक फोन की घंटी सुन रही है. वाओ. Long time no see. Having fun on Penacony? Acheron? Acheron? This voice. It's not Constance. Could it be her companion? Though I don't know exactly what you are, or what you're up to. Pet got to drink with Acheron. It should have been me. Until then, you best find a casket store on Penacony and ask the owner to reserve a good quality casket for you, imposter. You can बात करता हूँ HSR वाले से. Don't worry. I see. She gave my whereabouts to someone who's tracking Acheron too. Who are you? Huh? Did I make a mistake? Who the heck are you? I'm the Garden of Recollections memo keeper. Not bad. This is the kind of tough challenge I like. You that imposter's bodyguard? Never mind. It's fine. I'll leave a round for you. ये कौन है भाई? Keep that forehead clean and wait for me. I don't know what you're talking about, but you know Acheron, the Galaxy Ranger, yes? I have something to ask you. Are you asking me to write your will? Sure. Go ahead. ये कौन है भाई? Not quite. I only want to ask, how exactly did she become a Galaxy Ranger? Wow. She's clearly not a path strider of the hunt, but you are, aren't you? Tell me, what's Acheron's deal? Sure. Heck, never thought I'd come across an ally. What a stroke of luck. Well. I'll be on Penacony soon. Oh, Memo okay. keeper. Go buy a bottle of his Donna's White Oak and warm it up. And I'll raise a glass to you. That lady's passed. Well, nobody knows. But if all you want is a simple answer, sure. You best get a chair and take a seat. That woman, named Acheron, is an emanator who should not exist. Emanator? Yeah. What the frick, bro? You look pale. Or is that also part of your act? I didn't think you'd have the nerve to show yourself. I thought this was exactly what you wanted. After all, I faithfully fulfilled my duties as you instructed. Just tell me if you can't hold on any longer. Is real Galaxy Link. The genius of the Council of Moderators wants to be my undertaker now. So why Acheron is calling herself a Galaxy Ranger, bro? And I'm pretty sure the... Great. अब ये जो भी स्टोरी क्वेस्ट है 2.2 में कंटिन्यू होगा. I know that. बहुत बढ़िया. Oh, you've got a lot of nerve. How exactly do you plan on completing your task while your hands are tied by the harmony? Well, my conversation with Sunday convinced me that there's a traitor in the family, and that they hold the secrets of Penacony. So, I took the opportunity to set everything in motion. I even managed to recover the gift money. Things haven't gone this smoothly since I walked through the doors of the Reverie. Now I'm only one step away from victory. Let's just wait and see. Sounds like a very elaborate way of saying that you failed. That's all I can say. Have you forgotten, Doctor? You go. Do what you must. I look forward to the sight of the IPC fleet surrounding Penacony.
You've achieved what you desired, haven't you? That's true, but what's your plan? Did you conceal an orbital support beacon in that gift money bag? Well, who knows? Maybe that's why I'm handing out cash even when I'm about to bite the dust. You are indeed a gambler. An insane one at that. Well, maybe I am. Who knows? Fine. Here, take this. Open it when you're on your last legs. You'll thank me. What's this? Medical advice? Medical advice. Gayab. You catch on pretty fast, Doctor. Asking me to solve a case without giving a single clue. How typical of you, you wing-headed scoundrel. Wing-headed scoundrel. But the way you're all on edge about that stowaway. It's just as I guessed it would be. I think he was Bootil. Let the rain of wealth from the IPC fall evenly Bootil. on everyone. Possible, but पता नहीं. ये क्या दिया इसने? भाई मेरे टीम में ये चेंज कैसे हो रहा है बार बार? एक सेकंड, जाना किधर है मुझे? Would you be willing to support my performance? And keep the song of beauty alive in the cosmos? Nah, not interested. Fabulous! But why would you give such a wonderful gift to a random stranger like me? Well, I don't know. You see, I can't bear to see anyone in this sweet dream suffering from Ranko, अभी feel use करूँगा तो चलेगा. भाई मैं बोलूँ तो wait कर, because event आ रहा है ना 300% drop rate का. Please, feel free तब to use come by कर. and indulge in my singing. Sure thing. Event आएगा. By the way, तब use करेगा तो ज़्यादा profit होगा भाई. Do you know anything interesting है ना? about death? या अभी अगर तेरे को use करना है तो तेरी मर्जी. That's a pretty scary topic, and it doesn't really match the mood of this sweet dream. Oh, you see, Lol. I'm a tabloid reporter collecting ghost stories in Penacony. As you know, कॉफी के लिए पूछता है और ये डेड के लिए पूछ रहा more है. attention वाह they भाई. get. Maybe you could help me out. पर अवेंट्यूरिन नहीं मर रहा है. If you're up for some gossip, it was like they were in some sort of coma. Thank you. This ठीक है भाई. unexplained coma. क्या बताऊँ मैं? That's actually अब what मेरा अभी happens तक to उससे your फाइट body हो if नहीं you're रहा है तो planning मैं to ऐसा कुछ dream. बता भी नहीं सकता. But unfortunately, I can feel something inside my head. इतना उल्टी करता रहता भाई. भाई ये बंदा 2.1 से उल्टी किया जा रहा है. सॉरी 2.0 से. You wait. I get it now. This is some sort of prank show, right? You must have some cameras set up around here to film yourself doing good deeds, right? You youngsters are always After Aventurin story, I am definitely pulling for him. A truly great show never comes easy. उसने 27 HP क्लच मार दिया. But before that, I see. Death. Not the effects were awful. Is that? Yeah. What else can you expect? अब क्या बोलूं यार? कर ले फार्म अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो They फिर. even call this junk groundbreaking art. Can you believe it? What a joke. Well, I'll leave you be. A monster covered in eyes.
That sounds like the memory zone meme. But buildings and lights... I don't think those have anything to do with death. Oh, that whole dream bubble was probably created using rumors and gossip. The disturbing voice in my head. अविन ड्यूरिन आइसक्रीम खाएगा चलो. Take care, my friend. 40 fuel है. If you ever find yourself in danger, 100 reserve trailblaze power है. Always. You don't look. That won't be necessary. Your choice, bro. Well, stowaways. All right. What was I? Doesn't everyone have to go through so much? Sip of liquor. इनसे तो फटाफट चैट करके खत्म करना है भाई. Keep कर लेता हूँ फटाफट. Yeah. Not enough credits left? You want to talk to me? Sure, but nothing too sensitive, okay? How did your boss talk? Well, I thought about it. Guess she's... Wait, is this? Yes, it... Is this for real? No, it's not much. He's an intel... Hey. The Devil of Soulglad, Dangers in the Dream, and Nightmare. Okay, ये final है शायद. Remember what I said. 100 नहीं 1000. You Sigonians are better off hiding in the sewers. Acheron पे use कर दो सारा. भाई तेरे को लग रहा है तो कर ले भाई. Snooping around and sticking your nose everywhere. क्या बोलूँ मैं? Is the smell of death so enticing? Hey, my Sparkle. fine fellow? Here comes the cutie Sparkle. Masked fool. I should have guessed it. You're the imposter who appeared on TV after Robin's death, right? I heard you got caught by the family. I gave you a clear clue. Befriend a mute. Simple and straightforward, you know? And what did you do? You messed it up and ended up as their prisoner. I told you to make friends with a mute, not become one yourself. You really let me down. What do you mean? You know better than I do. Who watched the little songbird that couldn't sing perish right before their eyes? You did, Blondie. No, I mean... What did you mean by becoming one myself? Well, it means you'll soon end up like her, unable to speak ever again. ओए, ये Sparkle नहीं है शायद. But it's a good thing if you ask me, because... Because I'm getting closer to the truth, right? Oh? Why else do you think I'm handing out cheap trinkets all over the streets, fool? All part of the act. Fool's bait. The more pathetic I seem, the more likely you'll come sniffing around. So, now that I've drawn you out, will you reward Sparkle me बहुत with a खतरनाक pizza weapon for देगी. my अबे efforts? नीलाभ चुप हो जा बे. Spoiler वाले. Why should I help you? Don't you want to see Penacony descend into chaos? Well, I can make that भाग दो यहाँ से. happen. जाके farm कर, relics I farm just कर. need an जा. answer to one question. Back then, when you asked me to find a mute, did you really mean Robin? ये कौवा And what इधर if भी I है. say no?
ये कौवा इधर भी है Then I'll thank भाई you. Oh, the word no has never sounded so pleasing. Well done. I admit I underestimated you, but what difference would it make? Let me tell you something. There were 2 mutes, but one is dead now, and the other, though he's still in Penacony, I'm afraid you'll never find him again. 2 mutes? Now I'm completely sure that I was on the right track from the beginning and never strayed, fool. Right now, there are only 2 things missing from my भाई grasp. कोई तो जिंदा है भाई The meaning behind the truth and the means to expose it. How impressive. That's quite a 1 मिनट fancy में way ही of तो saying आने वाला I है haven't learned इसलिए बता anything दिया so far. Not exactly. Spoilers. I've gathered enough clues to prove its existence. And that's enough for me. Spoilers. As for the answers to my questions, I'll find them within 16 हाँ कुछ 1 मिनट में देने वाले हैं पता नहीं weapon Oh, really? Only 16 system hours? Well, let me lend you a hand. Here you go. This is my precious, mutually assured मैं तो अभी भी destruction कंफ्यूज हो button. रहा हूँ भाई And if you're 2 really म्यूट्स so बोला desperate इसने for the IPC कोई तो to जिंदा take होगा over Penacony, blowing up the chessboard isn't a bad idea. Start from scratch. That's where the IPC excels, right? Just press the button when you're at your wit's end. And of course, रुक जा नहीं लब यार गेम का साउंड आ रहा है रुक जा अभी इन लोग का बातचीत खत्म हो जाए फिर बोल रहा हूँ deadly button, huh? Well, I guess the family didn't take your threat seriously at all. Otherwise, how on earth did you manage to bring it in here? Story complete kari. I have my No idea कब complete हो गया. Venture in cost पर अटक गया. Well, I'm afraid I'll have to decline your offer. Who knows if your little gadget will actually work. By the way, I have no plans to search for the other friend you speak of. अरे यार guys भाई रुक जाओ यार I'll handle the rest myself. I'll orchestrate a grand finale. Trust her and accept her gift. Okay. And at the climax, the walls will crumble. हाँ उसको बता दे भाई उसको गाइड दे दे भाई नहीं मार पा रहा speak will find their voices again. When that time comes, go ahead, press the button, light up the sky with a magnificent fireworks display for me. भाई ये क्यों ऐसा है मैं तो आंख बंद करके ट्रस्ट कर लूंगा पागल पे You're still talking big, but sure, if that happens, I'll stay true to my word. Just don't let me down now, okay? So, number 35. You're back. Like your new lucky charm? Can a commodity code really be considered a lucky charm? Silence! I didn't give you permission to speak, you Sigonian hound. Sigonian hound? What the meaning of this, bro? The guys in black didn't say much, so I've no idea what you did to save your skin in that massacre back in the day. But I figured you must have had good luck, so I bought you. From now on, you and your good luck are my assets. Are we clear? Your first task is simple. In addition to you, I've purchased 34 other slaves. Go and play a game with them. You came out alive after 2 days. It proves that you are the real deal. You're insane.
Testing out if you're a good product. भाई एवेंट्यूरन को प्रोडक्ट बना Aren't दिया. you worried that the money you spent on me will go to waste? I've got stacks on stacks, Blondie. The slave market is never short of self-righteous brats like you. But you look good, and that's why many customers are betting their fortunes on a scrawny brat like you. So go along now and don't let your master down. How much did you spend? What? My price. How much did you pay for me? Huh. You really want to know? Well, it was 60 tanba. No more, no less. I'll take my chances. 30 tanba. If I come back alive, you'll give me 30 tanba. Deal? Are you trying to strike a bet with me? Oh, you've got some guts. ये है कौन जिससे बात कर रहा है भाई? Yeah, Indifferent sorry, male. but that won't do. Don't forget your place, slave. You're not qualified to be at the table. You're just a chip. A life thrown away in someone else's hands. Either you come back with more chips for your master, or you never come back. It's all or nothing. Don't embarrass me, my lucky hound. What brings you here, Gallagher? Some friends from the old days. Do you have a moment to spare, Siobhan? Oh, I have the whole day to spare. Ladies and gentlemen, welcome to Dream Jolt Hostelry. This bar offers a wide variety of drinks, but we draw the line at Soul Glad. Why settle for ordinary when you can experience extraordinary? We're dedicated to serving up nothing but pure joy and laughter. What would you like to drink? I'll whip it up for you. Oh, look! A lady as cool as Serval! Who's Serval? Will you, introduce me to her? Huh? Oops. She's heard us. Just spare them, my esteemed bartender. I'll take over the bar today. I'm getting up there in age, and I need some practice before I forget the skills that used to put food on my table. Where did you stash the ingredients? They're all under the counter. Since our guests have traveled from afar, shouldn't you whip up some special drinks? That's exactly what I had in mind. Hey, my friends, do me a favor. Go around the bar and bring me any ingredients you fancy. The discussion might take quite some time, so I'll prepare some customized, non-alcoholic drinks for you. In the bar? But aren't all the ingredients right there on the counter? Why, we're in a dream, my lovely lady. You can help yourself to anything if you wish for it. Comfort, hunger, confusion, or even boredom. It's all within reach, right at your fingertips. Oh, did you hear that? She just called me my lovely lady. Even in reality, mixing drinks is more than just throwing ingredients together. A bartender needs to capture the bar's atmosphere, master technique, and spin a tale of mystery and anticipation. Only then can a perfect drink crafted with a customer's life story be created. In other words, what you get from your drink is down to luck, so don't overthink it. Indecisiveness has no place when it comes to enjoyment. I like ingredients for the drinks. What should we exchange?
happiness belongs. ये क्या मिला? Hey. A few days ago? Nah. That being. You'll have to ask her yourself. हमें को यहाँ पे बैठी है, वाह, काम हमको करवा रहे, सही है। चलो भाई, अच्छा और किधर है? एक सेकंड, अच्छा इधर ही ढूंढना है मुझे, इसी सर्कल पे ढूंढना है मुझे, ये साइड आई गेस, या Check out this half an drinking. Did you find the bottle? That's quite a stash. Not sure if it's enough. Stay out of my way. Haven't I made myself clear enough, Miss Amiki? The Dream Jolt hostelry only welcomes guests who want to enjoy a drink to their heart's content. I'm sorry, but I'm not interested in your proposal. But you have the talent. You'll attract a huge audience. You're destined for the Iris stage, not for this rundown shack. Come with me. We'll become the talk of Penacony, a shining light into every corner of the dreamscape. Please, Siobhan, I really need you. Nah, not interested. As you see, I'm entertaining my guests. Don't make me repeat myself. Fine. If you don't come along, I'll just sit here and not go anywhere else. Give me a sparkling drink. Sweet. With extra ice. पूरा फ्रीज लेके चलेगा? One moment. What's her deal? We can't discuss the case with other people hanging around the bar. Hey, can you do that clockwork trick of yours again? Yeah, I'm counting on you. Clockwork trick. You're one of Siobhan's guests. I just don't get. I've seen it. The crowd is. I've seen. Hey, lol. She's still not leaving. Maybe I'll have to try again. I just don't get why she. हैप्पी से नहीं होगा, सैड. It's ridiculous. I'm too timid. You don't know. I know. सैड बनाने से सैड हो जाए. She's still not leaving. I just don't get. अब तो भाई एक ही ऑप्शन है, एंग्री. Those darn Iris jerks. Well, maybe here's the payment for the drink. Amiki has left? When you're ready, go to Gal. That being said, mix it, so go ahead. Nice work. You found some interesting ingredients there. Now, take your pick. Each drink has its own unique flavor, and the base ingredient sets the tone for the initial taste and the lingering aftertaste. So, which one would you like to use as the base? You won't find a sweeter drink anywhere in Penacony. Now that you've chosen... अरे यार. That being said, mixing, so go ahead. Nice work. You found some in... Each drink has its own... इसको ले ले चल. The original formula is said to be... Now that you've chosen the base, it's time...
Bright future. I'll never forget the flavor that danced on my tongue. Mikhail. Almost there. Let's pick a decoration. Concentric circle. Well, it's done. Here's to you, the nameless, to the dead and the dying. So are you... Oh, the flavors. They're way more sophisticated than Soul Glad. गालागर ने भाई सबको ड्रिंक पिला दिया एकदम customized drink. Especially with the adjunct. I'm not entirely sure what it all means. Amico Impress, R7 Impress, Trailblazer. Well, if you're expecting a profound answer, I'm afraid I'll disappoint you. The imagery it implies is pretty straightforward. It's just a glimpse of what this dream truly tastes like. Nothing more. Does this true taste have anything to do with that, Mikhail? Yeah, that name does sound familiar. When you got knocked out by that masked fool girl, I think I heard someone calling that name. I was right about you. You guys seem to know quite a bit. And now there's no reason to hide anything from you anymore. Let's dig deeper into the case. And of course, I'll tell you a story about Mikhail. All right, let's start with what we know based on the clues the family has. It seems that Firefly isn't a local or an invited guest. In other words, she's a stowaway. She managed to fool me at first. My age must be getting the best of me. But here on the planet of festivities, stowaways are a common sight. You're bound to run into one sooner or later. After the incident, the hounds wasted no time searching for that girl in both the dreamscape and reality. But here's the thing. We only received bad news, and the trickiest kind at that. She simply vanished, leaving no trace in the dreamscape or reality, as if she had never come to Penacony at all. Huh? Does ये तो that mean... really suspicious है यार. That's impossible. The problem now is not that she's dead, but that it's as if she had never existed in the first place. Let me be frank. This case, actually, is unlike anything the Bloodhound family has dealt with before. Dealt with before? So, death does happen in Penacony, if I understand correctly. You've witnessed it, so there's no need to hide. Even the shiniest city has its dark side. We're all adults here. Surely I don't need to explain too much to you. Confronting the family based on that alone would be naive. Death may occur in sweet dreams. So what? Such events are highly unlikely and only affect a tiny number of people. If you really want to delve deeper into this case, you need to understand the true problem with the family. Yeah. I guess it's time to tell the story of that Mikhail. You're very perceptive. The Astral Express has received that music box too, right? Do you know the secrets it holds? There's a message. Witness the impossible in the realm of dreams. Find the legacy of the Watchmaker, father of Penacony, and thus the answer to the question, why does life slumber? That's the exact wording. Hey, why are you laughing? Wait, did you write it? It's quite poetic. No, but I'm the officer in charge of this case, so how could I not know? I'm sure you must have noticed that this message didn't come from the family. You might have even guessed that the relationship between the family and the Watchmaker isn't as close as it seems. That's just our speculation. Really suspicious. Actually, yeah, bro. It's hard to believe that भैया अभी तक समझ में नहीं आ रहा ये क्या है क्या Firefly क्या है? Now I can assure you that your speculation is absolutely correct. The family has considered the Watchmaker an enemy for a long time, but the hounds haven't been able to track him down, as he seems to be living only in the
characters and stories he created. Let me ask you a question. Have you ever wondered why the family allowed the watchmaker to send out such a ridiculous message to the outside world, inviting you here and causing chaos? बात तो सही है. So you want to seize this opportunity to expose the watchmaker? Well, now you understand why the Oak family, because the watchmaker is not the legend of the land of the dreams at all. He's the most shameful stain in the history of Penacony, and he's the root cause of all the anomalies in the dreamscape. But what does this have to do with Mikhail? You don't get it? Well, I mean, Mikhail, the betrayer of the family, he's the watchmaker. Oh, भाई. What the? Sometime later. अब ये कहाँ पे? Here we are, Clock Studios theme park, most popular entertainment center in Penacony. Wait, aren't we supposed to be discussing the watchmaker? I would have expected you to take us to maybe a library or an archive room of sorts. But an amusement park? The culture of a city reflects its history in the most authentic way. To you, it's a fun place. But to me, it's a prison for the planet's past. You know that Penacony used to be the IPC's prison planet, right? All the prisoners were brought here, helping the Garden of Recollection salvage the leaking memoria from the macro void. The prolonged exposure to high concentrations of memoria caused a unique phenomenon. The dreams of countless prisoners intersected and overlapped, and people started meeting each other in their dreams, living lives that were almost identical to reality. But everything has a price, and sweet dreams are no exception. In the end, the dream world was unable to alleviate the suffering of prisoners in reality. One of the prisoners broke free from the IPC shackles and fought for freedom. He is Hanu, the great leader of Dreamville, the great peacemaker, and the faithful companion of the underdogs. History is always written by the winners. However, it's undeniable that Clocky is an animation that draws from Penacony's actual history. These characters not only exist in Dreamville, but also in the distant past. Once you realize this, you'll understand why we're here. Okay. There are so many members of the Bloodhound family around here. They just received a lockdown order, supposedly from Sunday himself. Who know? So many of them. I've never seen anything like this, even when they're tracking down suspects. We don't need to go in. We don't want to draw any unwanted attention inside. We can just talk here. Let's find a quiet spot and continue our conversation. View here is great, right? Yeah. You can see everything from here, including Clocky. If all the characters in the animation are based on characters in reality, then Clocky's counterpart is definitely the watchmaker. भाई इन लोग ने ये स्टोरी को कितना घुमाया है यार. He's Hanu's partner and one of the founders of Dreamville. Does that mean the watchmaker was personally involved in that war and sided with Asdana? It was a monumental war for freedom. Hanunu fought alongside a motley crew of इन लोग ने बहुत घुमाया यार स्टोरी को. Nameless, history fictionologists, mourning actors, omen vanguards, even visitors from beyond the sky. In the end, they emerged victorious. Among them was the person who would eventually be known as the Watchmaker. But if you do the math, doesn't that mean the Watchmaker was around for several centuries? I'm not sure, but Mikhail was already the Watchmaker when I met him, so maybe he inherited the title. How old are you now, Mr. Officer? I'm 13. No way. Not even close. Hanunu freed the frontier prison, but peace still eluded him.
With limited resources, threats from the outside world, and internal conflicts between major prison districts, the future of Osdana was uncertain. It wasn't until the watchmaker approached the family with the idea of turning the prison into the planet of 13 का कैसे हो सकता है? 13 बोला या 30 बोला finally इसने? gained its name and glory. Thus, he became known as the father of Penacony. But didn't you say the watchmaker betrayed the family? And you said you were his companion, so that means you... No. I'm not his companion, but rather one of his many children. But I am indeed a traitor. Not to the family, but to Mikhail. What did you do? I did nothing. And that's the worst betrayal of all. Just like you, I had close companions. We dedicated ourselves to Penacony. But the Oak family. Story is really good. भाई real बोले तो मतलब skip करने का मन नहीं हो रहा पता है? So we left the family. एक-एक चीजें important है. We were branded traitors of the Harmony, even though the true traitors were someone else. While they continue to praise the watchmaker's name in the world, behind closed doors, they condemn him on a pillar of shame. Nevertheless, we wanted to clear his name. We intended to find the real traitor, the one responsible for all this, and restore harmony to Penacony. Yeah, real traitor है कौन पता नहीं. Too much time had passed, and the land of the dreams had become deeply corrupted. After countless fruitless pursuits, I gave up. Like a lost dog. The family accepted me and made me an officer, supposedly as a form of forgiveness. But it was actually a punishment. Since then, I've been completely cut off from my partners and my past. As for Mikhail, I heard he died in obscurity, in a place where no one could find him. That's when I realized that the Penacony I once knew would never return. We're truly sorry for what happened. But this is not the end of the story, right? Apparently, someone has inherited the title of the Watchmaker and has been secretly working against the family all this time. He don't look like it. He said 13, he don't look like it. Yeah, वही तो. ठीक है ना, यहाँ पे स्क्रीन ये ऑफ कर देता हूँ मैं. Unfortunately, after all these years, I have no idea who that person is, or if they're even real. Or just Mikhail's lost soul haunting the dreams. So, do you understand why I'm spilling all this info? Because I believe the girl's death must be connected to the Watchmaker's legacy. And at the end of all these mysteries, we will find the answers we are seeking. If it really is Mikhail's ghost, I want to meet him. If only for the last time. For those who despise me could form a line from here all the way to the entrance of the hotel. Firefly कैसे मरी? किसने मारा? क्यों मारा? Let's just say, there won't be many. I've told you all I know is a sign of gratitude. Thank you for listening to this old dog. Bark and all. Something just happened at the theme park. Now, if you'll excuse me, good luck to all of you. How ironic. What's so different between the stowaways projected by Penacony today and the dream seekers once hailed as pioneers several amber eras ago? Gallagher does have a troubled past, it seems. Yeah, definitely. While Firefly's whereabouts remain a mystery, his stories shed light on our suspicions about the true identity of the Watchmaker, his connection to the family, and the power struggles hidden behind sweet dreams and death.
Exactly. Gallagher suggests that the real traitor is someone else. Probably within the Oak family. That lines up with what we've gathered so far. Firefly got involved अभी in कहाँ this तक mess because पहुँचे? of the legacy. यहाँ And तक now पहुँचे? we're sure that Aventurine's accusations against थीम Acheron पार्क, are amusement park. baseless. You're really into Clocky, huh? He's just a fictional character, not a real person. Speaking of which, that Clocky who only reveals himself to you is quite intriguing. It's a shame we've never met him since then. हाँ, Clocky ना गायब हो Now गया that वो तो. we've confirmed a lot of our suspicions, let's take a moment. मिस्टर यंग को तो भाई फुर्सत क्या है, वो तो गैलेक्सी रेंजर के साथ तो चाय कॉफी स्टोरी में बिजी है. देखो भाई यूकी ने Acheron पोल किया. हाँ यूकिनो ने कर लिया भाई. अब Acheron वाली स्टोरी भाई यहाँ पे. Are your companions worried about you? They're just checking up on me. Let's get in and get out. Seems they've made some progress. Looks like we're about to enter the depths of Dewlight Pavilion. It's been a smooth ride. Almost too smooth for a heavily guarded mansion. Let's see if there's anyone waiting to greet us. Acheron प्लेबल कैरेक्टर में मिल रहा है मुझे. गाइज सरप्राइज और व्हाट यार, पुल कर लो क्या Acheron? नहीं यार, जाने दो. Something feels off. This door is open. Looks like we'll have to investigate ourselves. Just one moment. Byte. I've made myself less noticeable. The crew can explain their presence as authorized. लोचा सिल्वर वुल्फ पेला Acheron परफेक्ट टीम है भाई यूकिनो, नो डाउट भाई. एक नंबर टीम बना है भाई, एक नंबर. सच में बता रहा हूँ. ये चीज तो मैं स्टार्टिंग से वैसे बोलते यार. सिल्वर वुल्फ एंड पेला सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट. सेकंड बेस्ट पेला विथ वेल्ट एंड थर्ड पेला विथ टेम्पो. भाई क्या ही मारा है लोल. मजा आ गया ये भाई. Acheron रियल या ब्रो. The model in the sand pit. It's the golden hour, isn't it? भाई उधर अभी वो ड्रैगन बैठा है, उस ड्रैगन की तो बैंड बजाने वाला हूँ मैं. Are different from the rest. There are two sets of them. Looks like outsiders might have passed through here not long ago. Can you identify the people who left? Well, there's a unique pattern here. Flamboyant, even. And judging by the size, I'd say these were men's shoes. If I'm right, it could be the IPC ambassador, Aventurine. Aventurine. What about the other set? It looks like they were walking side by side as opposed to one behind the other. So the second individual is likely equal in status to Aventurine. The IPC is eager to reclaim Penacony. Hello, so Mayank. their presence here यो is हो गया not पुल unexpected. करके. पूछ रहे हो या बता रहे हो मयंक?
भाई मगर लूचा डिबफ देता है एक्रोन को। या ब्रो जेलॉक्स, लूचा का अल्ट जो रहता है ना वो एनिमीज को डिबफ देता है ब्रो, और प्लस सस्टेन कैरेक्टर है, राइट? ही इज गुड ब्रो, सर ही इज गुड बोल रहा हूँ। नो डाउट लूचा इज बेस्ट सस्टेन फॉर एक्रोन टीम, और बाकी दो डिबफ कैरेक्टर पेला एंड सिल्वर वुल्फ का तो पता ही है। पूछ रहा हूँ मयंक, मैंने तो स्किप किया है ब्रो। आई एम नॉट पुलिंग फॉर एक्रोन बिकॉज आई डोंट नीड। ये मुझे जो मिला ये स्टोरी क्वेस्ट वाला एक्रोन है, ठीक है? मेरे पास एक्रोन नहीं है तो नेवर माइंड, हम जस्ट स्टोरी कंप्लीट कर रहे हैं बस। भाई क्या ही भाई, ब्लास्ट, लिटरली ब्लास्ट है ये, ब्लास्ट। क्या बताओ अभी? Show your courage. Well, there aren't any people in this mansion. अरे यार भाई मेरे पास डिबफ टीम नहीं है। अबे छोड़ जान दे, कोई दिक्कत नहीं है। Still waters of oblivion. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Let me tend your wounds. रैंको भाई पावर क्रीप तो नहीं होगा ना लूचा, वरना अवेंचरिन नेक्स्ट सस्टेन। पावर क्रीप जेलॉक्स, पावर क्रीप कैसे होगा भाई? वो तो सस्टेन कैरेक्टर है। I weep for the departed. अबे 4 लाख का डैमेज चला गया ब्रो, भाई 4 लाख का डैमेज चला गया विदाउट एनी डिबफ कैरेक्टर्स भी। एक्चुअली डिबफ है, डिबफ कुछ तो है यहाँ पे, बट फिर भी जो भी है भाई। जब मैंने ब्रोनिया को यूज किया है अब इसके साथ, और रुइन में का सिर्फ स्किल एक्टिव है। ओके, रुइन में का सिर्फ स्किल एक्टिव है, ब्रोनिया का अटैक एंड क्रिट डैमेज इंक्रीज है। भाई इसमें सिर्फ 4 लाख का डैमेज चला गया ऐसे ही। Dude, seriously? Are you kidding? जेरोक्स देखो जेरोक्स, एक बार ध्यान से सुन लो, हीलर्स प्रिजर्वेशन कैरेक्टर्स कभी पावर क्रिप नहीं होंगे यार, उनका काम सिर्फ हील करना है यार, दैट्स इट। तो डोंट वरी, ओके। Look, it dropped something. Note. Looks like और मयंक instructions क्या from हालचाल Butler for the other servants. बताओ। मयंक भाई अगर आज दोपहर वाला वीडियो नहीं देखा है तो भाई देख लेना मेरे भाई, ठीक है? और लाइक एंड कमेंट कर देना अगर अच्छे लगे तो। The Charmony Festival, perhaps. But no matter what their main priorities are. So you're saying? इवन मयंक काफी सारे वीडियोस है HSR के, तुमने शायद अगर नहीं देखे हैं, देखे होगे तो देख लेना भाई। इट विल बी रियली अप्रिशिएट अगर तुम चेक आउट कर लोगे तो। एक सेकंड, यहाँ पे जाने से पहले ना मुझे इसको लेना। हाँ ये रहा बॉटल यहाँ पे, चल ले लेते। हाँ मुझे जरा है ना टीम चेंज करना पड़ेगा, बट ठीक है ना। ये रोइन में को मैं रिमूव करके ना पेला को डाल देता हूँ, बेटर ऑप्शन होगा। या फिर ब्लैक स्टोन को भी डाल लूँ तो ठीक है, बट पेला को डाल देता हूँ, पेला मेरा ज़्यादा है। और हीलर के बदले को डाल देता हूँ। It's your call. Okay. What kind of dance? Let's go. भाई मगर 4 लाख बिना एनालिटिक कैरेक्टर के जब टेक्निक में 2 चाहिए।
भाई ब्रोनिया है, ब्रोनिया टीम में ब्रोनिया अटैक बफ दे दिए, इवन क्रिट डैमेज, डैमेज बूस्ट। मुझे लगा फाइट होगा भाई, मैं चेस्ट अभी कलेक्ट नहीं करूंगा, सब एक साथ में कलेक्ट करूंगा, सिर्फ आधा रह जाता है मेरा। Robin believed it was because the harmony had been tampered with somehow. But as far as I know, there aren't many entities capable of interfering with the power of paths. अभी तक नहीं हुआ स्टोरी भाई, अब स्टोरी में पूरा स्किप करके नहीं कर रहा हूँ ना यार। अब कोई दूसरा अगर स्किप करके कंप्लीट करेगा तो भाई उसका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा स्टोरी, बिकॉज मुझे सस्पेंस जानना है, ठीक है। The information about Robin, Firefly, and the other victims. I don't see any commonalities among them. Looks like the rumors were right. Hello, Twitch. Welcome back, bro. Does seem to be targeting. He's just surprised that it has resurfaced. Guys, like कर देना यार, किसी ने अगर like नहीं किया तो please. Light cone. Light cone? Securely guarded. It must hold some important memories. According to Robin's interview, ये तो संडे, despite having और ये रॉबिन है शायद, so many grand stages, her favorite performance हाँ, संडे और रॉबिन का है। I wonder how their relationship is now. Growing up brings gains, but also losses. Yeah, time has a way of smoothing things out. The beautiful dream. भाई साहब कितना बड़ा लेटर है। Mr. Sunday has done some serious research on his suspects. This traitor must have been causing trouble for the family for a long time. They all seem to be insiders. सुबह भाई तुम्हारा हो गया। I haven't met any of them. मुझे लगा कि लाइटकॉन फ्री में मिलेगा, बट तो के लिए अरे यार, अरे एक्रोन का 4 स्टार का लाइटकॉन आएगा ना, टेंशन क्यों लेते हो यार। लाइटकॉन तुमको अगर नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 स्टार का एक इवेंट वाला लाइटकॉन आएगा। ओके, शायद इवेंट वाला ही है जहाँ तक मुझे लगता है, सो अच्छा होगा अगर इवेंट वाला ही होगा तो। Neither the Dream Master of Penacony nor this old Oti is happy with Sunday's recent performance. They don't seem to care much about death. Instead, they're more concerned about the Harmony Festival. लाइटकॉन फ्री में। Maybe the other family heads don't think death is a big deal. अगर तुमको वो लाइटकॉन के बारे में जानना है, वो लाइटकॉन क्या प्रोवाइड करता है, तो लाइटकॉन में क्रिट रेट एंड क्रिट डैमेज है। That's all for now. Nothing more noteworthy. Before coming here, I had all sorts of scenarios in my head about dealing with the family. I did not expect any. 2.3 में आने वाली है इवेंट का, नहीं वो गाचा का है। I don't think trespassing on forbidden areas is the way to be a guest, Mr. Yang. वो गाचा वाला लाइटकॉन है, सुबह। Are you sure? The Galaxy Ranger. Our apologies, Mr. Sunday. Nobody came to greet us, so we entered without permission. I hope you can forgive us. But even if there's no one to greet you, you should wait for the host. Don't you agree? अगर गाचा का है भी तो शायद लकीली मिल ही जाएगा कभी ना कभी फिर। As far as I know, the crew's officially accepted the family's commission, so coming here will be unnecessary for you. भाई इवेंट का भी हो सकता है, जैसे सिल्वर वुल्फ का 4 स्टार का लाइटकॉन इवेंट में आया था, राइट? हो सकता है उसका भी। We don't want any loose ends. हाँ गाचा वाला लीकर्स ने बोला। Since you've come with goodwill, I have no reason to show you the door. Rest assured, he hasn't figured out that we went through those documents. While the truth remains a mystery, I'm getting close to it. चलो ठीक है। That the traitor will soon pay. मैं पूछने वाला था लाइटकॉन का,
तो अभी के लिए hope मयंक justice will ये यूज कर लो, prevail क्या soon. बात है, अपना गुड नाइट स्लीवर I have यूज a कर लो, question for you, if you परमाटा don't है mind. उसको भी यूज कर सकते How हो. did the ओके, family come to the और conclusion इवन that the murderer अगर was गाइस within the वेल्ट family? का लाइट कोन है ना तुम्हारे पास, वो भी यूज All कर सकते हो due भाई, respect, काफी अच्छा it's है. in the IPC's ओके, interest to wreak havoc before the Charmony Festival, लोग and the वेल्ट का family लाइट has कोन every सजेस्ट reason नहीं to कर रहे, बट suspect मैं the तुमको IPC's बोल रहा हूँ कि involvement. वेल्ट का लाइट कोन उसके Well, पीछे रीजन है. other family heads share the same suspicions as you. ठीक है, But in my opinion, उसका the true रीजन मैं तुमको murderer would बताऊंगा never have बाद में. drawn as much attention as that ambassador did. Not to mention, I personally shackled him a while ago. However, Acheron की I'll स्टोरी give you बहुत a मस्त है, suggestion एंड regarding Acheron your का suspicions, Mr. बोलने Yang. का तरीका भी बहुत You ओपी should है. be more या cautious of aventurine. While the wicked can't break through high walls, they can plunge their evil dagger into the heart of the righteous. He's a businessman, not some philanthropist. But right now, he's out there handing out his wealth on the streets. And he went to the Clock Studios theme park all by himself. Who knows what kind of scheme he's cooking up? While the family is dedicated to keeping our guests safe, it might be wise for you to stay alert. You never know what unexpected troubles could arise. भाई ये संडे का कुछ तो सस्पिशियस है भाई, अलग ही, उसका कुछ अलग ही खिचड़ी पक रहा है भाई, समझ नहीं सकते उसको, पता नहीं. According to a Pierpoint hotline tip, एक बार स्टोरी एक बार ये हो जाए, मैं तुमको दिखाता हूँ जरा लाइट कौन का. the suspect has been arrested. This fraud case has been linked to many departments within the Interastral Peace Corporation and the Intelligentsia Guild, causing a large drain in manpower and resources, resulting in the IPC taking a massive loss. The case's main suspect originates from Sigonia 4 and is one of the survivors of the second Kataka Abjin extinction event, who does not carry an interstellar refugee Sigonia 4. As per Strategic Investment Guys, ये Department head अगला Diamond Sentiments, the IPC drop तो नहीं has होने वाला. appropriately relocated the suspect in the spirit of the charter Penacony के and बाद will का. continue to conduct further investigations as to the motive ये of नाम the याद suspect. रखना, सिगोनिया 4, ठीक है गाइस, ये नाम याद रखना, सिगोनिया 4. ये कौन है? Tell me, जेड. do they shine in the dark? Well, if they did, I'd sell them in a heartbeat. काकावासा. You don't know how many people long for your eyes to be closed forever. As a servant, you should not resist your master. Yet, you went and killed that man anyway. No संडे हो lawyer या has the मंडे, रोज का audacity to वनडे. defend you. Perhaps you ought to रैंको represent है फ्यूचर yourself. कैरेक्टर. हाँ, तुम लोग ने बोला था ना जेड का कुछ. Not difficult, but definitely pointless. You're pretty confident on your Dude, eloquence. say school यार. Did you also think that when you lied to the Intelligentsia Guild? बट देखते यार जेड के लिए कैसे पुल करूंगा Ask and you shall मैं. receive. डीपीएस कैरेक्टर होनी चाहिए यार, मजा आएगा. अगर ये डीपीएस कैरेक्टर हुई तो मैं All I पुल did करूंगा was भाई. offer a possibility. It was just a small wager. If your luck holds out, the IPC will dig something up from the golden sands of Ejihazo. Maybe even the Sand King's remains. नेक्स्ट प्लेनेट मे बी रिलेटेड टू मार्च 7. हाँ वो लाइव स्ट्रीम पे उन लोग ने बोला तो था What I'm मार्च more 7 का. curious about, though, is why such a grand हो scheme सकता है वो भी. failed to benefit anyone in the end, including the perpetrator himself. Oh, madam, I already have what I want. To be brought before you for the next high-stakes gamble. Then let's talk about the second gamble. Tell me, what are you prepared to wager this time? इक्विनम कुछ ज्यादा हो गया. क्या ज्यादा हो गया भाई? I bet you won't send me to the gallows. What do you want then? Freedom. I want your Lenore to meet with me. I have something to say. And then what?
I want cash. It can't be that simple, can it? It is that simple. 30 tanbas. The remainder of my market value. 30 tanbas. No more, no less. With this money, I'll climb to even greater heights than you. Grasp even more riches than you. I wager you won't give me this chance. Which is why you should call him here. Interesting. A pity Diamond won't see you. भाई ये स्टोरी स्किप नहीं करना चाहता From यार. here on out, I am Diamond's representative, and I will decide on his behalf. You're wrong. 30 tanbas. I'll give you that. And much more than that. Wealth, status, Kakavasha. A good name, but unfortunately destined to be buried in the dirt. You, though, you deserve to live, to create even more wealth for us. Go, pick the clothes you like, then choose your desired identity. And then, use them well, child. May your plans never suffer failure. May your plans never suffer failure. Long-term investment. Those who choose correctly, do the correct things, reach the correct outcomes, and show the world their value. Next will be remembrance. People can't always make the right choices. You know why remembrance? But luck is always Distraction भी तो हो सकता है मेरे ख्याल से ना. I've never lost. Is it because Gayatri blesses me? Well, if that's the case, she must also be looking upon me right now. My success is. मैं भी ऐसे बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं मालूम. या पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है भाई. कुछ भी हो सकता है, bro. Even if I overcome this difficult trial, what would come next? What awaits me after this glorious gamble? An even more glorious one? Will I return triumphant with unending riches after countless successes, or will I encounter failure, never to return? यार ज़ेलॉक्स यार इतने सारे अभी कैरेक्टर आ रहे हैं, हम सबको तो कैसे पुल करेंगे बताओ. What? Am I dreaming, or have I gone completely insane? Perhaps both. Forgotten me already? When you were... Fine. I may be crazy, but I'm not stupid. Get out of my head, newborn of the Harmony. The Harmony? Oh, don't play the fool. It's not the first time we've met. No need to be so polite. I'm you, and perhaps even more aware of yourself than you. Of what exactly you want. You're dying. And you still want to drag a bunch of unfortunate fools with you through death's door. That's why you're here, isn't it? A grand unveiling. अंडरन इतना अच्छा होगा या एक्सेप्ट नहीं किया था. Why not? अवेंचरिन तो यार ज़ेलॉक्स बेस्ट होने वाला भाई कैरेक्टर, नो डाउट. उसका जब लीक आ गया था तभी तो मैंने
बोल दिया कि भाई मुझे ये वाला कैरेक्टर चाहिए रिजर्वेशन में. I'll be with you for the last stretch of your He is good because Trailblaze already has destruction. Let's have a heart-to-heart while we Okay. इसके बेस पे point to be noted, Yukino. What exactly are you? What exactly are you? Most बात तो सही people है. in this world spend their entire lives just to reach one outcome. And I am that outcome. इसका क्या मतलब हुआ? Kakavasha, I am your future. First I'm hearing things, and Okay. now I'm seeing. भाई तुमको लाइट कौन का मैं बता देता हूँ, ठीक है? 1 सेकंड ना पहले. Am I going to be elevated into the harmonies? ये रहा, ये देखो. अब ये वाले लाइट कोड में क्या है देखो, इसमें तुमको मोस्ट एक चीज इफेक्ट हिट रेट है, ये ज्यादा इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा. आई नो दैट, ठीक है, बट ये इफेक्ट हिट रेट भी शायद थोड़ा बहुत काम करे बिकॉज एक्रॉन शॉक अप्लाई करती है एनिमीज पे. ये तुमने देख लिया रहेगा जब मैंने अभी बैटल किया था, वहां पे शॉक अप्लाई हुआ था और मेरे टीम में कोई लाइटनिंग कैरेक्टर था नहीं सिवाय एक्रॉन के. तो ये इफेक्ट हिट रेट एक स्लाइटली वर्कआउट कर सकता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाले पे डैमेज डिबफ एनिमीज पे क्या होगा 24% का, और अटैक भी इंक्रीज होगा 24% का. भाई समझ रहे हो? तो ये लाइटकोन का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है भाई, मैं तो बोलूँ अगर F2P लाइटकोन ऑप्शन में देखा जाए तो. ठीक है, अगर तुम इसको इन फ्यूचर किसी ने अगर इसको S5 में कर लिया भाई, 40% डैमेज है एंड 40% का अटैक है भाई, क्या ही बोल सकते. ठीक है, एक बेस्ट ऑप्शन ये तो है, बोल सकते भाई, नो डाउट. अगर गुड नाइट स्लीप वेल तुम्हारे पास इस पे नहीं है ना, S5 पे नहीं है, तो वेल्ट वाला ऑप्शन काफी अच्छा है. ओके, यहाँ पे भी एक पॉइंट है गाइस, अगर तुम्हारे पास गुड नाइट स्लीप वेल S5 पे नहीं है ना, तो वेल्ट का S1 वाला ऑप्शन काफी अच्छा है. ये एक पॉइंट है. अगर तुम्हारे पास गुड नाइट स्लीप वेल S5 में तुम कर रहे हो तो S5 वाला बेटर ऑप्शन है वेल्ट के कंपेयर में. ओके, ये एक हो गया. फिर फर्माटा वाला भी तुम अगर देखोगे तो इतना कुछ डिसेंट है. ये भी एक ब्रिक इफेक्ट मिल रहा है, इंक्रीज डैमेज डिबफ एनिमीज पे तुमको 20% का मिलेगा S2 पे. जब तुम इसको S5 में करोगे तो और भी बढ़ेगा ये. तो अगर ये और ये लाइटकोन को कंपेयर करें वेल्ट का लाइटकोन, तो इंपॉर्टेंस तो है भाई. ओके, थैंक यू भाई. गुड नाइट स्लीप वेल बेस्ट है, बट पुल करना पड़ेगा एक्रॉन का लाइटकोन में. भाई अगर गुड नाइट स्लीप वेल नहीं है तो क्या डालोगे, पुल करते बैठोगे उसके लिए लाइटकोन? बता रहा हूँ तुमको, ऑप्शन बता रहा हूँ, देख लो. अगर तुम्हारे पास वेल्ट का लाइटकोन है उसको डाल सकते हो, S1 में भी होगा तो काफी ज्यादा बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है. बाद में तुमको अगर गुड नाइट स्लीप वेल S5 वगैरह मिल जाता है तो उसको डाल लो, या तुम एक्रॉन का सिग्नेचर लाइटकोन पुल कर रहे हो तो वो डाल लो. इवन सिल्वर वुल्फ का लाइटकोन जो है 5 स्टार का, वो भी काफी अच्छा है. अगर उसके बाद किसी के पास सिल्वर वुल्फ का 5 स्टार वाला लाइटकोन है, ये 4 स्टार वाला नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं. 5 स्टार वाला जो सिल्वर वुल्फ का लाइटकोन है वो भी काफी अच्छा है. तो ऑप्शंस मैं तुमको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम. Why are there no guests here? What's that featherhead doing? Just a Mbps? No. A child. I thought minors weren't allowed in Golden. मेरे पास तो दोनों नहीं है. Hey kid. You okay? गुड नाइट स्लीप वेल वेल्थ का वाला दोनों नहीं है, तो फर्माटा डाल लो ब्रो. फर्माटा को S5 में कर लेना, वो तो फ्री लाइटकोन है, तुमको मिल जाएगा. What's wrong, mister? You don't look well. और इन फ्यूचर तुमको नेलिटी के लाइटकोन और आएंगे यार स्टोर पे, डोंट वरी.
अभी वो नया वाला 4 स्टार का बोल रहा हूँ, बट सुभान ने बोला, सुभान नहीं बोला ना, किसने बोला? Impossible. हाँ, सुभान ने बोला था कि वो लाइट कोन गाचा वाला है। ऑलराइट, तो वैसा ही शायद और सिमिलर लाइट कोन आ जाए अपने स्टोर पे, अच्छा रहेगा। My Acheron has 3100 attack with 61 crit rate and 200% crit damage. Worse. Are you alone? Substrikes. Where are your parents? Damage worse. They're in that amusement park. That's. Papa and Mama went in first. ये क्यों ना ये कहना चाहता हूँ डैमेज नहीं निकल रहा है। I have to go. Goodbye, mister. Hope you have a good time too. Those eyes. And Mama Funga. No, it can't. ये क्यों ना एक बार एक्सपेरिमेंटल एक ट्राई करके देख लो, ठीक है? Acheron को रखो, टीम में पेला को रखो, या कोई दूसरा डिबफ कैरेक्टर जो भी तुम्हारे पास होगा नैली टीम में, और ब्रोनिया स्पार्कल को यूज करो, और थर्ड ऑप्शन तुम्हारा सस्टेन कैरेक्टर। एक बार ट्राई करके देखो तुमको डैमेज कैसा मिल रहा है, जरा चेकआउट कर लो, ठीक है? You can see in my friend support. हाँ वो तो ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ एक बार ये क्यों ना एक बार ये वाला टीम ट्राई करके देखो। अब मेरे पास तो है नहीं यार, ना Acheron पुल किया ना बिल किया, तो तुम ही एक बार ट्राई कर सकते हो ये चीज। टीम में एक नाइलिटी रखो, सेकंड तुम्हारा ब्रोनिया या स्पार्कल, और थर्ड ऑप्शन में हीलर को रखना है, हीलर को रख लो वैसा, ठीक है? अगर गालागर तुम्हारे पास होगा ना तो उसको बिल कर लो यार, अगर तुम्हारे पास कोई अलग से सस्टेन कैरेक्टर नहीं है। ही इज गुड ब्रो, वेरी गुड। बस जाना किधर से इसको, जहाँ से वाह, मेरे टीम में यहाँ पे डीबीएस कैरेक्टर ही नहीं है। मेरा टीम बार बार रिप्लेस हो जाता है यार, क्या बोलूं अभी। रैंको आप ट्राई करो ना। मैं क्या ट्राई करूं, मेरे पास Acheron नहीं है तो भाई कमाल करते हो। जो टीम मेरे पास नहीं है मैं वो टीम कैसे ट्राई कर सकता हूँ, मुझे जरा बताओ भाई। क्या मुझे इनसे फाइट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है? चलो यार अब क्या कर सकते। You cannot leave it. I don't want to talk to you because of ignorance. I mean because of. अरे इग्नोर नहीं कर रहा है भाई वो। A decisive moment in the battle. वो बंदा मेरे से भी चैट ही कर रहा है ना यार, रिप्लाई दे देगा भाई, टेंशन क्यों लेते हो ब्रो यार? यू कैन रिप्लाई दे दो यार जेलॉक्स को, भाई को कुछ पूछ रहा है तुमसे। Tedious. You'll pay for this. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. What happened? You know, जेलॉक्स भाई का चैट एक बार देख लो यार, कुछ पूछ रहा है शायद, तुमने रिप्लाई नहीं दिया है। इसका डिफरेंस ट्रैक होता है ना, मैं जरा देखता हूँ ये। ओके, कितना डिफरेंस ट्रैक हुआ मुझे वो देखना है, 1 सेकंड। ये वाला है ना, 3 टर्न्स रिमेनिंग।
Lend me your strength. Grace and elegance. Sure, I'll play along. क्या हुआ? अवेंट्यूरिन ने 7% HP क्लच मार दिया. अरे मर जा भाई. हद है. Those eyes. And Mama Funga. No, it can't. There aren't any Avgens left. यहाँ से तो जाने का रास्ता भी नहीं है और यहाँ से जा नहीं सकता मैं. ओके, ये वाला एक रास्ता यहाँ से. नीला भाई, अभी मैं जो चीज एक्सपीरियंस नहीं किया ना उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता भाई. अभी मेरा बॉस फाइट होगा तब देख लेंगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या सिनारियो है. ओके, फाइट करूँ क्या इनसे? ये लोग तो कुछ नए लोग दिख रहे भाई. भाई नए टाइप के एनिमीज है ये तो. पर जाने दो यार मुझे. Papa, Mama, wait for me. Only on Penacony, am I right? अबे नहीं, विन नहीं कर पाया गॉडजिला. अच्छा समझ गया. रहना तो भाई, लीव इट. आई जस्ट होपलेस बिकॉज ऑफ बैड लक इन फुल. मैं तो बोला तुम्हारा एक्रॉन 300 अटैक में वर्स कैसे. 300 में वर्स्ट इसलिए बिकॉज प्रॉपर टीम सेट वगैरह नहीं हुआ रहेगा, कुछ रहेगा इशू. भाई यूकिनो मैंने पता अभी जरा इसको हो जाने दो फिर बोल दो. हाँ तो समझ गया भाई, समझ गया. अवेंट्यूरिन बॉस फाइट नहीं हो पा रहा है. समझ गया भाई, समझ गया. Like a hyena scavenging for scraps in the desert. Because you know that opportunities are fleeting. Oh, when you put it like that, even Ratio's a teeny peacock analogy sounds pleasant. Well, you know how rare it is for me to give you the straight dope. So listen while you can. It's good timing that you mentioned the doctor. I'm especially fond of what you and he have in common. The conspiracies, calculations. Especially the part about the finale, a magnificent act of betrayal. Oh, when everyone thinks this way. You only do 5 lakh damage with signature icon. ये क्यों ना 4 लाख का डैमेज तो मैंने अभी जस्ट Acheron के इसमें से दिया था. Acheron एज ए स्टोरी मोड में मुझे यूज करने मिला. अभी उसका लाइटकॉन मैंने नहीं देखा, उसको लाइटकॉन क्या दिया था. लोल वो देखना चाहिए था मुझे. शायद सिग्नेचर लाइटकॉन ही होगा. अरे तेरे को नहीं बोल रहा हूँ रैंको. अच्छा भाई ठीक है. They only see your big bets, your bravado, the full house, the straight flush. They don't know the other hand is below the table, clutching your chips for dear life. It's a heck of an act. No wonder the tavern sent you an invite. यार ज़ेलक्स उसका लाइटकॉन ब्रोकन है ब्रो. बट मैं तुमको F2P ऑप्शंस दे रहा हूँ ना, उसमें से भी जाओगे तो तुमको डैमेज मिलेगा यार. मिलना तो चाहिए भाई. अगर प्रॉपर रोटेशंस वगैरह सारी चीजें रहेगी तो मिलना तो चाहिए भाई. Of course, I know you all too well. But it's strange. Why did you decline that invitation?
You had the chance to embrace elation, and was I that expect an option 10 lakh but damage you chose the IPC instead. with her light cone. For अरे the you know preservation? team setup नहीं हुआ रहेगा I proper. doubt it. That's why. Do you even have anything in common with the preservation? Oh, I thought you knew. Didn't you say you had me pegged? We're done. Either stop talking or disappear from my sight. That's fine. But who exactly is about to disappear here? Well, it's not going to be me anyway. मेरे जिंगलू का भी अल्ट अभी देखोगे तो कभी कभी काफी अच्छा डैमेज चला था भाई. 3 लाख चलाया था, कभी कभी 2 लाख चलाया था, कभी कभी 1.5 लाख चलाया था. तो लगता है वो रोटेशन पे रहता है कुछ. अभी मुझे जाना किधर है वैसे? ये साइड ही जाना है. Playing hide and seek. I'm really good at this. भाई देखो गाइस, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, मेरे पास एक्रोन नहीं है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है. अब कितना डैमेज देते हैं विद सपोर्ट विदाउट सपोर्ट, ओके, मैं सिर्फ बता सकता हूँ ये चीजें. ये सब चीजें वेरी मच कंफ्यूजिंग है, आई नो. ओके, अब इनकी जरा धुलाई करने की जरूरत पड़ेगी मुझे या नहीं? आई गेस नहीं यार, हो जाएगा. चुपचाप निकल लूंगा मैं यहाँ से. आई ट्राइड विद ब्लैक स्वान एंड काफ्का. मेरा पहला एंड सिल्वर वुल्फ बिल्ड नहीं है. हाँ तो यूकिनो भाई कैसे जाएगा भाई बताओ? ब्लैक स्वान एंड काफ्का मैं तो सजेस्ट भी नहीं करता था भाई, पहली बात तो, ठीक है. सिल्वर वुल्फ देखो यार, डीओटी नैलिटी कैरेक्टर एंड डिबफर नैलिटी कैरेक्टर दोनों चीज़ें अलग है. ये चीज़ें मैंने पहले भी बता दी है, ओके. अलग से वीडियो में भी बताया और लाइव में भी काफ़ी बार बताया. तो तुमको अगर एक्रोन का ट्रू डैमेज निकालना है ना, तुम्हारे टीम में डिबफर कैरेक्टर होने चाहिए नैलिटी में. जैसे वेल्ट हो गया, पेला हो गया, सिल्वर वुल्फ हो गया, और एक तुम्हारा सपोर्ट कैरेक्टर. सपोर्ट में तुम सस्टेन डालो या हार्मनी कैरेक्टर डालो, तुम्हारे ऊपर है. It wasn't ruined. I've always kept it. Come on. It's a rag. टीम यूकिनो, अभी तुम टीम को जरा बिल्ड करो, तुम्हारे सिल्वर वुल्फ एंड पेला को, उसके बाद देखो भाई डैमेज कैसा जाएगा तुम्हारा. वेरी मच बेटर, ओके. उसने बेस्ट बिल्ड नहीं किया एक्रोन के लिए भाई, टाइम लगता है यार. आज ही आया एक्रोन, कोई ना, सब F2P प्लेयर्स ही यहाँ पे है ना. टाइम तो लगेगा यार सबको बिल्ड करने के लिए. That child. Could he be in here? अगर तुम यूकिनो, अगर तुम सिग्नेचर लाइटकॉन को रिमूव करके गुड नाइट स्लीप वेल भी डालोगे ना विद सिल्वर वुल्फ एंड पेला, तुमको काफी अच्छा डैमेज आउटपुट देखने मिलेगा. मैं ये भी लिख के देता हूँ भाई, देख लो, ओके. या तो तुम ऐसा चेक करके देख लो, तुमको भी अगर तुमको खुद एज ए लाइव तुमको प्रूफ मिल जाएगा.
सिग्नेचर सॉरी सिग्नेचर नहीं, गुड नाइट स्लीप एंड लाइट कॉन विद ब्लैक स्वान काफका. ओके, गुड नाइट स्लीप एंड लाइट कॉन एक्रोन पे रहेगा विद ब्लैक स्वान काफका तुम्हारे टीम में. एंड सेकंड टीम गुड नाइट स्लीप एंड एक्रोन विद तुम्हारा पेला एंड सिल्वर बुल. तुम्हारे ये दोनों टीम में से सबसे ज्यादा डैमेज किस में आएगा पता है? सेकंड वाले पे, जिसमें तुम्हारा सिल्वर वुल्फ एंड पेला है. भाई 20% 30% डैमेज ज्यादा ही आएगा भाई, ठीक है, ये तो मैं बोल सकता हूँ. या शायद मैं कम बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा भी आ जाए. 30% डैमेज बूस्ट तो काफी अच्छा आएगा भाई तुमको. कहाँ जाना? ऊपर जाना है ना मुझे. Is this? You can know, are you girl or boy? Man. What is this doing here? In his 21 second. What 21 second? Finally Trailblaze level 69 हो गया. Twist Trailblaze level 69. Congrats. I was merely curious why it was here. तुम एसयू की बात कर रहे हो ना नॉर्मल वर्ल्ड में? कौन एसयू की बात कर रहा है भाई? ये लोग डिस्कॉर्ड पे है क्या? डिस्कॉर्ड पे बैठे क्या? नहीं बैठे. डिस्कॉर्ड पे हूँ भाई, आ सकते. पहला इज मस्ट फॉर एक्रोन. पहला तो चाहिए भाई. Or maybe he wasn't acting at all. All the better for you. Sunday didn't become फनी नंबर 69. नहीं 69 फनी नंबर के लिए नहीं, ट्रेलब्लेज तुमने बिल्ड किया उसके लिए. हार्मनी कैरेक्टर वैसे उसका कन्वर्ट होने आ रहा है, तो या एटलीस्ट वो कैरेक्टर को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस तो मिल रहा है. वैसे इंपॉर्टेंस मिल ही रहा है उसको बिकॉज ऑफ एक्रोन. उसको भी टीम में डाल के यूज कर सकते हो. Finally, Sunday took the bait, found the other cornerstone, and before you know it, everyone's distracted enough for you to steal the third stone right out from under them. Why don't you stop rummaging through my mind? Your mind. भाई ये बंदा है कौन? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क. You're me, and I'm you. We're the same. Now I am regretting not for building पहला. यूक्विनो भाई ये तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ब्रो. ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बोला था भाई. पहला इज मस्ट फॉर एक्रोन. इवन सिल्वर वुल्फ, और सिल्वर वुल्फ नहीं है तो वेल्ट, और इन और उनके साथ क्या लाइट को नहीं यूज करना है वो भी बताया था मैंने. रैंको भाई मेरे पास रेजोल्यूशन लाइट कौन है, किस पे डालू? पेला, वेल्ड, ब्लैक स्वॉर्ड. भाई जेलॉक्स भाई मुझे ऐसे नाम से लाइट कौन याद नहीं रहता यार. क्या स्टैक्स है जरा देखना पड़ेगा मुझे यार. Must I do all the work? Aventurine is the stone of luck and trickery. That's what you said when you received the stone, wasn't it? देखता 1 सेकंड जेलॉक्स, 2 मिनट देना, ये एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं इन्वेंटरी खोल के देखता हूँ मैं. In fact, it's often used as a substitute. And that more precious gem is Jade. Jade. Even Sunday can't tell the difference. Well, looks like Jade can be substituted for aventurine too. Sauce for the goose.
aventurine, topaz, jade. 3 leads, 3 cornerstones who, for a measly Bannico, लुका लाइट कौन? अच्छा लुका वाला तो जेलॉक्स ये लुका वाला लाइट कौन है ना पेला को दे दो अगर तुम एक्रोन के साथ यूज करोगे ना जेलॉक्स तो पेला को दे दो ये लुका वाला लाइट कौन But will it be the former or the latter? और ब्लैक स्वान पे लुका वाला लाइट कौन बेटर है बट ब्लैक स्वान को इफेक्ट हिट रेट मेंटेन चाहिए 120 का अगर तुम उस पे 120 का इफेक्ट हिट रेट मेंटेन कर लेते हो तो अच्छी बात है लुका वाला लाइट कौन दे सकते हो या फिर तुमको ब्लैक स्वान पे इफेक्ट हिट रेट वाला लाइट कौन देना पड़ेगा और वेल्ट के लिए भी तुमको है ना इफेक्ट हिट रेट वगैरह चाहिए रहेगा और आई थिंक वेल्ट पे ये वाला लाइट कौन वेल्ट पे भी चल जाएगा भाई बट उससे बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे ख्याल से वेल्ट के लिए बट ये लुका लाइट कौन ज्यादातर काफी अच्छा वर्क करना पेला पे सही रहेगा वो एक्रोन के लिए टीम बिल्ड कर रहे हो ना जेलॉक्स पेला को दे दो You're absolutely clear about the consequences of doing this. Blasphemy against Clipoth's body. You think the IPC will let you get off scot-free? Well, Diamond has always been all about results. As long as I can create value far beyond the cost, the ends justify the means. How else would the family be fooled if there was no price to pay? और एक और चीज इम्पोर्टेंट है पेला के लिए गाइस तुमको अगर नहीं पता रहेगा तो पेला को 70% तक इफेक्ट हिट रेट चाहिए 70% ओके ट्राई करना 70% तक इफेक्ट हिट रेट हो जाए तो और उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको बॉडी पे इफेक्ट हिट रेट डालना है ओके सबस्ट्रैक्ट्स में एचपी डिफेंस स्पीड ये सब देख लो इफेक्ट रेसिस्ट ब्रेक इफेक्ट भी चल जाएगा वैसे अगर मिल जाता तो बट मेन स्ट्रैक्स में इफेक्ट हिट रेट तुमको बॉडी पे डालना होगा There is so much you don't see, which is also why you'll never see how I'll win it all. That is, if you can do what it takes. We'll just have to wait and see then. The cornerstone is gone. Another illusion of the harmony. रैंको आखिर इफेक्ट हिट रेट करता क्या है ये तुमको यार समझा के दिखाना पड़ेगा यार ऐसे तो अरे Yes. रुको भाई I'm so happy. Yes, that's it. They put me. You should give it a try. हाँ इधर कोपचे में पहले जाता हूँ रुको ओके इफेक्ट हिट रेट क्या करता है भाई इफेक्ट हिट रेट क्या करेगा देखो इफेक्ट हिट रेट ये करेगा हमारा पहले निकालता हूँ मैं अब देखो क्या होता है गाइस जो हायर लेवल के बॉसेस वगैरह आते हैं ना उनका इफेक्ट रेसिस्ट वगैरह ज्यादा रहता है ओके तो उसके लिए ना डिबफ प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए ना ये इफेक्ट हिट रेट काम करता है अच्छे से गॉट इट तो जैसा कि अभी एग्जांपल ये देखो सामने वो बॉस है ठीक है अब उस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट रेसिस्ट है तो ये जो पेला का रहेगा ना ये डिबफ पेला का तुम उसमें लाइट कोन अभी ये वाला डाल रहे हो ठीक है एक सेकंड लाइट कोन भी स्विच कर लेता हूँ मैं लुका वाला लाइट कोन डाल रहा हूँ ठीक है ये लुका वाला लाइट कोन क्या करेगा डिफेंस डिक्रीज करेगा अपने टीम पे ठीक है
तो ये चीज को पॉसिबली एकदम परफेक्टली हीट करने के लिए ना एक इफेक्ट हिट रेट मेंटेन चाहिए। जितना ज्यादा इफेक्ट हिट रेट रहेगा तो इतना ज्यादा गारंटेड चांस रहता है कि डिबफ एनिमीज पे अप्लाई होगा। इवन इसका जो ट्रेस है अल्टीमेट, ओके, यहाँ पे जो डिफेंस रिडक्शन रहता है ना, एनिमीज पे प्रॉपरली वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि एनिमीज इफेक्ट रेसिस्ट हो जाता है तो ये डिफेंस वाला जो डिबफ है ना वो रिमूव हो जाता है या अप्लाई नहीं होता है, ओके। तो वहाँ पे इफेक्ट हिट रेट काम करता है। अगर पहला के बाद सबसे अच्छा खासा इफेक्ट हिट रेट होगा, एक मेंटेन इफेक्ट हिट रेट वोल्टेज जिसको, ठीक है, 70% का, तो इसमें गारंटेड चांस है कि ये डिबफ लगेगा ही लगेगा। एक गारंटेड चांस है, एनिमीज रेसिस्ट कर ही नहीं पाएगा वो चीज को, ओके। तो उतना एक मेंटेन चीजें चाहिए रहता है। सारे नेलिटी कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, डीओटीज का नहीं, डिबफर की बात कर रहा हूँ मैं। डिबफर नेलिटी कैरेक्टर तुम्हारा वेल्ड हो गया, वेल्ड को भी काफी हिट रेट चाहिए रहता है, इफेक्ट हिट रेट, सो उसको मोस्टली मिल ही जाता है, तो इतना ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाई बॉडी पे यहाँ पे इफेक्ट हिट रेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पे नहीं डाला है बिकॉज उसका भी एक रीज़न है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इफेक्ट हिट रेट क्यों नहीं डाला, अब ये सवाल तुम पूछोगे, आई नो, बिकॉज मैंने लाइट कोन यहाँ पे लुका वाला लाइट कोन नहीं डाला, मैंने लाइट कोन डाला है ये वाला सिल्वर वुल्फ का 4 स्टार का इवेंट लाइट कोन, जहाँ से मुझे 40% इफेक्ट हिट रेट मिल जा रहा है। टोटल इफेक्ट हिट रेट मेरा पहला का अगर तुमको मैं दिखाऊँ ना, ये देखो 100% इफेक्ट हिट रेट है, ओके। तो मुझे बॉडी में इफेक्ट हिट रेट डालने की जरूरत है, बट इन योर केस तुम नेलिटी वाला ये वाला लाइट कोन यूज नहीं करोगे बिकॉज तुमको एक्रोन के साथ टीम अप करना है। तो एक्रोन के साथ टीम करने के लिए तुमको ये वाला लाइट कोन एक ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज डिबफ भी अप्लाई होता है इस पर काफ़ी अच्छा, ठीक है, डिफेंस रिडक्शन का। तो अब ये चीज़ को प्रॉपरली वर्क करने के लिए तुमको एक इफेक्ट हिट रेट भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब उसके लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुमको एचपी के जगह इफेक्ट हिट रेट चाहिए रहेगा। ये रे जैसा कि एग्जांपल बता रहा हूँ मैं इफेक्ट हिट रेट का, ओके। ये वाला एक इफेक्ट हिट रेट चाहिए रहेगा तुमको। सब स्ट्राइक्स में भी तुमको कुछ इफेक्ट हिट रेट, एचपी, डिफेंस, स्पीड, ये सब चीज़ों पे जाना है ताकि पहला तुम्हारा सरवाइव कर सके। डिफेंस, एचपी एंड स्पीड, स्पीड तो स्पीड है भाई, वो तो चाहिए ही है ना। जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा पहला का टर्न आने का सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा बार डिबफ अप्लाई करेगी अपने एनिमीज पे, ओके। तो अब इसमें एक और चीज़ तुमको मैं बताओ, स्किल एफिशिएंसी का। अब तुम बार बार इसका स्किल तो यूज नहीं करोगे भाई, अब तुम्हारे पास स्किल पॉइंट नहीं रहेगा, क्या करोगे। अगर पहला का गाइस यहाँ पे अभी पहला का बेसिक अटैक यूज करोगे, ये बेसिक अटैक पे कोई डिबफ अप्लाई नहीं होता एनिमीज पे, ऑलराइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बेसिक अटैक पे अप्लाई होता है, डिबफ नहीं होता, इसके अल्टीमेट पे है और इसके स्किल पे है, ओके। अब स्किल पे क्या होगा, रिमूव 1 बफ एंड डील आइस डैमेज, उसका एनिमीज का बफ होता है, प्लस आइस रिडक्शन का भी एक बफ है इस पे, ओके, डिबफ है। तो बट वो एक्रोन के साथ तो काम नहीं आएगा, बट हाँ आइस डिबफ है तो एज ए डिबफ काउंट होगा वो। बट यहाँ पे ये बेसिक अटैक पे डिबफ अप्लाई कैसे होगा, जब तुम ये लाइट कोन डालोगे। अब इस पे बेसिक अटैक पे भी ये चीज़ वर्क करता है भाई, गॉट इट। अब ये चीज़ बेसिक अटैक पे वर्क करने के लिए एक प्रॉपर इफेक्ट हिट रेट तुमको अपने कैरेक्टर पे मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होगा। दैट्स इट। आई थिंक मैंने समझा दिया अच्छे से, ऐसा ही है ना। गॉट इट ब्रो, मुझे नहीं लगता और कोई कंफ्यूजन रहेगा, आई होप। हाँ अबे ये क्या है, energy can be when the energy is full, you can enter nutty blades and experience a long period of wind.
थैंक्स भाई, वेलकम ब्रो। कोई ना, इसको मुझे मारना है। अरे यार मिस कर दिया मैंने नीचे वाला। ये क्या था भाई? गोजिला कौन सा टीम से हार गया एवेंचुरियन बॉस? मुझे लुका लाइटकॉन 3 बार मिल गया था, पता नहीं कैसे। यार गुड लक ब्रो, वो काफी अच्छा लाइटकॉन है, उसको काफी अच्छे से अपग्रेड वगैरह करो, अच्छे खासे टीम में डाल दो भाई उसको। इम्पोर्टेंट लाइटकॉन है वो। एग्जिट आई गेस। How's that? Boring. गाइज मैं जरा 1 मिनट का ब्रेक लेके आया, इमरजेंसी। I'm back. हेलो सोनाटिक, वेलकम टू द स्ट्रीम। परफेक्ट टाइमिंग S5 हुआ लेकिन लोचा नहीं है मेरे पास। लोचा नहीं है तो कोई सस्टेन कैरेक्टर होगा ना, वही डाल लो टीम में। गॉडजिला बस प्रॉपर बिल नहीं है। हाँ तो भाई अब अबे रोड ब्लॉक है यहाँ पे। अच्छा ये साइड से जाना है। Feeling lucky. Show your courage.
TL65 करके गलती कर दिया। अरे यार TL65 करके गलती कर दिया भाई। अरे नीलम हो जाएगा ब्रो यार, क्या के लिए इतना टेंशन लेते हो ब्रो। ये देखो, ये मोटू बैठा है यहाँ पे, मारू क्या इस मोटू को? बहुत परेशान करता है ना ये, मार दो इस मोटू को। चल आजा मोटू, दिखा अपना पावर। Every petal all will be swept away by the wind. अबे ये कैसा एनिमी है भाई? Time to change tactics. लॉल। Lend me your strength. Stand down. Later. Some value, I suppose. Hedge your bets. Spend freely. This battle is unavoidable. भाई मुझे अवेंट्यूरिन का ये स्टैक करना है गाइस, ठीक है? मैं ये अवेंट्यूरिन का स्टैक करूंगा तो तब तक के लिए मैं डैमेज खाऊंगा। Got it? मुझे इसका अल्टीमेट देखना है भाई, इसका अल्टीमेट कैसा है। भाई ये क्या था भाई? ओके गॉट इट, ये सही था भाई। आई गेस गेम ओवर कर लेते, चल। To guard and defend. Crush them. All will be revealed. In lunar flame. It's on me. अल्टीमेट चार्ज होने वाला है गाइज, जस्ट वेट एंड वॉच। The dice have been cast. इसका अल्टीमेट देखेंगे, लेट्स गो। अवेंट्यूरिन का काम तमाम, फिर मैक्स 1840 तक जाएगा डिफेंस। मेरा जीबाट का डिफेंस मैक्स 4 तक जाएगा। ओके Bust. Or maybe I'll take it all. You hold some academic value. भाई अल्ट का डैमेज 42 का गया है। आर यू किडिंग ब्रो? अल्ट का डैमेज क्या 42 का? 42k का डैमेज। Eternal melody. Every petal and All will be swept away by the wind. Lend me your strength. ये एनिमीज पे अप्लाई क्या किया हुआ सर? डिफेंस रिडक्शन -20 का मिला और इंक्रीज क्रिट डैमेज बाय अलाइज टू दिस यूनिट बाय 15%। भाई इसमें क्रिट डैमेज इंक्रीज होगा 15% का। अल्टीमेट का आरएनजी है शायद। भाई इतना सिल कहाँ जाता है भाई? क्या बताओ जेलॉक्स? अरे यार These are nice trinkets, but nothing more. HP, इफेक्ट हिट रेट, इफेक्ट रेसिस्ट, ब्रिक इफेक्ट सब दे दो।
जब चाहिए रहता तब नहीं देना इनको। अब दे दो भाई, दे दो, सब दे दो भाई। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने सारे क्लेम कर लिए ना? हाँ ठीक है। गॉडजिला, कितना ट्रबल हो रहा है भाई तेरे को बॉस मारने में। You've piqued my interest. I'll admit that there are still aspects of you that I don't completely understand. You sound sincere. छोड़ो, अब मैं फार्म करता हूँ। At least. Well, sincerity is one of my traits that everybody likes, and I have precious few of those. Moving on. See that maze over there? I'll know everything about you before you reach the exit. Our quaint journey through this amusement park still isn't over, and I wouldn't mind stretching this out at all. Sad यार, कंप्लीट नहीं कर पा रहा। Really sad bro. वन सेकंड गाइस, जरा सा मोबाइल पे कुछ काम कर रहा हूँ। नीलम, तेरे लिए एक काम है भाई, तेरे लिए ब्रो एक काम है। रैंको ऐप एक बार ट्राई करो ना, मीडियम बिल्ड है। कल ट्राई करता है यार गॉडजिला अभी। जरा लाइव स्ट्रीम एक बार चेक करना नीलम, यूट्यूब पे सर्च मारना लाइव स्ट्रीम, मेरा कितने में क्या दिखा रहा है जरा दिख। और कोई फिजिकल लाइटनिंग डीपीएस है? फिजिकल लाइटनिंग डीपीएस है नीलम भाई कहाँ है? यही है नीलम भाई, इधर यही है, आ जाएंगे। आजा डिस्कॉर्ड पे, आजा नीलम, डिस्कॉर्ड पे जरा आ सकते हैं तो। मैं डिस्कॉर्ड पे वीसी में बैठा हूँ। रॉक ऑन, अरे क्या बोल रहा था ये, रॉक ऑन वाटर, पता नहीं ये बुलबुलैया भाई। इधर से दीवार आ रहा है, इधर से ये आ रहा है भाई, क्या चल रहा है ना बुलबुलैया। Dead end? हेलो या बोल। अरे यूट्यूब पे सर्च मारना मेरा HSR का। देखा मैंने तो वो 5th नंबर पे आ रहा है HSR लाइव डालने पे। HSR लाइव पे 5th नंबर, मतलब वो तो ग्लोबल हो रहा है एक्चुअली। HSR लाइव इंडिया डालेगा तो HSR या होनका स्टार रेल भी डालेगा। आई थिंक HSR भी बेटर है, वैसा कोई दिक्कत नहीं। उस पे तो HSR लाइव इंडिया का तो आपका पुराना स्ट्रीम वगैरह दिखाता है। अरे लाइव पे फिल्टर कर बे। फर्स्ट पे आ रहा है। क्या बात कर रहा है सच में? हाँ
सही है भाई। How could a weak person take such daring risks? और ऐसे नॉर्मल सर्च कर रहा है तो पुराने स्ट्रीम दिखा रहा है क्या? खाली मेरा ही दिखा रहा है, किसी और के भी दिखा रहा है? पहले दो आपके, फिर उसके बाद एंट। हाँ ठीक है, समझ गया। ठीक है भाई, कोई ना। क्या हो गया, क्या दिक्कत हो रहा है? अरे भाई वो एवेंचुरिन 7 HP 7 techniques you mentioned are मार रहा है मेरे कैरेक्टर को, क्लच मार रहा है। Get it? देखता हूँ कल। What fun is it if the fight isn't fair? अरे तो वैसा तूने अभी बिल नहीं किया होगा ना भाई, तेरा अकाउंट अभी उतना लेवल पे स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है ब्रो, समझ रहा तू? लेवल तो बढ़ा लिए चल, अब गोल्डन गियर्स कर लेता है बात अलग है, बिकॉज वहाँ पे अपने को ब्लेसिंग का एडवांटेज भी मिलता है तो हो जाता है। बट ये तो पूरा तेरे रॉ कैरेक्टर्स के स्टैक्स पे डिपेंड है पूरा। हाँ फिर भी थोड़ा सा करेगा ना, थोड़ा सा कॉस्ट कम लेता है एवेंचुरिन को, क्या जाता हूँ। वेल मे बी हार गया फर्स्ट टाइम डॉक्टर एसो स्पार्कल की बात यूज किया था, देन मुझे याद आया मेरे पास तो क्लारा है एंड इससे पहले भी बिल किया था, क्लारा कम आ गई। इसने हरा दिया वो। क्लारा तो भाई ओपी कैरेक्टर है यार, काउंटर अटैक भाई बहुत अच्छा डैमेज जाता है उसका। अरे वाह, उसके पास ऊपर ऊपर से वीकनेस भी नहीं है। क्या वीकनेस है बॉस पे? आइस है, फिजिकल है और आइस है। आइस है, फिजिकल है, आइस है, लाइटनिंग और तेरे पास आइस, फिजिकल, लाइटनिंग तीनों ही नहीं है वीकनेस पे। तो मेरे वो तो दिक्कत आएगा ही ना वहाँ पे। मतलब है पर बिल्ड नहीं किया ना, अभी एक्रोन मिला। हाँ एक्रोन को फिर अभी तेरे को बिल्ड करना पड़ेगा फिर यार। कोई ना यार, अभी तो भाई तेरा कितना महीना हुआ अभी तेरे अकाउंट को? रुको अभी चेक करता हूँ, दिखा देगा। 2 महीना तो हो गया रहेगा ना, 2-3 महीना तो हो गया भाई 2-3 महीने में भी इतना प्रोग्रेस हुआ है तो भाई अब टाइम तो लगेगा अभी 8 बॉस वगैरह खेलना। इवन मोस्ट इम्पोर्टेंट पता है तेरे कैरेक्टर का स्पीड कितना सारे? स्पीड कुछ भी नहीं है। हाँ फिर भाई स्पीड भी तो चाहिए यार। स्पार्कल के लिए स्पीड वाला जूता भी अरे स्पार्कल पे सिर्फ स्पीड बूट डालने से काम नहीं चलेगा ना, बाकी सबस्ट्रैक्ट्स पे भी तेरे को स्पीड चाहिए स्पार्कल पे। वही बोल रहा हूँ। एक पीस मिला वो ले लूंगा स्पार्कल को, क्रिट डैमेज और स्पीड क्रिट डैमेज थोड़ा कम हो जाएगा चलेगा, स्पार्कल का स्पीड बढ़ा भाई। मैंने अपने ब्रोनिया को वही तो किया है। भेजा था। रेनबो सेट बनाना पड़ेगा। रेनबो सेट ही बनाना पड़ेगा, अभी कोई ऑप्शन नहीं है, बाद में देख लेना वो। बिकॉज तेरा एम्बाइडर का स्पीड तो रहेगा नहीं, तो स्पार्कल को जितना ज्यादा हो सके स्पीड तेरे को देना पड़ेगा मैक्सिमम। वो होने के बाद एम्बाइडर पे तो फिर स्पीड बूट तूने डाला नहीं होगा ना? स्पीड बूट तो अटैक बूट डाला, हाँ तो बस चलेगा। और बाकी तेरे सस्टेन कैरेक्टर्स के स्पीड वो भी नहीं रहेंगे। इसके लिए जेपाड़ भाई लगेगा यार, थोड़ा दिक्कत तो आएगा ही ना फिर। मिलेगा भाई, अभी थोड़ा अभी देख लो ना, रेलिक्स वेलिक्स का ये लोग थोड़ा गैम्बल करेंगे अभी, पता है, बिकॉज एक्रोन आ गई तो फार्म कर रहे सभी लोग। अभी जेपाड़ का वो कुछ नहीं ना, बस तेरी के साथ डिफेंस चाहिए, इजी तो अरेंज ही है रे, क्या कर सकते ब्रो? डेलक्स भाई क्या कर सकते बताओ यार, रेलिक्स तो अरेंज ही है भाई।
कुछ नहीं कर सकते। अगर इनको रेलिक्स बेकार देके 50-50 जितना है तो मैं सेल होगा। भाई मेरा भी कैरेक्टर के स्पीड क्या है, कुछ इतना खास नहीं है। दिक्कत तो मेरे को भी होता है एमओसी में खासकर। अरे आपका हो जाएगा इस वीकनेस। हाँ बट अभी फेस नहीं किया ना भाई, ऐसा कॉन्फिडेंस लेके बोल नहीं सकता कि हो ही जाएगा। वो एवेंचुरिन मारने के लिए ना एओई कैरेक्टर्स चाहिए। हाँ तो एओई तो तेरे पास भी है, ब्लेड और एवन इम्बैडर, वो भी तो एओई है। नहीं मतलब वो टाइप में, वो टाइप मतलब उससे ज्यादा स्कोर करना पड़ता है उसके डाइस पे। वो बस एक ही कैरेक्टर को चांस देगा और वही कैरेक्टर को वो डाइस को हिट करके उससे ज्यादा रोल करना पड़ेगा। अभी नहीं समझोगे, जब खेलोगे तब समझोगे। ठीक है भाई, नाइस रोल। So quiet this time. वैसे अवेंजरन बॉस फाइट क्यों कर रहा है भाई ये? मुझे लगा कोई नया बॉस रहेगा, पर जान दे मैं स्टोरी में देखूंगा क्या दिक्कत है इसका। स्टोरी उसके वजह से टॉर्च की पड़ी। अरे भाई साहब ये तो पूरा खिंच रही है बे। कौन सा? ये अभी अच्छा वो मैं बीजी। अच्छा वो पिनबॉल का बात कर रहे हो क्या? हाँ रे पिनबॉल वो बस मतलब ऐसा कुछ सबको एक्टिवेट करना है लगभग। वही तो कंफ्यूजन है। अरे आपको पहले वाला एक्टिवेट करना था, आपने वो बाद में वाला एक्टिवेट किया। पहले वाला बाद में वाला व्हाट? स्क्रीन शेयर का रुक जाए एक सेकंड, इसको तो लगेगा ही, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसका भी लगेगा। हो गया। भाई आज क्या ये बच्चे को ही पकड़ने में जिंदगी कट जाएगी मेरी। ट्रुथ पता चलेगा उसके बाद। या इसलिए तो अब मुझे हानू बनना है। वो हानू बनने के बाद बहुत सारे हिडन चेस्ट। क्या? वो हानू में वाले जब वो छोटा बन जाता है तब उधर बहुत सारे हिडन चेस्ट। आपने वो हानू का रॉकेट लॉन्चर चलाया क्या? अरे भाई अभी तो आया हूँ हानू में। नहीं पहले चला के देखा था। नहीं पहले कहाँ से चला के देखूंगा फिर। ओ भाई फटाका बुम। भाई मर गया ये तो सीधा। उनको मारने के बाद एमो ड्रॉप होता है। हाँ आई थिंक इधर का तो मुझे उठा लेना पड़ेगा सारे ट्रेजर, बाद में कब आऊंगा इधर पता नहीं।
एमो ड्रॉप होता है ना, तो फिर इसको भी मार जाओ ना। हाँ उसको मारो, उधर भी एक पिटन टेस्ट वो फोड़ना, वो पीछे वाला फायरवर्क्स है ना वो फोड़ना। हाँ उसके एक पीछे सेकंड। टेस्ट है। कौन सा बॉक्स? वो उसके पीछे ही वाला जो फोड़ा आपने फोड़ दिया। व्हाट द फक, ये तो अंदर ही घुस गया। है ना, वो ऊपर चलते फिर चलो। अरे ऊपर नहीं जा सकता। ओ भाई अब तीनों पजल ढूंढो। वाह भाई, वो पजल अनुबंध के ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ हानू हानू हानू। अब वापस मुझे भाई, क्या गेम को यार इन लोग ने ये किया है। छोटा बनो बड़ा बनो भाई यार, सही है यार, नाइस। अरे वो नहीं क्या वेंचुरिन को छोटा बना दिया। हाँ ये यहाँ पे डाल देता हूँ, ये आई थिंक इधर होगा। हाँ ऐसा है, ये यहीं पे कहीं पे तो होगा। हाँ हो गया ये यहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। चेस्ट, तीसरा चेस्ट। एचपी डिफेंस क्रिट रेट। भाई यार कुछ आ जाना चाहिए अच्छा, डिफेंस पे रोल हो जाना चाहिए बस। भाई 12 बजने वाला। It really is you. या ये स्टोरी एक बार हो जाए ना, तो एक बार बंद कर दूं, फिर बाकी का कल। टाइम लगेगा। Curious about you. क्या बात कर रहे हैं? It's sad that I can't get to know you more. अबे I have यार to say goodbye. भाई, मैंने आज का अभी तक ट्रेल ब्लेड्स पावर भी यूज नहीं किया। You're going back? Yes, I should go home. The day's getting dark, and it's going to. मतलब क्लोजिंग 15-20 मिनट में हो जाएगा। What a strange question. It's where Papa, Mama, and Big Sis are. सब ग्राइंड करने में बिजी आज। In this dream. ऐसा तो This amusement park, but Mister. Where are they then? I don't know. You do know. But there's no point pressing. मुझे भी कल्पना वेंचुरिन को हराने के बाद क्या होगा। उसका हराने के बाद क्या होगा? You're tired. We all are. Which is why we chose to stay here. Me and him. Your past
future. How long will you stay? Forever. भाई मेरे से तो नहीं होगा ये स्टोरी क्वेस्ट रैंको भाई। अरे 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 ऐसे कैसे गिव अप कर दिया भाई? You are walking to the most hellish thing ever. It is a hell filled with a suffering and regret. Yeah, you know. It is. सुभान भाई मेरे स्ट्रीम पे आके ना ये नहीं कभी नहीं बोलने का I give up, मेरे से ना हो पाएगा। Everything is possible bro। तो तेरा टीम बिल्ड नहीं है तो गिव अप ही करेगा ना भाई, भगवान थोड़ी हूँ मैं भाई। मतलब क्या भाई तुम? हाँ भाई ऐसा क्या हो गया सुभान भाई, बताओ पर क्या क्या रीजन क्या हो गया? कुछ ज्यादा सैड मोड आ गया स्टोरी पे ऐसा कुछ? तो फिर मत बताना। कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अच्छा क्या बड़ा है? अरे तो उतना टाइम भी तो मिल रहा है हम लोग को कंप्लीट करने के लिए गाइस। व्हाई टेकिंग सो मच टेंशन? भाई उल्टा मैं तो खुश हूँ भाई, इतना बड़ा स्टोरी दे दिया। अच्छा उल्टा भाई इतना लंबा स्टोरी दिया इन लोग ने, वरना कंप्लीट कर लेते। लोग बोलते यार स्टोरी जल्दी कंप्लीट हो गया, ये हो गया। तो अच्छा है ना ये चीज। तुमको क्यों जल्दी है एक ही दिन में कंप्लीट कर? टीम तो एक्रोन ही सोलो कर देगी, बट कुछ ज्यादा ही बड़ा। बट बड़ा होने से क्या है यार, अच्छा उल्टा मैं तो बोलूं। And as for you, you'll just happen to slip the leash, sleep the rat race, extract yourself from this endless debacle. You'll have the freedom you've always dreamed of. अरे वो जो एक्रोन दिया था ना उन लोगों ने वो कौन सा डिटेल स्टीवन बता दो। You've been an escape artist from day one. This fiasco started with a death and its curtains will fall on another death. I guess ये the end है यहाँ पे शायद। अभी क्लोज आ रहे हैं एवेंचरिंग फाइट पे। He's just after Penacony. No matter the means, no matter the price. It's not personal. एक तो यहाँ अटैक लिंक रोप नहीं मिल रहा, अच्छा वाला अलग बात। Well, don't get soft on me now. Hashtag Relic Spain for F2P players। ये सबके साथ है भाई, don't worry bro। Including me, including most of F2P players। I can't stop you from doing what you want. तो इसके लिए आप क्या कर सकते पता है? कुछ नहीं, कल फार्म करने का। What's done can't be undone. All we can do is play the cards we're dealt and rake in as much time. आज अगर फार्म नहीं हो रहा है ना, रख दो बाकी का, कल फार्म कर लेना। कभी कभी किस दिन लक काम नहीं करता, अच्छा कुछ अच्छा मिल जाए अपने को, है ना? अच्छा तो मिल जाता है पर रोल के वक्त देखना क्या होता है भाई। सुबह यकीन करोगे क्या, मेरा ब्लैक स्वॉन एंड काफका सिर्फ 1 डे में रेडी हो गया। 1 डे। डू यू बिलीव दैट? लक के ऊपर है यार। जब जिंगलू बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगा भाई, 3-4 महीने लग गए। और ब्लैक स्वॉन काफका मेरे 1 दिन में रेडी हो गए, दोनों के दोनों। तो एक पूरा एक लक पे डिपेंड है यार, कुछ नहीं कर सकते उसका। आरएनजी पे डिपेंड है रेलिक्स। सुभान भाई मैंने तो एवेंचरिंग बॉस को फिनिश भी कर दिया। वाह ज़ेलॉक्स ब्रो भाई तुम तो। Maybe. मेरे को तो अब रिग्रेट हो रहा है। Maybe when I get to where I'm going and look back, I'll know what the trip was all about. हाँ मेरे को एक ट्राई में रोप मिला और मिला, रोप नहीं मिल रहा। वही बता रहा हूँ ना यार,
लक पे डिपेंड है यार, कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथ में नहीं है भाई। तुम्हारा लक रहेगा ना, तुम 40 ट्रेल ब्लेज पावर यूज करोगे, तुमको दोनों के दोनों एकदम बेस्ट रेलिक्स मिल सकते, एकदम बेस्ट। और तुम यहाँ अगर लक नहीं रहेगा ना, तुम 1000 भी अगर कंज्यूम कर लो ना, एक भी ढंग का नहीं मिलेगा। दैट्स अ डिफरेंस। अब लोग बोलते हैं ना लक काम नहीं करता, ये आरएनजी है भाई। ऐसे लक नहीं बोल सकता, बट आरएनजी है पूरा। ठीक है, तो आरएनजी डिपेंड्स है यार पूरा, कुछ नहीं कर सकते उसको। यूज द फंक्शन बिलो टू टेक अ फोटो। ये वाओ, इसको सेव कर लेता हूँ ना, थंबनेल के लिए मस्त लगेगा ये। मस्त है। तो क्या हो गया भाई, बी यूनिक कैरेक्टर्स के तो बाकी के 4 लोग तो नहीं है, तो क्या हो गया? किसी का डाल लूंगा तो, और क्या। मैं तो यहाँ एक्रोन ही बिल्ड करते रह गया, ये सब स्टोरी वगैरह भी खत्म कर रहे। You're about to go on stage, aren't you? टाइम लगता है सुभान भाई, डोंट वरी, ये गेम इज ऑल अबाउट ग्रिंड। I'll take you to the stage. Sure. This game is all about grind, bro. फोटो दिया ये। No wonder your clothes are so stylish. अभी शो में I'm actually a merchant, but I do have a show to do. Are you the same as those men in black? काफी सारे चेस्ट है यार, सब लेना है मुझे। हाँ वेल, मेरी मीडियम बिल्ड क्लारा ने अवेंटरिन का काम तमाम कर दी। जेलॉक्स भाई तुम्हारा टीएल लेवल कितना है जरा बताओ। मीडियम बिल्ड है, मीडियम बिल्ड जरा टीएल लेवल बताओ अपना। अगर मेरा 60 होता ना, मेरा मीडियम बिल्ड किया अवेंटरिन को तोड़ देगा। हो जाएगा 57। हाँ 57 है भाई। इधर लोग TL 70 65 पे बैठे, उनको डिफिकल्ट हो रहा है कंप्लीट करने के लिए। बिकॉज डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज कैरेक्टर बिल्ड नहीं है। TL तो बना रही है, सब बना रही है, लेकिन कैरेक्टर बिल्ड नहीं है, रेलिक्स भी नहीं है। तो बताओ कहाँ से होगा? बॉस का लेवल भी इंक्रीज होता है TL के साथ। ओके तो कुछ ज्यादा फ्लेक्स कर दिया है। हाँ जला रहे हो भाई। मेरी टीम फिलहाल तो स्पार्कल, एक्रोन, जीपार्ड, पेला। स्पार्कल, एक्रोन, जीपार्ड, पेला। अरे मेरे को क्या लगा रहा है? Show your courage. Show your courage. Sound ringers. Behind this curtain is the grand stage. It's almost time to go on stage. Are you ready? Good luck with your show. स्पार्कल को लात मारो, ग्नाफिन डालो। नहीं जेलॉक्स सपोर्ट करे। हार्मनी कैरेक्टर इज आल्सो गुड फॉर एक्रोन। बाद में चाहे तो कर लेगा। दो नहीं लिटी से अच्छा है। रैंको भाई TL 57 है। हाँ भाई TL 57 और 65 70 में डिफरेंस है ब्रो। बॉस के लेवल पे डिफरेंस आ जाता है ना। ओके By putting our palms together and reciting the prayer to Mama Funga, she will bless us.
if you're not familiar. मैंने टेस्ट किया स्पार्कल के साथ डैमेज और फास्ट अल्ट है। हाँ सुबह मैं इसलिए कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ ना, मुझे पता है, मैंने ये चीज एक्सपीरियंस कर ली है यहाँ पे। मैंने ये चीज जस्ट स्टोरी क्वेस्ट में जब स्पार्क एक्रोन मुझे यूज करने मिला था, उसके साथ मैंने ब्रोनिया को डाला था, तो ये चीज मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ। The catechins are coming. Why? The catechins have already taken all our money, food, and they killed our parents. What more do they want? Kakawasa. Catechins are bloodthirsty, cruel, and insatiably greedy. They want everything only to end up with nothing. This is a trick, an act of revenge. Remember? Today is the day of the Kakava. And also भाई नीलम तू एक बात बता, एक्रोन को पुल करने का तेरा प्लान था, तो तूने इसका रेलिक्स फार्म करके क्यों नहीं रखे पहले से? वाह सही है भाई। मेरे लाइक 99.99% श्योर था कि नहीं मिलेगा। The catechins would never take action, and we would not have the chance to turn the बट तूने अगर ये चीज प्लान किया था तो मेरे ख्याल से तेरे को फार्म कर लेना चाहिए था उसका। अरे कोई मेरे पास रिजर्व है, हो जाएगा। But people will die, and you will be in danger. How is that good fortune? Why are you all doing this? The Avgin always return their blood debts. Gayathra calls for me, while Papa and Mama are waiting for me. I must answer the call. भाई मुझे बुरा लगा ये आपने good fortune मतलब पूरे फैमिली को as long as you are alive. अवेंटिन का स्टोरी यार बहुत ही सैड है गाइस। So run, Kakavasha. Do not be afraid, and do not look back. Really sad यार। Go to the other side of the mountain. The rain will accompany you, and the rain will bless you. As for us, we will reunite in Kakava's next aurora. May the goddess Gayathra. Sparkle Bronia both are too good for Acheron. Yeah. Keep your blood. Kakava's sister. Let your journey be forever peaceful. भाई क्या एंडिंग है यार, रियली सैड एंडिंग है यार, सच में इमोशनल एंडिंग है पूरा। जो उसका सिस्टर मरा है या जिंदा है वो कुछ नहीं। हाँ वही तो, अब इसका सिस्टर है कौन वो भी नहीं मालूम। The IPC Marketing Development Department spokesperson confirms that a small-scale rebellion has broken out in the unclaimed region of Sigonia. The situation is now under control. 200 subscribers हो गए। The insurgents are from a local clan known as Kataka, which has a long history of disdain towards the IPC. This has caused a serious negative impact to the work of the IPC's Marketing Development Department. अबे वो तो कब का हो गया, 2-3 दिन हो चुके हैं। The clan launched a massive attack on the Avgin, who were under the protection of the IPC. रैंको भाई क्या बोलते हैं अगर एक्रोन एंड होने से पहले तक 70 पुल्स जमा हो जाए तो E2 ट्राई करूंगा, बहुत मन कर रहा है। यार सुभान भाई, I really appreciate इतना कॉन्फिडेंस लेके तुम एक्रोन के लिए पुल करना चाहते हो। I know she is really good। देख लो यार तुम्हारे ऊपर। सुनो सुभान, पहले ये एक बार खत्म हो जाने दो फिर बोलता हूँ मैं। Regardless of race, regardless of ideology, to uphold the basic rights मैं भी सोच रहा हूँ अगर एक पुल हो जाएगा तो मैं उसका लाइट पॉइंट ले। Kakavasha? हाँ हाँ तो देखो सुभान, ऐसा है
जा सकते हो तुमको अगर जाना है तो, ठीक है, बट ओनली इफ यू डोंट वांट एनी अदर कैरेक्टर जो 2.1 के सेकंड फेज में आ रहा है और 2.2 के भी, ठीक है। तब तक तो वैसे थोड़े बहुत जमा भी हो जाएंगे तो शायद पुल भी कर लोगे। ओनली इफ यू डोंट वांट एवेंट्यूरिन, लूचा और एनी लाइट कोन्स और एनीथिंग, गॉट इट। मैं जिंगली ट्राई करूंगा, देख लो फिर, बट स्टिल आई एम नॉट सजेस्टिंग यू फॉर Acheron E2, बट तुम्हारे पास अभी देखो, मेरे पास Acheron नहीं है, ठीक है, तो मैं इतना एक्सपीरियंस Acheron से नहीं कर पाया क्या है नहीं है सारी चीजें। तुम्हारे पास है, तुमको पसंद आ रहा है, तुमको वो कैरेक्टर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शो ऑफ अपने अकाउंट में दिखाना है, सारी चीजें वगैरह जो भी है सब, उसके बेस पे अगर तुम जाना चाहते हो जा सकते हो भाई, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अरे उसके पास लाइट कौन है क्या? Acheron लाइट कौन है, जा सकते हो फिर, पूरा अकाउंट कैरी हो जाएगा। जुबान ले लो फिर E2 के लिए, एंड तक आराम से तुम्हारा E2 हो जाएगा, सारे स्टोरी क्वेस्ट एंड सारी चीजें तो हो जाएगा। गुड लक फॉर योर E2 पुल्स ब्रो। E2 पे क्या मिलता है? बस यही है ना कि दूसरा नहीं लेटे कैरेक्टर नहीं लगेगा, यही है ना? हाँ वही है शायद, और भी कुछ होगा पता नहीं। अगर बस वही होगा तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि डिबफ लगाने के लिए भी कोई ना कोई निहिलिटी कैरेक्टर तो लगेगा ही ना। पहला तो लगेगा ही। हाँ तो एक ही लगेगा ना, दूसरा वो अपना हार्मनी कैरेक्टर डाल सकता है, या दो हार्मनी कैरेक्टर डाल के एक पेला डाल के एक Acheron डाल देगा, समझ रहे? By the way, before you go, एक ही I have a personal question. और दूसरा वाला स्पार्कल या ब्रोनिया प्रेफर करता है। Do you truly want to destroy the world with your own hands? Let's assume. रुक जा, इसका E2 जरा मुझे देखने दो। थैंक्स, अभी कल से ग्रीन करना क्वेस्ट बचा। मेरा तो वही बहुत सारा साइड क्वेस्ट बाकी करते करते मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। E2 करने से एक्चुअली फायदा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका अल्टीमेट का डैमेज एक नाइलिटी कैरेक्टर से काफी अच्छा हो जाएगा, प्लस तो हार्मनी कैरेक्टर अपने टीम में डाल लेंगे या एक भी डालेगा तो डैमेज आउटपुट काफी अच्छा दिखने मिल जाएगा भाई। The Astral Express's navigator. Hello, I'm Mark 7. I'm sure he needs no introduction, as you definitely know him. हाँ एक ही लगेगा ना, that's it. तो पेला को डाल लेगा, सिल्वर वुल्फ को डालेगा, तो बाकी तो हार्मनी कैरेक्टर डाल लेगा, तो क्या दिक्कत है? उसका टीम प्रॉपर एकदम परफेक्ट हो जाएगा ना पूरा। अभी उसका Acheron E1 है क्या? हाँ E1 में मिल गया वो। None of you seem surprised. मेरी स्पार्कल 100+ क्रिट डैमेज देती है तो Acheron तो भाई डिलीट कर देगा। हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ सुबह, तुमको अगर ऐसे कोई आगे के कैरेक्टर्स ऐसे पुल नहीं करने, सारी चीजें बिंदास कर लो यार। Miss Acheron here doesn't चलेगा। present a danger, and she's of no threat to the Astral Express. मैं Venturing's prior accusation was based, which is why, before we continue working together, he has a duty to explain himself. You want to create a situation where all three parties तेरे ऊपर है भाई। There must be some तुझे अभी DPS चाहिए या प्रिजर्वेशन behind चाहिए? Venturing's actions. वैसे मेरे I पास हार्मनी suspect he's been aware of Penacony. Respect for Aventurin, Yukino definitely यार। Continuously strategizing to unveil it. भाई बंदा इतना सब कुछ जेल that गया sense, the Astral बीच में वो Express's स्लेव role in भी his बना था, plans उसके would बाद उधर be से जाने के बाद। imperative. In the worst case scenario, he may use us to do something unexpected. चल भाई इनका चीट चैट खत्म हो जाएगा ना, यहीं पे रोक दूंगा बिकॉज मुझे आज का फार्म भी करना है, वो नहीं किया मैंने। फाइट है, डायरेक्ट फाइट है उसके बाद वो कल कर लेंगे भाई, मुझे 12 बज गया, मेरे को बैकअप भी करना है।
तो फार्म वेम कर लूंगा फटाफट। डेलीज भी नहीं खेला मैंने शायद अभी तक। What? We cannot ignore the safety of Penacony. To solve the mystery of the watchmaker, it is crucial to get the रैंको IPC's इवन नहीं intel. है, इवन के लिए 50 पीटी है, वो गारंटेड है। With danger. हाँ ठीक है, मतलब मिल जाएगा इवन, ऐसा बोलना चाहते हो? ट्राई कर लो सुबह, reached a consensus. कर लो भाई। Now, आगे के लिए तुमको Acheron? I will accompany you, of course. आगे के लिए तुमको Let's move out then. कुछ पुल्स वगैरह नहीं करना है तो ट्राई कर लो भाई, Do we start बिंदास। looking for him? No need to rush. If he truly has laid a trap, he will definitely use every means to lure us in. Ladies and gentlemen, the most wondrous, most magnificent show in Penacony's history is about to begin. The IPC cordially invites everyone to close. Look. Should both the performers and spectators fail to arrive, Aventurin is very all of lucky. If Aventurin's pull plans for be him, for then nothing? I will definitely Let's get win going, everyone. all my The hour of 50-50। trailblazing is upon us. हार भी गया तो आगे का कैरेक्टर गारंटेड हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा ब्रो। चलो गाइस, आज के लिए मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ, ठीक है? मैं अभी बाकी का डेलीज कंप्लीट कर लेता हूँ। डेलीज से मतलब है मुझे अपना रेलिक्स फार्म करना है, अवेंट्यूरिन के रेलिक्स फार्म करेंगे भाई पहले तो, बाकी का कल। मैं तो मर जाऊंगा, मेरा लिस्ट काम कर दे अवेंट्यूरिन रेलिक्स डिफेंस वाला अपना भाई, ये 240 हो भी गया पूरा, 240 ओवर कैप हो गया। फटाफट फार्म कर लेते फिर बैकअप। अरे वो एक्रोन के लिए प्लानर ऑर्नामेंट भी नहीं मिला। हाँ तो पुराना वाला कोई रहेगा तो उसमें डाल देना, वो भी चल जाएगा। You'll pay for this. Lend me your strength. मैं बिल देख लेता हूँ, रुक जा, सुबह देख लूंगा मैं सबका बिल देख के फिर मैं स्ट्रीम ऑफ करूंगा। मेरे पास पर वो सेविंग्स पड़े हैं, वो नहीं क्या इमरजेंसी वार्ड एक्सचेंज करने के लिए 8 के 8 पड़े। Lend me your strength. यार मैं तो एक्चुअली पता ट्राई कर रहा था जिंगलू का E2 ले लूं, लॉल। बट अवेंट्यूरिन भी चाहिए मुझे तो Bye, I hope you will get luck with relics. Bye, Yukino, it's already too late, I guess. Yeah, 12 तो बज चुके हैं, सारे 12 बजने वाला है। यार मैं पता है ये चीज कर सकता हूँ, अवेंट्यूरिन के बाद है ना जिंगलू पे मैं रोल मारूंगा, मेरा पीटी भी बन जाएगा। अच्छा जिंगलू का E2 क्या है जरा देखने दे मुझे। E1 तो है मेरे पास। आफ्टर यूजिंग अल्टीमेट इंक्रीज द डैमेज ऑफ द नेक्स्ट इनहांस स्किल बाय 80%। ओ भाई 80। यप ये लोग पागल है क्या भाई, 80%। भाई इस डेडली गर्ल के लिए तो लेना पड़ेगा यार। भाई डिलीट 1 बिलियन का भाई 2 बिलियन हो जाता है अगर E2 होता तो। अरे यार क्या ही बोलूं अभी तक टाइटल में वेटिंग फॉर एक्रन क्यों डाल रहा है भाई, ये सो रहा है क्या बंदा? कोई जगह हो इसको, पता नहीं कौन है ये, इसका एक्रॉन। एक्रॉन विद जिंगलू, व्हाट द हेक। टीम चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे।
मतलब बॉस को के लगा यूकिनो का एक्रोन का है। This battle is unavoidable. नहीं ये जाइकोर का है। अरे यूकिनो तुम्हारा आईडी क्या था यार? यूकिनो जरा अपना आईडी बताओ, नाम मतलब। अरे वो चला गया ना? गया क्या? Lend me your strength. To guard and defend. Crush them. Free will, or was it fate? ये देख अभी इसको कितना मिल रहा है क्रिट डैमेज, 82 का क्रिट रेट मिल रहा है, 289 का क्रिट डैमेज मिल रहा है भाई। सेम मेरा जिंगलू का स्टैक्स है, जिंगलू पे भी मेरा 82 का हो जाता है और इससे थोड़ा और ज्यादा जाता है एक्चुअली क्रिट डैमेज। ये जाइकोर का है ना? हाँ है वो हर्षराज से लिखा। Commencing support. हर्षराज, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। यार नाम मुझे याद नहीं रहता रहा इसलिए पूछ लिया मैंने। I weep for the departed. स्लो मोशन गाइस, ये तो स्लो मोशन में देखूंगा भाई। भाई अरे लोगों का भाई 2 लाख का डैमेज जैसे ही चला गया। 5 हो चुका, 5 लाख का जाता। Lend me your strength. अरे तो भाई मेरा अभी कहाँ इतना कुछ किया है भाई, डिबफ विबफ अप्लाई हुआ है, जो हुआ है हुआ है। ए भाईलू जल्दी हिल दे रहे, Enemy targets बहुत detected. मारूंगा तेरे को। Ready for another? रुक जा एक बार ट्राई करता हूँ, पहला का प्रॉपरली डिबफ वगैरह अप्लाई होके कुछ हो जाए तो। Lend me your strength. Free will, or was it fate? Destined for oblivion. Enemy data secure. Net markers activate. Time for a good old counterattack. Let me tell you. Lend me your strength. Another journey begins. भाई 34,000 स्किल पे डाल दिया। अभी एक और। Ready for another? Net markers activate. Time for a good old counterattack. We've entered the storm. To guard and defend. चल भाई अब देखते Crush हैं। them. This battle is unavoidable. Lend me your strength. हाँ? चाइल्ड वायलेंस, आई एम हियर। चाइल्ड वायलेंस क्या हो गया? I weep for the departed. उधर कौन चाइल्ड है? Dust's reign, the two shall fall. उड़ना ही जा रहा है। डिफेंस डिफेंस एचपी इफेक्ट रेसिस्ट, लेट्स गो भाई, ये कुछ हुआ ना भाई, ये कुछ अच्छा मिला। यहाँ पे अटैक के साथ डिफेंस डिफेंस स्पीड, व्हाट द एफ ई ब्रो। वाह, चलो एक और ट्राई करते हैं और इसमें जरा टीम चेंज करेंगे। हर्षराज है ना तुम्हारा, या तुम्हारा एक्रोन देख लेता अभी यहाँ पे। और यहाँ पे टीम सेटअप, हाँ सोलो पे 2 लाख का डैमेज जा रहा है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, सोलो पे अभी मैं यहाँ पे ब्लैक स्वान और इसको दोनों को डाल लेता हूँ, और हिलर तो चाहिए रहेगा मुझे एक्चुअली ना, एक ही नहलिटी डाल के देखता हूँ, ब्रॉनिया और हिलर बेटर रहेगा। चल Lend me your strength. Destined for oblivion. We have the upper hand. एक ही स्किल पॉइंट है, रुक जा यार। अब पहला पे मुझे वो लूका वाला लाइट को डालना पड़ेगा, अच्छा रहता। बेसिक अटैक पे भी डिबफ अप्लाई होगा ना इस पे। Lend me your strength.
हुई भाई 200 का एचपी बच गया एक्रोन का। भाई वो मारे तो कौन मारेगा फिर? हाँ थोड़ा केयरलेसली खेल रहा था और कुछ नहीं, कोई ना, हैपेंस। भाई एक्रोन का ये मोड है ना, ऐसा लगता है गॉड मोड है, पूरा गॉड मोड। 238 का डैमेज गया भाई। नहीं बेसिक अटैक यूज करना पड़ेगा इधर, इधर भी बेसिक अटैक। Free will, or was it fate? Destiny for oblivion. Enemy data secure. भाई सीजन ऑफ मेरा भी यूज करके देखना इससे डैमेज, बट ठीक है। हाँ देख लूंगा सुबह, देख लूंगा, अभी काफी खेलना है मुझे, देख लूंगा मैं। Lend me your strength. Enemy targets detected. You'll pay for this. Lend me your strength. We've entered the storm. Let's go. To guard and defend. भाई पहला तेरा डिबफ अप्लाई तो है ना? हाँ पहला का डिबफ अप्लाई है भाई, डिफेंस -42 का डिफेंस अप्लाई है। चलो तो डिफेंस पूरा डिबफ अप्लाई है। लेट्स गो। ओके पहले मुझे ये 300 का क्रिट डैमेज है, 65 का क्रिट रेट। लेट्स गो। और यहाँ पे 4 पीस सेट तुम्हारे रेलिक्स का जो है ना, उसका भी क्रिट बूस्ट इंक्रीज हो रहा है, ये देखो 1 टर्न के लिए यहाँ पे दिखा रहा है। और इंक्रीज डैमेज ड्रिल तो दिख ही रहा होगा, काफी अच्छा खासा भाई। ईच स्ट्राइक इंक्रीज डैमेज ड्रिल बाय 30% अप टू 3 स्ट्राइक्स, ये भी 3 स्ट्राइक्स पे। अरे इसका टेक्निक यूज करके सिंगल टारगेट है ना यार, सिंगल टारगेट है। हाँ एचपी अटैक इफेक्ट रेसिस्ट। ओके बकवास सा मिला बट चलो। सुभान भाई तुम्हारा नाम क्या है? नाम इसमें सुबह नहीं है ना? ये क्या नाम क्या भाई सुबह? इसमें दिख नहीं रहा ब्रो। फिल्टर मार के देखना, Acheron लगा होगा उसमें से। हाँ वो तो ठीक है, फिल्टर पे काफका Acheron, साइरस, डार्क नाइट, हर्षराज, माकिमा, ये भी देख लिया। बट नहीं तुम्हारा नहीं है, सुबह नहीं है। अरे तुम्हारा इसमें फ्रेंड लिस्ट में नाम क्यों नहीं है फिर? ऐड नहीं किया था क्या? नो आइडियाज। ऐड नहीं किया था क्या तुमको मैंने? ऐड नहीं किया। आईडी बताओ, ऐड कर देता हूँ। भाई इतने दिनों से तुम मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं हो, वाओ ये कैसे हो सकता है भाई? चलो मैं भी जाता हूँ चार्जिंग करो। ठीक है बाय बाय बाय। रैंको मेरे फ्रेंड लिस्ट का Acheron देखो। भाई किधर है Acheron? यहाँ पे है ही नहीं। मैं सुभान भाई तुम्हारा नाम नहीं दिखा रहा है ब्रो, देखो ना यार, यहाँ पे तो नाम दिखा नहीं रहा है ब्रो। ये है क्या? नहीं ये तो लेवल 50 वाला है। डार्क नाइट नहीं, ये भी नहीं है।
अरे जेलॉक्स किसके अकाउंट की बात कर रहे हो भाई? एक्रोन देखने ये रहा भाई, फ्रेंड लिस्ट में नहीं हो ब्रो, देखा? अभी तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी मैं, अच्छा ऑनलाइन ही हो, चलो ठीक है। ओके यहाँ पे अभी मैं फिल्टर मार लेता हूँ पहले लाइटिंग पे। भाई दिखा नहीं रहा। हाँ अभी दिखा रहा है। सपोर्ट कैरेक्टर पे सुबह तुमने डाला नहीं है एक्रोन को? एक खेल लो, टाइम ज्यादा है इसमें। नहीं नहीं, सपोर्ट कैरेक्टर में तुमने एक्रोन को नहीं डाला शायद ब्रो, दिखा नहीं रहा, नाम दिखा रहा है बट कैरेक्टर दिखा नहीं रहा उस पर। हाँ तुम्हारे सपोर्ट कैरेक्टर पे नहीं है ब्रो, दैट्स व्हाई। पर चलो यहाँ से देख लेता हूँ ये देखो। वो भाई 3.6 का अटैक है, 64 का क्रिट रेट है, 200 का क्रिट डैमेज, नाइस ब्रो। रेलिक्स भी फार्म हो चुके हैं, वाओ। यूआईडी सर्च कर लो रैंको में। नहीं हो चुका है बट इसने एक्रोन को सपोर्ट में नहीं डाला है, ये देखो। तो ऊपर के सपोर्ट कैरेक्टर में डालोगे ना तो वो तीनों यूज कर सकते हैं, ये नीचे के जो 5 ऑप्शन है ना उसको यूज नहीं कर सकते, उसको सिर्फ देख सकते हो। ओके तो यहाँ पे तुमको एक्रोन को डालना, तभी मैं एक्रोन यूज कर सकता हूँ। ऐड कर लिया तो लेट्स सी। ऐड अगर हो गया है तो वो यहाँ पे दिखाना चाहिए। नहीं दिखा रहा। मुझे अपना अकाउंट एक बार ये करना पड़ेगा क्या? 1 सेकंड ना, लॉगिन पे जाके एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। मेरे यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। अबे फिर भी नहीं दिखा रहा है। चल एक खेल लेता मैं नॉर्मल। गुड नाइट भाई। क्या यकीन हो? गुड नाइट ब्रो, गुड नाइट। मेरा मतलब ये यूआईडी सर्च करो 83। अच्छा ठीक है करता हूँ, अभी रुको, ये गेम हो जाने दो, देख लेता हूँ मैं। भाई ये ब्रोनिया बेसिक अटैक क्यों यूज कर ली यार? मैनुअली खेलना पड़ेगा मुझे। Every petal, all will be swept away by the wind. You'll pay for this. Lend me your strength. All will be revealed in lunar flame. Some value
I suppose. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Let me pin your way. Lend me your strength. Ready for death. अटैक एचपी, अटैक इफेक्ट रेट ना कुछ काम करने ये। एक खेल लो फिर हो जाएगा मे बी। हाँ देखता हूँ अभी मैं। एक से ना पहले जेलॉक्स तुम्हारा फ्रेंड का देख लेता हूँ मैं। डेजलर भाई ये नाम का मेरे इसमें भी है। लाइटकॉन भी है इसके पास। नाइस। रेलिक सेट्स अभी सब रैंडम आरएनजीस डाले हुए, कोई ना। क्रिट रेट उसको क्रिट रेट बढ़ाने बोलना, ठीक है। एटलीस्ट 70-80 तक तो चाहिए। बाकी क्रिट डैमेज 200 तक भी पहुंच जाएगा तो इनफ ही है, कोई दिक्कत नहीं। सही है अभी के लिए तो। ब्रिक इफेक्ट में बहुत ज्यादा रोल गया लग रहा है। अच्छा जेलॉक्स तुम्हारे फ्रेंड्स का अकाउंट काफी अच्छा है भाई। ब्रोनिया भी है, बाइलू है, आस्ट्रा है, सवेल है, ग्राइफिन है, पेला भी है। पेला को क्या बिल्ड किया इसने? पेला का स्पीड इंक्रीज करने बोलना, बहुत स्लो है भाई ये, ठीक है। सबस्ट्रैक्स में स्पीड वगैरह डालने बोलना इसको। और ये इफेक्ट हिट रेट यहाँ पे 3.4 से कुछ नहीं होने वाला। इफेक्ट हिट रेट थोड़ा बॉडी पे इफेक्ट हिट रेट डाल देने बोलना। ये बॉडी पे इफेक्ट हिट रेट चाहिए रहेगा, ठीक है। मेन स्ट्रैक्स, बाकी का सब स्ट्रैक्स वगैरह देख लेना, डिफेंस एचपी वगैरह। और स्पेस सीलिंग स्टेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट अभी के लिए डाला है तो ठीक है, वो बाद में सही हो जाएगा, कोई ना। बाद में यहाँ पे ना ब्रोकन नील डाल देने बोल देना, या फीट ऑफ एजलेस भी बेटर रहेगा। अच्छा है भाई, बिल्ड अच्छा है। अब भी सुभान भाई तुम्हारा दिखाना चाहिए भाई। अगर नहीं दिखाया ना बहुत मारूंगा इसको। यार नहीं दिखा रहा है ब्रो यार क्या है ये, नहीं दिखा रहा है भाई, क्या करूं बताओ। जाने दो आज के लिए, फिर अब क्या कर सकते। ये देखो मेरे इसमें भी एक है डेजलर करके, पता नहीं कौन है। डेजलर नाम का किधर गया बंदा? ये देखो यहाँ पे लेवल 60 का एक डेजलर है, पता नहीं कौन है ये। उसी का दूसरा अकाउंट है, नो आइडिया। या बेटर है, चलो। क्या गेम है लोल बाइलू। आ गया मेरा, देखो आ गया था क्या? रुको देख लेता हूँ वापस, अब इसके बाद देख लेता हूँ।
Lend me your strength. Lend me your strength. In lunar flame. भाई ऑटो प्ले कितना बकवास है बे, डैमेज ही नहीं जाता, कुछ भी चालू हो जाता। अटैक डिफेंस डिफेंस अटैक क्रिट डैमेज, यार ये भी अच्छा है रे, दोनों डिफेंस के साथ क्रिट डैमेज मिल रहा है। आई होप कुछ अच्छा रोल हो जाए इसमें। चलो भाई एक लास्ट हो सकता है, सुबह तुम्हारा एक्रोन दिख जाए तो अच्छा है इस बार। लेट्स सी। हाँ दिख गया भाई, दिख गया। लेट्स गो फाइनली। चलो यहाँ पे मैं पेला को डाल देता हूँ और मैनुअल खेलूंगा मैं। आई गेस मैनुअल बेटर रहेगा। Lend me your strength. Another journey begins. In still waters of oblivion. Again. We have the upper hand. What's in your prescription? Thanks for the support. Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. See the doctor? गाइस अब मजा आएगा, अब मजा आएगा भाई। 3 बंदे हैं ना यहाँ पे। Lend me your strength. We've entered the storm. ये देखो 3 एनिमीज है यहाँ पे, और यहाँ पे सीधा अल्ट चलेगा, ये सीधा अल्ट चलेगा। 68 287 का क्रिट डैमेज। ओके इसका एचपी ज्यादा है। ड्यूड 394 देख लिए, डैमेज देख लिए भाई। 394 देखो भाई, डैमेज देखो तुम। और यहाँ पे बेसिक अटैक। You'll pay for this. Troublesome. Wasn't far. What's in your prescription? Thanks for the support. यार इसका चार्ज नहीं होगा रे, 1 सेकंड। Another journey begins. Still waters of oblivion. This battle is unavoidable. Lend me your strength. Destined for oblivion. Troublesome. Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Commencing support. एक से है ना? Let's go, let's go. We've entered the storm. भाई लोगों का पहले मेरे से ज़्यादा क्रिट डैमेज और अटैक था, फिर भी यहाँ पे रैंको भाई एक बात पूछना था। मेरे पास गालागर E2 है एंड ये मिनी लूचा है। लोग बोल रहे हैं कि गालागर लूचा के बराबर हील करता है। जेलॉक्स मैंने गालागर के रिगार्डिंग गाइड वीडियो डाले थे, अगर तुमने नहीं देखा है तो, या देखा है तो, या गालागर इज रियली गुड। यू कैन बिल्ड हर
वो F2P 4 स्टार का काफी अच्छा डीपीएस हीलर है। ओके, डिबफर भी अप्लाई करता है एनिमीज पे, ऑलराइट, डिबफ भी अप्लाई करता है, एक्रोन को बेनिफिट होगा, प्लस हीलर भी है काफी अच्छा खासा, और उसका E1 E2 काफी अच्छा है। अगर तुम्हारे पास E1 E2 है उसको बिल्ड करो, उसको इग्नोर मत करना भाई। चलो I weep for the departed. ओके, सेम स्टैक्स। Dust's reign, the two shall fall. भाई 3 लाख का डैमेज गया, 3 लाख का डैमेज गया भाई। ऑलराइट, काफी अच्छा बिल्ड बना है गाइस। जिन लोग ने भी बनाया सबको गुड लक, अच्छे से बिल्ड करो। हम जिसको पुल करेंगे अभी उसको बिल्ड करेंगे। अरे हाफ सेंचुरी 500 होने वाला है। अरे 7 अचीवमेंट और चाहिए, बस 500 हो जाएगा मेरा। वाह, इन लोग ने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का बटन डाल दिया भाई। पहले एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ता था मुझे। बहुत अच्छा किया भाई 2.1 का न्यू अपडेट में, ये न्यू चेंजेस देख के। डिस्पैच अगेन, सब एक साथ में डिस्पैच हो जाएंगे। टाइम सेविंग भाई, टाइम सेविंग बोलते हैं इसको। ये देखो, अब मेरे पास फ्यूल कितना है? 4 फ्यूल है। अब बताओ मैं इसमें रेलिक्स क्या ही फार्म करूंगा डीपीएस कैरेक्टर के लिए? कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए मैंने एक्रॉन को पुल नहीं किया। जेलॉक्स सरवाइव का भाई अब मैं कैसे बताऊं, बट जेलॉक्स उसका है ना एक चीज काफी अच्छा, इफेक्ट रेसिस्ट। तो इफेक्ट रेसिस्ट उसका काफी अच्छा है। ओके, तो मेरे ख्याल से सरवाइव तो हो जाना चाहिए। बट खासकर वो एक्रॉन के टीम के साथ काफी सारा बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से तो। ऑलराइट, तुम अगर टीम में है ना 2 एलईडी कैरेक्टर डाल के और वो हीलर को यूज करोगे, काफी अच्छा ऑप्शन है वो। बट जेलॉक्स, मैं तुमको ये चीज एकदम गारंटी के साथ नहीं बता सकता भाई ये लूचा के एकदम टक्कर का है कि नहीं। ओके, बिकॉज मेरे पास वो कैरेक्टर है नहीं, ना ही मैंने उसको बिल्ड किया है। बट ही इज गुड एक्चुअली। 100% इफेक्ट रेसिस्ट बहुत ही इजीली मेंटेन कर सकते हो वो कैरेक्टर का, तो ही इज गुड। You can now salvage 4-star light cones। भाई गाइस याद रखना, यहाँ पे 4 स्टार का लाइट कोन सेल्वेज हो सकता है। गलती से सेल्वेज मत कर देना 4 स्टार के लाइट कोन को, ठीक है? अपने F2P के प्लेयर्स के लिए ये 4 स्टार का लाइट कोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच के। अरे नहीं करना है भाई मुझे, 3 स्टार का भी नहीं करना है, 4 स्टार का भी नहीं करना है भाई। हाँ, यहाँ पे 4 स्टार के सब डाल लो भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब लेके जाओ। ये 4 स्टार का मेरा इन्वेंटरी भरा हुआ खाली, कुछ काम का नहीं मेरा।
मेरा प्लानर फार्म हो जाए बस, फिर और डैमेज देगी। जेलॉक्स भाई समझ गए ना यार? एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग गालागर? मैं वापस तुमको चीजें दिखा देता हूँ। ओके यस रैंको भाई। ओके तो अगर सुनो, अगर तुमको लोचा पुल नहीं करना है ना तो गालागर को बना लो। मैं ये बोलूँगा, अगर तुम लोचा पुल करने का प्लान कर रहे हो तो गालागर को बिल्ड अभी मत करो। ओके बट मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई वो गालागर लूचा से बेटर है, बट या ही इज स्टिल गुड। भाई तुम वो 4 स्टार को कैरेक्टर को उससे कंपेयर नहीं कर सकते यार, लिमिटेड बैनर से। वो अलग लेवल का है भाई, बट स्टिल वो 4 स्टार का कैरेक्टर अच्छा है। तो अगर तुम्हारे पास कोई अगर ऑप्शन नहीं है, कोई बेटर 4 स्टार का हीलर भी नहीं है, जैसे नटासा तो अभी इतना यूजफुल नहीं है, लाइनिक्स से भी इवन बेटर है, और बाइलू से बेटर बोल सकते हो, बाइलू से भी ओके, बाइलू से भी बेटर बोल सकते हो भाई। तो या F2P के लिए वो वाला हीलर कैरेक्टर 4 स्टार का बेस्ट भाई, बेस्ट। लाइनिक्स है, लाइनिक्स से बेटर है वो, लेकिन लाइनिक्स अगर है ना, लाइनिक्स से बेटर है वो। ओके रुको, यहाँ पे अबंडेंस में अगर मैं जाऊँ, वो कैरेक्टर यहाँ से दिखेगा ना। एक सेकंड, आइडोलेंस का पूछ रहे थे ना, आइडोलेंस E2, ये देखो इसका E2 रहेगा ना, E2 रहेगा तो रिमूव 1 डिबफ फ्रॉम द टारगेट वाला है, एट द सेम टाइम इंक्रीज देयर इफेक्ट रेसिस्ट। ओके कैरेक्टर का इफेक्ट रेसिस्ट भी इंक्रीज कर देगा 30%। 30% इफेक्ट रेसिस्ट बहुत ज्यादा होता है अगर कोई एनिमी वो कैरेक्टर को डिबफ करने की कोशिश करता है या सारी चीजें, तो ये इफेक्ट रेसिस्ट वहां पे काम आ जाता है भाई। तो E2 बेस्ट है इसका। और E1 में इसका खुद का एनर्जी रीजनरेट 20 रहेगा और इफेक्ट रेसिस्ट इसका खुद का 50% रहेगा। तो भाई ये डिबफ तो बहुत ही रेयर चांस है कि होगा ये। ओके अगर तुम्हारा हीलर डिबफ एक्रोन नहीं आई तो आ जाएगी बाद में, क्या दिक्कत है। तो अगर ये हीलर तुम्हारा डिबफ नहीं रहेगा तो तुम्हारे टीम को फायदा होगा। जब भी कोई कैरेक्टर डिबफ होता है, एचपी लो होता है, ये हील प्रोवाइड कर लेगा अच्छे से, है ना। और बाकी ये सब ट्रेसेस तो बता ही दिए थे मैंने। ब्रिक इफेक्ट के बेस पे हीलिंग है, सो ब्रिक इफेक्ट जरा मेंटेन करो। आई थिंक अब इसका कितना ब्रिक इफेक्ट लगेगा ऐसे तो मैं बता नहीं सकता, शायद 100% बेटर रहेगा, दैट्स इनफ है मेरे ख्याल से। Increase outgoing healing by an amount equal to 50% of the brick effect up to a maximum outgoing healing 75. After using ultimate, immediately advance forward action 100%. यार बेस्ट है यार ये कैरेक्टर। मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है, मैं इसको ले भी नहीं सकता, कोई ऑप्शन नहीं भाई। लाइट कौन में नैलिटी का कौन सा एक आ रहा था, वो 4 स्टार का यहाँ पे नहीं है।
अभी तक आया नहीं यहाँ पे। चलो बाय बाय गाइज, मिलते हैं अभी कल के स्ट्रीम में। सी या। बाय एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आज के स्ट्रीम के लिए, इट्स रियली मीन्स अ लॉट। बाय जेलॉक्स, सुबान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ब्रो, बाय बाय, सी यू टुमारो, कंटिन्यू करेंगे टुमारो स्टोरीज, बाय बाय, गुड नाइट।